व्हेनेवर यू टॉक अबाउट कोर जावा स्पेसिफिकली, तो कोर जावा सीखने के बहुत सारे तरीके, आप उसको 5 दिन में भी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इट इन 7 days, यू कैन लर्न इट ओवर द 6 months पीरियड, यू कैन लर्न इट ओवर इवन इनटू द 15 days। तो ये जो एक हफ्ते में, ये जो 15 दिन में सीखने का जो लॉजिक होता है, अच्छा ये 15 दिन में कैसे सीख सकते हैं? सो वेन एवर यू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, जैसे अगर आप जावा की भी बात करो, इट इज अ लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज सीखने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ दैट लैंग्वेज, यानी कि उस लैंग्वेज ने ऐसी कौन सी चीजों को यहाँ पे आपको प्रोवाइड करके दिया, यानी कि व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट दिस लैंग्वेज इज कमिंग अप टू। अब डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट अ जावा लैंग्वेज, द प्रीरिक्विजिट, अ लिटिल बिट प्रीरिक्विजिट आई कुड से, इज अबाउट सी प्लस प्लस, इज अबाउट सी प्लस। हाँ, अगर नहीं आता है तो उसका भी टेंशन मत लो, जनरली वी कैन कवर दिस अप। ऐसा नहीं है कि जावा बिना सी प्लस प्लस के सीखा नहीं जा सकता, या फिर सी प्लस प्लस के साथ ही सीखा जा सकता है, नो। सो जनरली इफ यू वांट टू लर्न द जावा, इवन सी प्लस प्लस थोड़ा भी आता है, इट इज गुड टू गो। कुछ कुछ लोग तो ऐसे विदाउट सी प्लस प्लस ऑल्सो दे स्टार्ट लर्निंग द जावा, even that is fine, so there is no like heavy prerequisite of this। लेकिन हाँ, if you know the C++, I would definitely say one of the biggest advantage is how the core Java is internally working, उसका आइडिया आपको कहीं ना कहीं आ जाए। सो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ नोइंग सी प्लस प्लस क्या होता है कि जावा का इंटरनल्स, यानी कि जावा का वो क्लास काम कर कैसे रहा है, व्हाई इट इज वर्किंग लाइक दिस, व्हाई इट इज रिटर्न लाइक दिस, ये आपको डे वन से अंडरस्टैंड होता है। हाँ, अगर आपको सी प्लस प्लस नहीं आता, इफ यू डोंट नो द सी प्लस प्लस, एज आई सेड, डू नॉट वरी ऑन टू दिस, ऑल द कंसेप्ट विल बी क्लियर, लेकिन उसके लिए बस आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। मे बी नॉट ऑन टू द डे वन, क्योंकि डे वन पे पूरा सी प्लस प्लस सिखा करके तो जावा नहीं सीख सकते। सो नॉट ऑन डे वन, but as the day progresses, maybe day 2, day 3, day 4, you will be understanding, अच्छा this is the reason why it is written like this, अच्छा ये इस तरीके से इसलिए किया जाता है। So these are the things that you will be getting understood जैसे हमारे डेज प्रोग्रेस होंगे। इफ यू डोंट नो द सी प्लस प्लस, अगर सी प्लस प्लस प्री रिक्विजिट अगर आपको पता है, तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग दो सिक्स। सो जनरली जब आप जावा की बात करोगे, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जावा दैट वी आर गोइंग टू लर्न, तो इसके अंदर जो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले, दैट इज ओ। आई नो कि सर वो ओओपी तो प्री रिक्विजिट था, ये था, आई नो दैट, बट स्टिल थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्रशअप करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को तो सीखने ही वाले हैं, वी आर गोइंग टू। एंड डोंट वरी कि सर सी प्लस प्लस के कौन से टॉपिक्स हम लोग करें, क्या करें, आई विल बी टेलिंग यू द टॉपिक्स बिफोर वी प्रोग्रेस। हाँ, आज के दिन में ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है, कल, यानी कि सर नॉट कल, मे बी ऑन मंडे व्हाट यू रिक्वायर द टॉपिक्स, मैं आपको पहले से उसका प्री रिक्विजिट बता के रहूंगा। मे बी आई विल बी पोस्टिंग दोस प्री रिक्विजिट्स आल्सो ऑन टू द ग्रुप्स। तो मैं आपको बता दे रहूंगा कि ये टॉपिक्स अगर आप सी प्लस प्लस से करके आओगे तो थोड़ा सा हेल्प होगा, अगर नहीं भी आता है तो भी डोंट वरी, ठीक है। बट अगेन आई विल बी रिवाइजिंग सम ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि इसके बिना आप लोग जावा में काम नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम लोग सबसे पहले इसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उसके जितने भी कंसेप्ट आएंगे, मे बी द मेजर पिलर्स, माइनर पिलर्स, वो सारे हम लोग स्टडी करेंगे। एंड आफ्टर द ओओपी वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज क्लास एंड ऑब्जेक्ट, जिसके बिना जावा हो ही नहीं सकता। सो दिस क्लास एंड ऑब्जेक्ट अगेन फ्रॉम द सी प्लस प्लस, बट आई विल बी एंटायरली रिपीटिंग दिस कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों ऐसे करते हैं, ये सारी चीजें भी होती रहेंगी। एंड इवन इफ यू हैव लर्नड इन सी प्लस प्लस, आई विल बी रिपीटिंग इट ओवर हियर। तो ये जो तीन कंसेप्ट है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, मेन और वी कुड से द बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ दिस जावा, अगर ये तीन आप ठीक से समझ पाओगे तो आप जावा जनरली पूरा का पूरा समझ पाओगे। यानी कि पूरे जावा के अंदर यही है, पूरा ओपी है, क्लास, ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। अब ये सारी चीजें हम लोगों को जावा में सीखनी है। अब जब ओपी की बात करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस आएगा, पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, लेट्स से परसिस्टेंस, कॉन्करेंसी, ऑल दोस थिंग्स वी नीड टू कवर। परसिस्टेंस को कवर करने के लिए फाइल आईओ देखेंगे, कॉन्करेंसी को कवर करने के लिए वी विल बी गोइंग विद द मल्टी थ्रेडिंग एंड सो। तो ये सारे कहीं ना कहीं चीजें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये करने के लिए वट एवर द नेक्स्ट 20 days दैट वी हैव, वी आर गोइंग टू वर्क इट विद। जब मैं ओपी क्लास ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली बात करूंगा, तो मे बी फॉर लेट्स से अराउंड 15 days वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ओपी, अराउंड 15 days आई एम सेइंग अबाउट, ठीक है। ओपी की तरफ हम लोग वी कुड से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर जर्नी विद, कि ओपी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास कैसे लिखना पड़ेगा, अच्छा मल्टीपल क्लासेस है तो उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे करना है, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट 15 days करेंगे। मे बी ऑन 16th एंड 17th डे हम लोग एक थोड़ा सा एक ट्विस्ट देखेंगे,
यानी कि जो जनरली जावा कहा जाता है कि पीपल से दैट जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नाउ जावा इज आल्सो कंसिडर्ड एज द फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा को आजकल फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि वो अब उस तरह के वी कुड से पाथ के ऊपर अब जाने लगा है। यानी कि जावा सिर्फ ओओपी को फॉलो नहीं करता है, वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग को भी फॉलो करता है। अब ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, व्हाट इज दिस फंक्शनल प्रोग्रामिंग, व्हाट वी हैव टू डू इनसाइड दिस फंक्शनल प्रोग्रामिंग, इसमें किया क्या जाता है एग्जैक्टली, सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसके लिए जितने भी प्री रिक्विजिट्स है, सो द प्री रिक्विजिट लाइक लेट्स से लैम्डा एक्सप्रेशंस, लैम्डा एक्सप्रेशंस, सो दैट वी हैव टू लर्न। अब ये लैम्डा एक्सप्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है, सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग यानी कि फंक्शनल इंटरफेसेस, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका शॉर्ट हैंड इंप्लीमेंटेशन, ऑल दोस थिंग्स इन टू द केस ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये भी हम लोग जावा में सीखने वाले। यानी कि थिंक अबाउट इट, हम लोग ओओपी तो सीखेंगे ही, लेकिन उसके साथ में वी विल ऑल्सो लर्न एज हाउ जावा इज फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाउ, यानी कि उसने अलग से ऐसा क्या किया। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे अब कवर करने वाले। So this is what the entire Java is going to be. So you will be learning very good concepts. So think about it. OOP concept basics आप सीखोगे. You will be learning the functional programming, lambda expressions. Not only that, collection framework की हम लोग बात करेंगे. Very important topic of Java. Collection framework से पहले हम लोग generics की बात करने वाले, हम लोग multi threading की बात करने वाले. यानी कि बहुत सारे we could say interesting topics from Java we are going to cover. And all those things all programmatically. सारा programmatically यानी कि programs लिखने वाले. Theoretical part काफी कम रहेगा, programs काफी ज्यादा रहेंगे. So this is what we are going to have into the next 20 days. Now let us come to the main points now. अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा सा जावा की तरफ आते हैं. So when we are going to start with the Java, first we need to understand the journey of the programming language. थोड़ा सा एक जर्नी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे. Like you have started your journey by learning something called as C programming language. I hope everyone know that कि आपने सबसे पहला वी कुड से लैंग्वेज कोई अगर सीखा होगा, हाँ उससे भी पहले अगर किसी ने सीखा होगा तो असेंबली लैंग्वेज में भी सम पीपल माइट हैव स्टडीड। इफ यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, तो आपके लेट्स से इंजीनियरिंग के सिलेबस में कहीं ना कहीं आपका ये पर्टिकुलर पार्ट असेंबली लैंग्वेज का पार्ट जरूर है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज जनरली दैट वी हैव इज द असेंबली लैंग्वेज, जिसके अंदर काफी कम वी कुड से डेवलपर्स है जनरली हु स्टार्ट राइटिंग दोज असेंबली लैंग्वेजेस और स्टार्ट कोडिंग इनटू दोज असेंबली लैंग्वेजेस. On top of that assembly language, what we have is a C programming language, which is a general purpose language कि जो काफी सारे लोग यूज भी कर सकते हैं, and which is I could say a bit simpler to work with. Maybe this C does not have that tons of features, उसके पास उतने सारे features नहीं है. जो भी features आपको चाहिए that you have to create it on your own. C के libraries काफी let's say restricted है, काफी कम है. So any new feature that you want, any different type of feature that you want, you have to create it on your own. आपको खुद को यहाँ पे वैसे फीचर्स को क्रिएट करने पड़ेंगे, वैसे फंक्शंस आपको लिखने पड़ेंगे. सो सी प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोसीजर इन द सेंस यू राइट द फंक्शंस इनटू. आप सिर्फ और सिर्फ जो भी काम करोगे वो काम उन फंक्शंस के अंदर करोगे. So if I want to add the two numbers, you will create a function. If I want to subtract the two numbers, you will create a function. If I want to create the factorial of it, you will create a functions. अगर let's say ये सारा काम let's say arithmetic के related है, कुछ नहीं, वो सारे functions में ही रहेंगे. मे बी उसके लिए सिर्फ एक अलग फाइल बनेगी, one file will be created, लेकिन उनको encapsulate करने का कोई तरीका नहीं. There is no way you can encapsulate. Even think about it. I want to perform some things about the employee. Maybe for an employee, I want to accept the things from the user. I want to display the details about the employee. Employee का स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन उसके जितने भी ऑपरेशंस होंगे एक्सेप्ट डिस्प्ले ऑल दोस विल बी डन इनटू द फंक्शंस. ये सारे फंक्शंस में किए जाएंगे. एंड दैट इज द रीजन व्हाई सी प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेयर यू स्टार्ट राइटिंग द प्रोसीजर्स ओनली. आप सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर्स को लिखते हो और कुछ नहीं लिखते. अब C++ के पास जो प्रॉब्लम्स थे, यानी कि उसके जो प्रॉब्लम्स नहीं कहना चाहिए, जनरली वी कुड से द लिमिटेशंस. Every language has got its own limitations. Every language has got its own advantages. So C programming language has got its own advantages, and C programming language has got its limitations. तो जो limitations C programming के पास थे, उन limitations को देख करके there is another language that came on top of it. We call it as C++ programming language. So maybe I could say C++ programming language.
इट इज अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लिमिटेशंस ऑफ सी को कहीं ना कहीं कवर किया जा चुका है इनटू द सी प्लस प्लस. Now, whenever you talk about a language, again, language has its own advantages and it has got its own limitations. हर एक लैंग्वेज का, आप भी अगर आप एक पर्सन की भी बात करोगे, उसके खुद के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, उसके खुद के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं. वैसे हर एक प्रोग्रामिंग के कुछ एडवांटेजेस, कुछ लिमिटेशंस होते हैं. नॉट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज गॉट ऑल द एडवांटेजेस. सिर्फ उसी के पास पूरा एडवांटेज है, उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ. सो सी प्रोग्रामिंग का खुद का एडवांटेज एक अलग है. इट इज द मोस्ट फास्टेस्ट लैंग्वेज आई कुड से. सी प्लस प्लस का एक अलग एडवांटेज है. हियर वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशंस. यहाँ पे हमारे पास क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आ चुका है. सो सी प्लस प्लस इज ओवरकमिंग सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ सी. यानी कि जो सी प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी नहीं था वो आपको यहाँ पे मिल चुका है. जो एनकैप्सुलेशन प्रॉपरली नहीं मिल रहा था वो आपको यहाँ पे मिल चुका है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का बिहेवियर प्रॉपरली आपको सी प्लस प्लस में मिल रहा है. इनहेरिटेंस वगैरह आपको सी प्लस प्लस में मिल रहा है. सो कहीं ना कहीं कुछ एडवांटेजेस के साथ दिस सी प्लस प्लस इज बीन क्रिएटेड और दिस लैंग्वेज डू एग्जिस्ट. Now, whenever you start working with C++ और अगर आपने काम किया भी है, so you might have found it कि काफी सारी चीजें आपको खुद ब खुद लिखनी पड़ती है. Maybe there are very few libraries, maybe the library like an STL कि जहां से आप वेक्टर वगैरह का कुछ क्लासेस वगैरह यूज कर सकते हो. Like it is not that secure as we talk about, but yes, bit more secure as compared to C programming language. यानी कि C से तो सिक्योर है लेकिन उतना भी ज्यादा सिक्योर नहीं है, बट है तो एटलीस्ट. Not only that, C++ has built on C, and that is why C++ की अगर आप बात करोगे तो वो दोनों भी है. वो एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, यानी कि आई कुड से प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीओपी. उसके साथ साथ वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है. आई कुड से इट लाइक दिस. C++ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है. वो दोनों भी है क्योंकि वो सी से आता है. क्योंकि सी प्लस प्लस के अंदर आप प्रोसीजर्स यानी कि सिर्फ फंक्शंस ग्लोबली भी लिख सकते हो और आप क्लासेस भी लिख सकते हो, यानी कि आप ओपी भी कर सकते हो. एंड दैट इज व्हाई इट इज बोथ. वो दोनों भी. अब सी प्लस प्लस के पास जो लिमिटेशंस था, व्हाट एवर द लिमिटेशंस दैट द सी प्लस प्लस हैज, दैट इज बीन ओवरकम बाय द जावा. सी प्लस प्लस के उसके खुद के एडवांटेजेस तो है, लेकिन सी प्लस प्लस के पास भी कोई ना कोई लिमिटेशंस है और वो लिमिटेशंस को इस जावा प्रोग्रामिंग ने ओवरकम किया. अब लिमिटेशंस इन द सेंस क्या, एज वी टॉक्ड अबाउट, सी प्लस प्लस अभी भी क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. उसको जावा ने ओवरकम किया. जब वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहता हूं तो वो जो फंक्शंस बन रहे थे अब वो जावा में नहीं बनेंगे. जावा थोड़ा सा स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करेगा, बेटर सिक्योरिटी ला के देगा. इट केम अप विद द कंसेप्ट कॉल्ड एज अ पैकेजेस, यानी कि कोड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट्स क्रिएशन, वो सारी चीजें जावा कहीं ना कहीं लेके आए. नॉट ओनली दैट, जो सी प्लस प्लस के अंदर जो लाइब्रेरीज की कमी थी, यानी कि वो लाइब्रेरीज जो प्रेजेंट नहीं थे, वो काफी कम लाइब्रेरीज है जो प्रेजेंट नहीं थे, वो जावा के अंदर आते हुए वो सारे बन गए. यानी कि देयर इज अ हेल लॉट ऑफ लाइब्रेरीज और आई कुड से द क्लासेस दैट आर बीइंग क्रिएटेड इन जावा. मतलब एक पूरा का पूरा समंदर अब क्रिएट हो चुका है व्हेन यू टॉक अबाउट जावा. इतना यूज अब वो बन चुका है, यानी कि पूरे के पूरे क्लासेस, पूरे के पूरे डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस दैट यू जस्ट हैव टू स्टार्ट यूजिंग इट. यानी कि द बेस्ट वे ऑफ एब्स्ट्रक्शन अगर आप चेक करोगे तो दैट इज योर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेकिन इतना ही नहीं, अब जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ साथ इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी द फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. उसके साथ साथ जावा क्या है, जावा इज ऑल्सो द फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सोचो थोड़ा सा, पहले वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, अब वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी बन चुका है. यानी कि जावा भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब वो अपडेट होने लगा. पहले जावा सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, अब जावा 8 ऑनवर्ड्स, यानी कि जावा का वर्जन 8 ऑनवर्ड्स जावा फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बन चुका है. सीधे जर्नी, अब जर्नी को चेक करो. सी प्रोग्रामिंग आपने पीओपी से स्टार्ट किया, फिर आपने पीओपी के साथ साथ ओपी भी सीखा, अब आप ओपी के साथ साथ आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी सीखने वाले हो. सीधा एडवांटेज, ओपी के साथ साथ आप क्या सीखने वाले हो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी सीखने वाले हो. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टारगेट. आई होप यू हैव गॉट द एंटायर फ्लो कि क्यों मैं कह रहा था कि सी प्लस प्लस के बारे में अगर कुछ पता होगा तो मैं भी जावा आपको थोड़ा सा इजी जा सकता है, यानी कि आपको इंटरनल समझ आएंगे. हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, यानी कि जिसने सी प्रोग्रामिंग नहीं सीखा है वो सी प्लस प्लस का क्लास ऑब्जेक्ट एटलीस्ट उतना तो सीख ही सकता है, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट ऑफ सी एज इट इज आर देयर इनटू सी प्लस प्लस. सिमिलरली काफी सारे कंसेप्ट फ्रॉम सी प्लस प्लस आर एज इट इज देयर इनटू द जावा प्रोग्राम. तो अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है इन यू हैव टू लर्न इट इनटू द जावा.
तो जावा में आपको कहीं ना कहीं उसको सीखना ही पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग ऑन। दिस इज द जावा प्रोग्राम। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट को पहले सीखते हैं। Whenever you talk about object oriented programming, now listen to it. Object oriented programming, maybe I will write it over here. Object oriented programming. Whenever you talk about this, is it a language? Object oriented programming सिर्फ आप OOP कहोगे तो क्या एक लैंग्वेज है वो, कि is it a methodology? Maybe some people have learned this part. You can just definitely answer it into the chat box. What do you think? Object oriented programming, ये क्या है? This term, what it is? Is it a language or is it a methodology? What do you think? ये टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट अ लैंग्वेज। ये एक मेथोडोलॉजी है, ये एक प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस दैट एवरी लैंग्वेज हैज टू फॉलो। एक मेथोडोलॉजी, एक प्रोसेस, कुछ स्टेप्स कि एक लैंग्वेज को वो फॉलो करना पड़ेगा टू बी एन ओपी लैंग्वेज। यानी कि जावा अगर आप कहोगे तो वो एक लैंग्वेज है पहले, अब वो लैंग्वेज ओपी है कि फंक्शनल है, डिपेंड्स कि क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, क्या वो पूरे के पूरे मेथोडोलॉजी, क्या वो प्रोसेस, क्या वो रूल्स को वो फॉलो कर रहा है कि। सिमिलरली अगर आप सी प्लस प्लस की बात करोगे तो सी प्लस प्लस के केस में भी क्या सी प्लस प्लस उस ओओपी के क्या वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है। इफ इट इज फॉलोइंग दोज रूल्स देन वी कॉल दैट दिस सी प्लस प्लस इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर वो जावा फॉलो कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि जावा भी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि वो सेट ऑफ रूल्स, वो मेथोडोलॉजी, वो प्रोटोकॉल्स उन लैंग्वेजेस को फॉलो करने होते हैं। तो इसमें कौन से रूल्स है, कौन से प्रोटोकॉल्स है दैट दिस ओओपी हैज टू प्रोवाइड। So whenever you talk about object-oriented programming, so according to Grady Bush, who is the pioneer in UML, we could say diagrams, यानी कि जिन्होंने UML का इन्वेंशन किया था. So according to him, the object-oriented programming is being divided into two pillars. According to him, it is divided into two pillars. One is called as the major pillar, and another is called as the minor pillar. Second is the minor pillar. Generally we have two pillars, major pillars and minor pillars. ये major pillar minor pillar क्या होता है? So major pillar consists of four parts. The first one is abstraction. Second one is encapsulation. Third one is modularity, and the fourth one is hierarchy. Generally whenever you talk about the major pillars, it consists of four parts: abstraction, encapsulation, modularity, hierarchy. Whenever you talk about minor pillar, there are three parts into it. One, we have typing slash polymorphism. Then the second part that we have is called as concurrency, and the last part that we have is called as persistence. Look at this. According to Grady Bush, the object-oriented programming, the methodology is been divided into two parts. One is major pillar, another is minor pillar. Major pillar consists of abstraction, encapsulation, modularity, and hierarchy. Minor pillar consists of typing slash polymorphism, concurrency, and persistence. अब ये मेजर पिलर, माइनर पिलर, मेथोडोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, इसके साथ क्या करना है? So whenever you talk about any programming language, and that programming language, if it wants to be an object oriented programming language, any programming language, if it wants to be an object oriented programming language, has to compulsory follow all the major pillars, following the minor pillars is completely optional. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक ओपी लैंग्वेज बनाने के लिए उसने इसके सभी मेजर पिलर्स को फॉलो करना, यानी कि फॉलोइंग ऑल द रूल्स ऑफ दोज पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसको फॉलो करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है. फॉलोइंग द माइनर पिलर्स इज कंप्लीटली ऑप्शनल. अगर उस लैंग्वेज के अंदर ये चार चीजों को फॉलो किया जा चुका है, इफ दैट लैंग्वेज इज फॉलोइंग दीज फोर पार्ट्स, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉडुलरिटी एंड हायरार्की, आप बिंदास से उस लैंग्वेज को एक ओपी लैंग्वेज कह सकते हैं.
You can definitely call that language as an OP language. If any one of the pillar is missing, यानी कि इस मेजर पिलर्स में अगर एक भी वो फॉलो नहीं कर रहा है, यू विल नॉट कॉल इट एज एन ओपी लैंग्वेज. आप उसको ओपी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं कहो. जैसे इफ यू टॉक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सी के अंदर इट डज नॉट फॉलोज दिस हायरार्की. वो इस हायरार्की को फॉलो नहीं करता है, उसके अंदर इनहेरिटेंस का सपोर्ट नहीं है. Now, because it is not present over there, your C is not an OP language. But if you talk about Java and C++, both the languages follow all the major pillars. ये पूरे के पूरे major pillars को follow किया जाता है. And that is why these are the OP languages. Not only that, Java आपके इन minor pillars को भी follow करता है. यानी कि actual में Java follows all the major and minor pillars given by the OP. या इस methodology के, इस rules के वो सारे pillars को follow करता है, major as well as minor. Now, what this major pillar has to say, what this minor pillar has to say, exactly उनको कहना क्या है? Now let us understand this one by one. The very first that we have is called as abstraction. The very first that we have is called as an abstraction. So what is abstraction? Chalo, can I have some answers? Because maybe you are coming from, let's say, the C++ background, or maybe you have done the pre-CAD, or maybe you have studied into your engineering backgrounds. Can you just answer me what do you know about abstraction? जिनको आता है उनके लिए, जिनको नहीं आता है, आई एम देयर, आई विल बी एनीहाउ एक्सप्लेनिंग इट टू यू. चलो, कैन आई एक्सपेक्ट सम ऑफ द आंसर्स? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट यू नो अबाउट एब्स्ट्रैक्शन? यस गाइस. यस. नो एनी आंसर्स? व्हाट डू यू नो अबाउट एब्स्ट्रैक्शन? चलो, ओमकार ने आंसर दिया. आउटर बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट, डेटा हाइडिंग. ओके, राधिका ने आंसर दिया. यस, एनी अदर्स? आई एम एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द आंसर्स. हाइडिंग. Any others? Outer behavior. Okay. Encapsulation. ठीक. Now, whenever you talk about abstraction, उसको थोड़ा सा समझ के लिखते हैं. Let us understand it. Oh, very good. चलो. जसविन ने आंसर दिया है. Very good. Display only the necessary data. Very good. So, whenever you talk about abstraction, it is all about getting to know only the essential things. Maybe essential की जगह पे I could also say required. Only the required things. Getting to know only the required things. इसका मतलब क्या है getting to know only required things? It means that whenever you have performed one operation, कोई भी ऑपरेशन, लेट्स से आप ऐड का ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले, ऑपरेशन की मैं बात करूं, एडिशन का. सो फॉर एन एडिशन ऑपरेशन, व्हाट यू रिक्वायर, कितनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए? सबके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट यू नीड टू प्रोवाइड टू नंबर्स. देखो, मैं एक ऑपरेशन कर रहा हूं, एडिशन का ऑपरेशन. सो फॉर एन एडिशन ऑपरेशन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट आई रिक्वायर? मुझे इसेंशियल चीजें वहां पे क्या है, तो दो नंबर्स. एक नंबर के साथ एडिशन हो नहीं सकता, दो नंबर चाहिए एडिशन करने के लिए, मिनिमम दो नंबर. उसके बाद 3 4 5 आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन एडिशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे दो नंबर्स की. सो लेट्स से 10 + 20. तो मुझे पता है 10 + 20 इक्वल्स टू, अरे ये 30 कैसे है, 30 कैसे है? सो 30 आने के लिए देयर इज सम ऑफ द, लेट्स से, अ प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड इट. यानी कि आपने कभी भी देखा होगा कि 10 + 20 आप डायरेक्टली 30 बोला, डायरेक्टली आपने 30 कैसे कहा? अच्छा, हमें वो मैथ्स में सिखाया गया है सर, क्या हमें बचपन से सिखाया गया कि अगर आप 10 + 20 करोगे तो वो 30 बनेगा. अरे अच्छा, 30 बनेगा, लेकिन कैसे बना वो 30? हाउ दिस हैज बीन कंप्लीटेड? तो वो 30 बनने के लिए आपने कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके का मैथ्स परफॉर्म किया होगा. सो मे बी आपने ऐसे लिखा होगा 10 + 20, और उसके आगे नीचे आके आपने कैसे, लेट्स से डैश 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 आपने दिया होगा, और उसके नीचे आपने कहा होगा कि 0 + 0 क्या होता है, तो लेट्स से 0 होता है पहले, एंड फिर 2 + 1 होता है 3, एंड दिस इज हाउ जनरली वी गेट द आंसर. मे बी आप यहाँ पे क्या करते हो, प्लस करते हो. सो आई होप आपने कुछ इस तरीके से मैथमेटिक्स को जरूर पढ़ा हो. यानी कि ये पूरा उसका क्या हुआ, ये पूरा हो चुका है उसका प्रोसेस. दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ इट. और ये क्या बना, उसका आंसर बना. यानी कि अब, यानी कि आज की एज में किसी को अगर आप कहते हो कि अरे मुझे 10 + 20 करके दो, वो इमीडिएटली क्या कहेगा, 30. क्यों? कि आपने कहा एडिशन करने के लिए क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए.
अच्छा, एडिशन होता कैसे है? एडिशन कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि जो एडिशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन थी, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या थी? सिर्फ दो नंबर्स की। व्हाट वाज द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन? सिर्फ दो नंबर्स की। आपको बोला गया एडिशन करो, अच्छा एडिशन दो नंबर्स, खत्म। उसके लिए ये प्लस लिखो, डैश करो, ये करो, इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए थी, आपको सिर्फ चाहिए था दो नंबर्स की इंफॉर्मेशन। इसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन यानी कि एक ऐसा लेवल होता है कि जहां पे सिर्फ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को यूजर को डिस्प्ले किया जाता है। ओनली द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द यूजर। अननेसेसरी चीजें जो भी होती है उसको हाइड किया जाता है। अननेसेसरी चीजों को हाइड किया जाता है, सिर्फ रिक्वायर्ड चीजों को यूजर को दिखाया जाता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए, यू टॉक अबाउट दिस लैपटॉप्स, यू टॉक अबाउट दिस मोबाइल फोन्स। आप किसी भी पर्टिकुलर ऐसी चीज जो आपके आसपास है उसको इमेजिन करो, वट एवर द थिंग्स दैट आर सराउंडिंग यू, जस्ट लुक एट इट, just understand it, how much information you know about that. Let's say mobile device, how much information you know about that? You just know how to use that mobile device, you don't know what is there inside that mobile device, which type of RAM is there, acha where is that RAM situated, acha what type of battery is there, where the battery is right now, acha which type of camera it is. You just know ki, okay, the camera is 16 megapixel, the camera is 64 megapixel, maybe I have an ultra wide lens, but how that has been fitted, what that exactly camera is, you don't know that. तो कैसे फिट किया गया है वो भी नहीं पता। And like you don't know the internals about the mobile device physically, but what you know is the outer behavior of that mobile device. आपको पूरा का पूरा बाहर से मोबाइल काम कैसे करेगा, अच्छा हाउ टू कैप्चर द फोटोज, हाउ टू वर्क विद इट, हाउ टू प्लेस अ कॉल इनटू इट, हाउ टू ओपन द एप्लीकेशंस, दैट यू नो। यानी कि यू नो ओनली द essential and the required things of that device. This is what we call it as abstraction. इसे कहा जाता है abstraction. So is there anything abstraction and technical example present in Java? Yes, Java itself follows this pillar. So Java के अंदर अगर आपको abstraction चाहिए, so creating the objects, creating the class objects is abstraction. Not only that, calling the functions is abstraction. यानी कि आप जो फंक्शन को कॉल करते हो, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, ये सभी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। दिस ऑल इज कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्शन। थिंक अबाउट इट, फंक्शंस ऑलरेडी लिख चुके हैं, ऑलरेडी द फंक्शन इज प्रेजेंट। जैसे आपके केस में प्रिंटफ का फंक्शन, जैसे आपके केस में लेट से आप जो फंक्शंस सी प्लस प्लस में भी यूज कर रहे थे, वट एवर द फंक्शंस दैट यू आर यूजिंग, उन फंक्शंस प्रिंटफ स्कैनफ सी के फंक्शंस, उनका पूरा का पूरा डेफिनेशन ऑलरेडी लाइब्रेरीज के अंदर प्रेजेंट है। each and everything is already present inside the library. What you do is you just start using those functions, आप बस उनको कॉल करते हैं। So function calling itself we call it as abstraction. C++ में already iostream is a header file जिसके अंदर दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, scene cout of the istream and ostream class respectively. तो ये जो दो ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी बन चुके जो आपको मिल रहे हैं, क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स क्लास ऑब्जेक्ट्स, कैसे क्रिएटिंग द क्लास ऑब्जेक्ट्स, ये भी यहाँ पे क्या है, व्हाट आर दिस, these are all about abstractions. क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं, फंक्शंस को कॉल हो चुका है, उसका ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन दिया जा चुका है। इंप्लीमेंटेशन मुझे चेक नहीं करना है, आई मस्ट नो ओनली हाउ टू यूज देम। मुझे उसका इंटरनल इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए दैट हाउ टू यूज इट। अच्छा, हाउ टू यूज द क्लास ऑब्जेक्ट, हाउ टू यूज द फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्या आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, और क्लास ऑब्जेक्ट बनने के बाद कौन से फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ओनली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, ओनली द इसेंशियल थिंग्स, ओनली द रिक्वायर्ड थिंग्स, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ एब्स्ट्रैक्शन। इसे कहा जाता है एब्स्ट्रैक्शन। एंड जावा follows that abstraction, we could say from the day one itself you will be able to see it. आज के दिन से ये एब्स्ट्रैक्शन देख पाओगे कि अरे ये तो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्शन ही है। पूरा का पूरा जावा, वी कुड से द एंटायर जावा इज बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। आपको उसको जा करके इनकैप्सुलेशन देखना ही नहीं है, इवन यू डोंट नीड टू एक्चुअली एक्सप्लोर इट, बट यस बिकॉज वी आर डेवलपर्स वी आर गोइंग टू लुक फॉर इट। बट अगर आप जावा डेवलपर की बात करोगे, काफी सारी चीजें, ऑल द things that a Java developer do is it does it on the abstract level, and he just know, acha for this particular task which class I need to use, acha go into the documentation, look at the class, just call those functions and your task is done. And again major things has been encapsulated behind the scenes. One of the best example is your collection framework, example of both abstraction as well as encapsulation। आपका जावा का कलेक्शन फ्रेमवर्क एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल। सो हियर यू जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स। आप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप लेट से वो सेट का, और वी कुड से द हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट,
या फिर आप क्यू के अंदर लेट से एरेडी क्यू का बनाओगे या फिर प्रायोरिटी क्यू का बनाओगे, यू विल बी क्रिएटिंग ओनली द ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। उसका पूरा इंप्लीमेंटेशन जावा ने देखे। सो फॉर यू, यू मस्ट ओनली अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, उसके फंक्शंस को कैसे कॉल करना है, दैट्स एब्स्ट्रक्शन कॉल। ये है आपके ओओपी का सबसे पहला पेज, एब्स्ट्रक्शन। इसी का एब्स्ट्रक्शन का ही अदर साइड ऑफ द कॉइन वी कॉल इट एज द एनकैप्सुलेशन, वी कॉल इट एज द एनकैप्सुलेशन। और यू कुड से इट लाइक दिस कि बिना एनकैप्सुलेशन के एब्स्ट्रक्शन पॉसिबल ही नहीं, विदाउट एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। थिंक अबाउट इट, अगर किसी ने फंक्शन ही नहीं लिखा, इफ नो वन इज प्रोवाइडिंग द फंक्शन, फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द एब्स्ट्रक्शन? इफ नो वन इज राइटिंग द क्लास, हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इट? यानी कि विदाउट एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। Encapsulation is a way of binding the data and code together. What is encapsulation? Encapsulation is a way, it is a way of binding the data and code together. It is a way of binding the data and code together. Now for an example, let's say printf and scanf were the functions जिसका let's say implementation developers ने already देखे रखा। We have talked about printf and scanf functions in C programming language we are talking about. If you talk about C++, istream and ostream are the classes whose implementation is already given by the developers. उसका implementation already developers ने देखे रखा। तो वो पूरा इंप्लीमेंटेशन जिसने बना करके रखा, वो फंक्शंस का इंप्लीमेंटेशन जो डेवलपर्स ने बना के रखा, फॉर देम इट इज एनकैप्सुलेशन। उनके लिए जो वो पर्टिकुलर चीजों को डेवलप कर रहे हैं, दोज हु आर गिविंग द इंप्लीमेंटेशंस फॉर इट। सो गिविंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शन और क्लासेस इज नथिंग बट एन एनकैप्सुलेशन। थिंक अबाउट इन द सेम केस, आप मोबाइल का एग्जांपल लो। आपके लिए फॉर यू द मोबाइल डिवाइस इज एब्स्ट्रक्शन, बट व्हाट फॉर द कंपनी हु इज मैन्युफैक्चरिंग इट? जो कंपनी उस मोबाइल डिवाइस को मैन्युफैक्चर कर रही है, दोज पीपल हैव टू इंप्लीमेंट इट पर्टिकुलर ऑन दैट पर्टिकुलर हार्डवेयर, यानी कि वो प्लास्टिक बॉडी, मेटल बॉडी के अंदर उनको वो सारी चीजों को वहां पे रखना है। दे हैव टू असेंबल दोस थिंग्स इनटू दैट प्लास्टिक बॉडी सो दैट इट फिट्स इन अ बेटर वे एंड दैट कॉम्पैक्ट डिवाइस कैन बी हैंडेड ओवर टू यू। और ये जो उनका असेंबली सेक्शन है, यानी कि दोज पीपल हु आर एक्चुअली असेंबलिंग दोस फोन, हु नोज द इंटरनल्स अबाउट इट, द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट डिवाइस, for them it is encapsulation. उनके लिए वो encapsulation बने। Now because they have encapsulated it, you are enjoying the abstraction of it. अब किसी ना किसी ने तो ये रूल को बनाया, someone has created the rule कि अच्छा एडिशन के बाद ऐसे ही करना है। if let's say subtraction होगा तो 1 minus 2 यानी कि आंसर माइनस में ही आएगा। let's say if you do the multiplication, then ये 0 को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करो, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करो। यानी कि जो रूल्स जिसने बनाए, the one who gave out the rules, so for him it is encapsulation, क्योंकि उसने उसको एनकैप्सुलेट किया, वो पूरे रूल्स का एनकैप्सुलेशन किया, और आप उसका बस आउटर बिहेवियर आप एंजॉय करो। फॉर यू इट इज जस्ट एब्स्ट्रक्शन। अच्छा ऐसे करो वो हो जाएगा, ऐसे करोगे तो उसका एडिशन मिलेगा, ऐसे करोगे तो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। सो दीज आर जस्ट द रूल्स दैट आर बीन गिवन टू। उसका इंटरनल वर्किंग जिसने भी इंप्लीमेंट किया है, द वन हु इज इंप्लीमेंटर ऑफ दैट बिहेवियर इज व्हाट परफॉर्मिंग द एनकैप्सुलेशन। तो वो एनकैप्सुलेशन परफॉर्म करेगा। लेट मी नो, is the abstraction and encapsulation clear to you? Are these 2 points clear to you? क्योंकि ये सारी चीजें जावा में होते ही है। जावा में सारे के सारे जितने भी आप क्लासेस देखोगे, all of them are encapsulated. Encapsulated in the sense जावा ने करके रखा है। What you have to do is you have to just call them. उसके बाद ऑब्जेक्ट्स बनाओ, फंक्शंस को कॉल करो। करेक्ट? Definition: getting to know only the essential things. That's the definition of abstraction. As simple as that. Abstraction यही है। आप उसको ऐसे भी कह सकते हो, हाइडिंग द अननेसेसरी डिटेल्स, यू कैन कॉल इट, दैट्स एब्स्ट्रक्शन। यस, आर द कंसेप्ट्स क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, आर द कंसेप्ट्स ऑफ एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन क्लियर टू यू? आर यू एबल टू एक्सप्लेन इट? बिकॉज आई होप कि आप इसके आगे जाकर के मे बी you will be working with the CDAC courses or maybe you will be giving out some interviews, you must be able to answer these questions. अगर आपसे पूछा गया अच्छा एब्स्ट्रक्शन पता है क्या होता है, how you will explain it to this someone, how you will explain it to the interviewer? Interviewer को explain कैसे करोगे? Interviewer does not require the theoretical answers, it is a way of binding. No, just explain it to him. आपको encapsulation क्या समझ में आता है?
explain it with the example. Say, sir, you talk about Java के अंदर we have created the classes. Best example of encapsulation. What they have done, they have taken up data, they have taken up functions, they have binded it inside it. That's encapsulation for you. अच्छा, what is the abstraction? देखो इसका ऑब्जेक्ट बनाया सर, सी दिस इज द एब्स्ट्रैक्शन. यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू मस्ट बी एबल टू टेल दोस थिंग्स टू द वी कुड से इंटरव्यू. करेक्ट? अगर आप इसके बाद इंटरव्यू देना चाहते हो तो हाँ, इफ यू वांट टू गो फॉर द कोर्स सो अंडरस्टैंड इट, इसके ऊपर मे बी आपको आगे जाकर के कुछ एग्जाम्स भी देने हैं. बट अगेन इन गोल आफ्टर द 6 months यू हैव द इंटरव्यूज. सो आंसर इट करेक्टली. लेट मी नो वंस अगेन. सो इज द कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन क्लियर? ये दो कंसेप्ट क्लियर है. गेटिंग टू नो एसेंशियल थिंग्स, यानी कि मोबाइल डिवाइस के बारे में कितना पता है चेतन? हाउ मच डू यू नो अबाउट द मोबाइल डिवाइस? मुझे नहीं लगता कि उसके इंटरनल्स आपको पता है. मे बी आपको ये भी नहीं पता, अगर मोबाइल खोला जाएगा तो आपको ये भी नहीं पता कौन सा वायर कहाँ पे जाता है. कुछ भी कर दोगे तो मोबाइल तो खराब हो जाएगा. आई थिंक इट विल बी डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली. सो जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है मोबाइल डिवाइस यूज करने के लिए, यू जस्ट प्रेस द साइड बटन, इट विल जस्ट टर्न ऑन टर्न ऑफ. इफ यू क्लिक ऑन इट, इट एक्ट्स एज अ फिंगरप्रिंट सेंसर, volume up and down buttons, charging port into the mobile device. Just these are the few apps, calling app, let's say WhatsApp app, and so and so. Rest we don't know anything. Rest we don't know anything. Abstraction. creating the creating the class नहीं, creating the object is abstraction. Creating the class, defining a class is encapsulation. अगर आप क्लास को डिफाइन कर रहे हो तो वो आपके लिए इनकैप्सुलेशन बनेगा. उसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो एब्स्ट्रैक्शन बनेगा. लेट मी शो यू दिस एग्जांपल. अब थोड़ा एग्जांपल की बात करते हैं. लेट मी क्लियर इट वन सेकंड. क्योंकि इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन अगर आपको नहीं पता होगा तो एक्चुअली मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिखा सकता. मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन दिखाने वाला, दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. कंसीडर दिस फंक्शन. वैसे हाँ, लेट मी नो, डू यू ऑल नो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या आपको सभी को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सी प्लस प्लस, आई एम टॉकिंग अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सी प्रोग्रामिंग आता है सभी को? आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स. तो मैं एक्चुअली एग्जांपल ले सकता हूँ. सो डू एवरी वन ऑफ यू नो सी प्रोग्राम? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द मास्टर ऑफ सी. नो, बेसिक सी सबको आता है. यस, वेरी गुड. सो नाउ सी, चलो सबको आता है, वेरी गुड. सो आपने कुछ प्रोग्राम इस तरीके से लिखा था. इंट मेन, आई एम टॉकिंग अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिटर्न 0. So in this C programming language, you started with the first program like this: printf into the double quotes, hello world, hello world. अब ये प्रोग्राम लिखने के बाद what will be my first step? Say I'm explaining it to you something. I hope everyone is aware about it. This is the program that I have written into the C. What will be my next step? मेरा next step क्या होगा? प्रोग्राम लिख चुका हूं, उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रोग्राम लिख चुका हूं, मेरे पास डॉट सी फाइल है. आई हैव गॉट द डॉट सी फाइल. मे बी आई कुड से दिस इज माय हेलो डॉट सी फाइल. क्या करूं इसका? यस, यू हैव टू रन दिस प्रोग्राम. रन करने के लिए क्या करूं? व्हाट शुड आई डू? हाँ, वो बाकी सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन यू. हैश इंक्लूड, जो भी आपको लिखना है, stdio.h, आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो. वेरी गुड. द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपाइल दिस प्रोग्राम. डायरेक्टली रन नहीं होगा प्रोग्राम. द फर्स्ट स्टेप इज टू कंपाइल दिस प्रोग्राम. चलो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं. हाउ यू विल कंपाइल दिस प्रोग्राम? हाउ यू विल कंपाइल दिस प्रोग्राम? ये प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करोगे? चलो फास्ट फास्ट बताओ. तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, यस, कैन आई एक्सपेक्ट सम आंसर्स? प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, अरे एनी आंसर्स? प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम लोग यहाँ पे माय कंपाइलर डॉट एसएम ऐसा एक असेंबली कोड लिखेंगे. वी विल बी राइटिंग एन असेंबली कोड और फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे. अच्छा, आपने ऐसा नहीं किया? क्या आपने असेंबली का कोड खुद से नहीं लिखा? इसको कंपाइल करने के लिए खुद को नहीं लिखा? अच्छा, क्यों लिखेंगे सर? हमारे पास क्या है? व्हाट डू हैव वी गॉट इंस्टेड ऑफ राइटिंग अवर ओन असेंबली कोड? अरे हमारे पास क्या है? हैव वी गॉट द जीसीसी कंपाइलर विद अस? क्या आपने कंपाइलर का कोड पूरा खुद से लिखा है कि आर यू यूजिंग
द ऑलरेडी बिल्ट कंपाइलर दैट इज बीन अवेलेबल। ये क्या किया जल्दी से बताओ, व्हाट यू हैव डन? क्या आपने खुद का कोड लिखा है कंपाइलर का, कि आर यू यूजिंग द कंपाइलर दैट इज ऑलरेडी बीन प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट में भी, विच यू हैव डाउनलोडेड? आर यू गेटिंग दैट थिंग? आर यू गेटिंग दिस एग्जैक्ट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट? कि जीसीसी कंपाइलर की अगर आप बात करोगे तो कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक टूल है। वो टूल बनाया किसने? अरे किसी तो एक्स वाई जेड पर्टिकुलर पर्सन ने बनाया होगा, किसी एक कंपनी ने बनाया होगा। लेट्स से अगर टीडीएम जीसीसी डाउनलोड कर रहे हो, आप मीन जीडब्ल्यू जीसीसी डाउनलोड कर रहे हो, आप विंडोज के लिए लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट ने दिया हुआ जीसीसी डाउनलोड कर रहे हो, तो आप वो पर्टिकुलर कंपाइलर जो है विच इज अ टूल दैट इज बीन डेवलप्ड, अरे ये भी एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन है। तो ये कंपाइलर आपके सी फाइल को रीड करता है और उसका इक्विवेलेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको यहाँ पे बना के देता है। अरे आर यू अवेयर अबाउट दिस? क्या आपको ये पता है क्या वैसे? सो व्हाट यू गेट इज लेट्स से a डॉट exe फाइल, a डॉट exe फाइल। यानी कि आप इस जीसीसी कंपाइलर को यहाँ पे जाके बस कमांड देते हो, यू जस्ट से जीसीसी दिस इज hello डॉट सी। हैव यू डन लाइक दिस? क्या आपने सभी ने ये काम किया है? तो क्या आपने कभी उस कंपाइलर का, क्या आपने कभी उस पूरे कंपाइलर का इंप्लीमेंटेशन खुद नहीं दिया है क्या? हैव यू रिटन योर ओन कंपाइलर्स? हैव यू रिटन योर ओन कंपाइलर? नो। अरे सर हमारा पहले से सी का कोड नहीं बन रहा, कंपाइलर का कोड कब लिखेंगे हम लोग? स्टिल वी आर नॉट एबल टू राइट द पॉइंटर्स करेक्टली, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द कंपाइलर? सो दैट मीन्स ये कंपाइलर का इंप्लीमेंटेशन जिस डेवलपर ने दिया उसने यहाँ पे क्या करके दिया? इनकैप्सुलेशन करके दिया। What he has done is he has encapsulated this. He has encapsulated this. आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या पता होना जरूरी है? What you need to know. आपको क्या पता होना चाहिए? What you need to know is only this command. आपको सिर्फ एक चीज पता होनी चाहिए एंड दैट इज दिस कमांड। अच्छा मुझे कंपाइलर यूज करना है, मुझे क्या करना है? जीसीसी एंड वी कुड से नेम ऑफ डॉट सी फाइल, नेम ऑफ डॉट सी फाइल, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए। यानी कि ये क्या बना? ये एब्स्ट्रक्शन बना, दिस इज एब्स्ट्रक्शन फॉर। ये क्या बना? ये इनकैप्सुलेशन बना। यानी कि कंपाइलर जिसने क्रिएट किया, द वन हु इज क्रिएटर ऑफ द कंपाइलर, ही इज इनकैप्सुलेटिंग इट। द वन हु इज यूजिंग द कंपाइलर, इट इज एब्स्ट्रक्शन फॉर इट। ये आपके लिए एब्स्ट्रक्शन बना, यानी कि आप सी से एक्चुअल में ये काम कर रहे हो। अच्छा ये क्यों? इसके आगे जाओ, कंपाइलर के आगे जाओ, ये देखो प्रिंटफ। आर यू राइटिंग द एंटायर फंक्शन ऑन योर ओन? क्या आप प्रिंटफ का ऐसा खुद का कुछ डेफिनेशन दे रहे हो क्या? प्रिंट एफ दिस इज माई फंक्शन, अरे प्रिंट एफ दिस इज माई फंक्शन। क्या आप ये पूरा का पूरा डेफिनेशन दे रहे हो? नहीं। ये प्रिंट एफ फंक्शन का डेफिनेशन किधर है? अरे इनसाइड द हेडर फाइल। वेयर इज द डेफिनेशन? वो हेडर फाइल से आ रहा है। आई डोंट हैव टू प्रोवाइड द डेफिनेशन फॉर इट, आई जस्ट हैव टू यूज इट। अच्छा यूज करते वक्त मुझे क्या पता होना चाहिए? व्हाट आई मस्ट नो? आई मस्ट नो दैट दिस इज द हेलो वर्ल्ड, यानी कि आइदर यू गिव इट एंटायर इट इनटू द डबल कोट्स, और इफ यू वांट टू प्रिंट द वैल्यू यू हैव टू यूज द फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, मे बी लाइक दिस %d, और यहाँ पे आके आपको जो भी नंबर वगैरह चाहिए वो भी दे सकते हैं। यानी कि जस्ट हाउ टू कॉल दैट पर्टिकुलर printf फंक्शन, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स नीड टू बी पास, बस आपको ये पता होना चाहिए। अदर देन दिस यू डू नॉट हैव टू डिफाइन दैट फंक्शन। यानी कि जो printf फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन जिसने भी दिया है, whoever has given the printf function implementation, he has done the encapsulation for it, वो आपके लिए encapsulation बना। this is the abstraction for it. Calling the function is abstraction for it. Let me know, are the concepts of abstraction and encapsulation clear to you? Okay, if these are clear, so let me show you something. तो अगर आप ये क्लियर हैं तो अब आप देखने के लिए अब एलिजिबल हो। And what we are going to look at is the documentation, maybe Java 8 documentation. If you see what we have got are all the packages. यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे पास बहुत सारे पैकेजेस। ये क्या है क्या नहीं है वो धीरे धीरे एज वी टॉक्ड अबाउट ऑन डे वन, डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जावा। पूरा जावा एकदम से एक दिन में समझने की गलती मत करो। नो, वी हैव 20 days फॉर इट एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। बस मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो देखो, ठीक है। सो देयर इज अ पैकेज कॉल्ड एज java.lang। एक पैकेज है ऐसा java.lang करके।
इनसाइड विच देयर इज अ क्लास, और जो क्लास हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले, इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम क्लास। ये देखो क्लास ऑलरेडी जावा ने बना करके रखा है, इट इज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड। मे बी ऐसा कुछ बिहेवियर, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन यू माइट हैव नॉट सीन इनटू द सी एंड सी प्लस प्लस। मे बी यू हैव जस्ट ओपन अप द हेडर फाइल, मे बी यू हैव सीन समथिंग, बट जावा ऐसा नहीं है। जावा हैज क्रिएटेड वेल फॉर्म डॉक्यूमेंट फॉर इट्स एंटायर वर्जन्स। यानी कि जावा 8 की बात करोगे तो जावा 8 का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, उसके पूरे क्लासेस का डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। सो दैट वेल डॉक्यूमेंटेड जावा इज। सो इनटू द जावा वी आर गोइंग टू यूज द सिस्टम क्लास। जैसे अगर आपको जावा का हेलो वर्ल्ड भी लिखना है तो आपको यहां से स्टार्ट करना है। सो दिस क्लास इज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बाय द जावा विथ ऑल द मेथड्स इनसाइड। यानी कि जो फंक्शंस की आप बात करते हो वो सारे के सारे, ये देखो कितने सारे बन चुके हैं। अब ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस आप यहाँ पे देख पाओगे। जैसे इंटीजर नाम का एक क्लास है मेरे पास, नंबर नाम का एक क्लास है मेरे पास, यानी कि ऐसे बहुत सारे क्लासेस। कैन यू सी दिस? कैन यू सी दिस? देयर इज अ क्लास समथिंग कॉल्ड एज नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन के रिलेटेड कुछ ना कुछ क्लासेस। यानी कि इतने सारे क्लासेस जावा ने बना करके रखे। एंड जावा सेज यू जस्ट क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स। जावा आपको कहता है आप बस ऑब्जेक्ट्स बना। तो ये जो क्लासेस उसने ये पूरे पैकेजेस के अंदर ये सभी क्लासेस जो बना करके रखा है, ऑल दिस थिंग्स जावा हैज डन द इनकैप्सुलेशन फॉर यू। जावा ने पूरा इनकैप्सुलेट करके रखा है। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, जब मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हैज गॉट इट्स ओन एडवांटेजेस, गॉट इट्स ओन लिमिटेशंस, जावा के पास खुद के कुछ एडवांटेजेस है। तो क्या एडवांटेजेस है? तो जावा ने एक पूरा का पूरा, यू कुड से एन एंटायर ओशन ऑफ फंक्शनैलिटीज इट हैज गिवन थ्रू थ्रू दिस क्लासेस। यानी कि इतने सारे क्लासेस उसने बना के रखे कि जिसके थ्रू बहुत सारी फंक्शनैलिटीज उसने यहाँ पे ला के दी। मे बी उतना सेट ऑफ लाइब्रेरी सी प्लस के पास भी नहीं है। इवन द सी प्लस प्लस डज नॉट हैव सच ह्यूज लाइब्रेरी विद इट। उतना बड़ा लेट्स से जावा आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो जावा ने पूरा का पूरा, जावा हैज डन एन एंटायर इनकैप्सुलेशन फॉर यू। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू स्टार्ट यूजिंग इट। सी जावा सीखने के, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट, देयर वर टू वेज। तो आप 5 दिन में सीख सकते हो, 10 दिन में सीख सकते हो, 15 दिन में सीख सकते हो, 1 महीने में सीख सकते हो। सो व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग इट, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन जावा व्हाट यू एग्जैक्टली हैव टू लर्न। ये दो चीजें बताने का रीजन यही था कि एग्जैक्टली exactly आपको क्या सीखना। वेदर यू वांट टू लर्न ऑल द ओओपी concepts, हाउ इट इज बीन इम्प्लीमेंटेड इन जावा, कि वो जावा के अंदर इंप्लीमेंट किस तरीके से किया जा चुका है, कि आपको सीधा सीधा सिर्फ एब्स्ट्रक्शन के ऊपर सीखना है। यानी कि यू डोंट केयर अबाउट व्हाट द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर, यू डोंट केयर अबाउट हाउ द जावा क्लास हैज बीन क्रिएटेड। सर वो जावा क्लास कैसे बनाए मुझे नहीं लगता है, मुझे कोई जरूरत है। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी लाइब्रेरीज इन जावा, आई एम नॉट हियर टू क्रिएट एनी क्लासेस इन जावा। मे बी एक सिंपल सा क्लास बना करके आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल द फंक्शनलिटी। तो वो आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जावा सीख सकते हो, विच यू कैन लर्न इवन इन 5 days। 4 से 5 दिन में आपका जावा खत्म हो जाएगा। सो दैट इज पॉसिबल। बट इफ यू आर हियर टू अंडरस्टैंड द ओपी, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को जावा ने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया है, जावा के पास ये कैसा पॉसिबिलिटी है, उसने क्या किया है, ये अगर आपको समझना है तो मे बी नेक्स्ट 20 days दिस इज व्हाट वी आर हियर। यानी कि अगर आप जावा की बात करोगे तो हम लोग दो वेज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। दो वेज इन द सेंस, पहला तरीका वेर वी विल सी द एंटायर इंप्लीमेंटेशन, कि जावा ने देखो ऐसा ऐसा किया हुआ है, सी दिस इज द वे इट हैज ऑलरेडी डन, एंड देन वी विल स्टार्ट यूजिंग इट ऑन एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल। फिर हम लोग धीरे धीरे उसको एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे यूज करना चालू करेंगे, तब हम लोग इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। यानी कि देन वी हैव टू गो टुवर्ड्स। यानी कि ये दो चीजें, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है इवन बिफोर राइटिंग द हेलो वर्ल्ड प्रोग्रामिंग जावा, कि जावा के अंदर ये लिखने से पहले पता होना चाहिए। क्योंकि जब मैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखूंगा तो आपका पहला सवाल होगा सर ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों क्या? क्योंकि जावा ने ऑलरेडी उसको एनकैप्सुलेट करके रखा है, करके रखा है। एंड जावा इज टेलिंग यू जस्ट स्टार्ट कॉलिंग द फंक्शंस, जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट्स, ये जावा खुद कहता है। So let me know, are these two important things clear to you? Abstraction and encapsulation. जावा इसी के बेसिस पे काम करता है, एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। आप भी जावा में काम करोगे, you will be doing the encapsulation for the other people who will be just using your classes and using your objects, कि वो जस्ट वहां पे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे उसको यूज करना चालू करें। Are these two things clear? नहीं, जावा में भी क्लासेस को क्रिएट करना पड़ता है। इवन इन जावा यू हैव टू क्रिएट द क्लासेस, बट द hierarchy of classes, the size of classes, the number of classes that the Java has provided are too huge as compared to C++। यानी कि C++ में लेट्स से अगर आप फाइल देखने जाओगे तो फाइल इतना सा है, छोटा सा है, मैक्सिमम नहीं है। बट इफ यू टॉक अबाउट जावा, तो जावा हैज गॉट
three ways of doing file: byte stream, character stream, maybe we could say with the classes of reader with the classes of reader and writer. यानी कि बाइट स्ट्रीम और कैरेक्टर स्ट्रीम ऐसे दो अलग वेज वो प्रोवाइड करता है. नॉट ओनली दैट, वो एनआईओ यानी कि नॉन ब्लॉकिंग आईओ भी वो फाइल आईओ के लिए प्रोवाइड करता है. यानी कि उतने यूज सेट ऑफ क्लासेस वो यहाँ पे लाके देता है. मे बी सी प्लस प्लस के अंदर यू डोंट हैव टू डू द सीरियलाइजेशन, यू हैव टू डू द सीरियलाइजेशन ऑन योर ओन. जावा वो खुद करके देता है with the help of its classes that it has been designed. यानी कि काफी सारी चीजें जो हम लोग सी प्लस प्लस में खुद करने पड़ते थे, दैट इज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड इन जावा. वो जावा ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके दिया है थ्रू हिज एंटायर क्लासेस, जितने भी क्लासेस है. दैट्स ओके. सो नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पिलर, आई कुड से मॉडरेटर. यहाँ से आगे जितने भी पिलर्स है, दोज विल बी एबल टू सीट एंड दोज आर रियली सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट. So the third pillar that we talked about is the modularity. So तीसरा पिलर हम लोग बात करेंगे modularity. Whenever you talk about modularity, you talk about organizing the code. Modularity की बात जब करता हूँ तब मैं एक बात करता हूँ organizing the code. Whether you organize the code into different functions, आप एक तो functions के अंदर उसको डिवाइड करो, या फिर आप उनको classes के अंदर डिवाइड करो. You divide it into the classes or you divide it into the multiple files. Did you get it? Where you are going to divide the code? You are going to divide the code into the functions, into the classes or into the files. यानी कि related जितने भी functions होंगे, all the related functions, all the related types, you are going to group it together. उसे हम लोग कहते हैं modularity. So modularity is just dividing the code into smaller modules. That modules will be some functions, maybe those can be classes, maybe those can be the different files. That's what the modularity is. So if you look at the Java, यहाँ पे दिख ही रहा है. Can you see the concept called as packages? This concept we are again going to learn in Java. ये Java में हमको सीखना भी है packages नाम का concept. So you can find it out. So java.lang हो गया. Maybe you can search down over here. You can say java.sql if you want to work with the databases. Maybe we have something called as java.text. Maybe we have something called as java.time. Maybe we have something called as java.util. ये सारे के सारे क्या है? All these are different folders. These are packages that are being created, and inside this what we have are all these particular classes. इनके अंदर क्या है? इनके अंदर वो related type of classes को group किया गया है. That is what we call it as a modularity. इसे ही हम लोग कहते हैं modularity. It is really simple. It is just grouping the related types. So maybe you are grouping the classes, maybe you are grouping the functionalities together, maybe you are just dividing it into different files and you are putting it into the separate folders. इसे ही हम लोग कहते हैं modularity. Is the modularity clear? Maybe I could say dividing. Those who require the definition, I will be writing it. Dividing the code into smaller functions, or we could say into smaller modules. So maybe the modules are going to be smaller modules, means like functions, classes, maybe I could say files, and so on and so on. That's the modularity. Any questions into the modularity? It is pretty much simple. Modularity is really simple. Even आप C++ में देखना चाहते हो, see, include stdio.h. So we have a header file which we are including it, and because we are including it, you are able to access this printf function. यानी कि उसका भी कोड कहीं ना कहीं अलग-अलग फाइल्स में लिखा जा चुका है. Not only that, maybe you will be having some of the functionalities over here. कुछ functionalities आपके पास रहेंगे, extra functionalities, add, subtract, division, उसके functions लिखोगे, and you will be calling those functions over here. Modularity. Is it simple? Modularity? Yes. So now we have the next important major pillar, which we call it as hierarchy. Very important pillar, call it as hierarchy. Now this pillar, hierarchy, is not supported, or we could say the inheritance specifically from this hierarchy is not supported in C. However, you might have seen this inside C++. Maybe आपने इसको C++ में जरूर देखा हो. अच्छा चलो नहीं भी देखा है. So what we are going to do is we are just going to understand it theoretically over here, and the implementation we will be looking for this hierarchy in Java on day 5, maybe day 4 or day 5, whatever the phase that we are going to have. तो उस दौरान हम लोग उसको देखने वाले.
पहले मैं बस आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करता हूँ कि हायरार्की क्या होता है. सो दिस हायरार्की इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट reusability. This hierarchy is talking about reusability. Lity, reusability. So what type of reusability it is? It is reusability about the classes. ये उन reusability की बात करता है, लेकिन किसकी reusability की? तो उन classes की reusability की. कि जैसे सपोज करो मेरे पास एक क्लास है, अब उस क्लास को क्या मैं कहीं ना कहीं रीयूज कर सकता हूं? अच्छा, अगर रीयूज कर सकता हूं तो उसको रीयूज में कैसे करूं? हाउ शुड आई बी रीयूजिंग इट? सो दैट इज व्हाट दिस हायरार्की टॉक्स अबाउट. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास एक क्लास है डेट नाम का. वी हैव अ क्लास कॉल्ड एज अ डेट. अब ये डेट नाम का जो क्लास है वो हर एक जगह पे यूज किया जा सकता है. जैसे अगर पर्सन होगा तो डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज किया जा सकता है. अगर एम्प्लॉय होगा तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए यूज किया जा सकता है. So for an employee, it is going to be date of joining. Let's say if it is a product, then it can be the date of manufacturing, date of expiry. यानी कि the same date class can be reused now multiple times into the different classes. Now when you are going to use it into those classes, how actually you are going to use it? आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो? Whether you want to use it by creating the object within that class or by inheriting it into that class. अच्छा सर ये क्या है? We will talk about. यानी कि ये जो रीयूजेबिलिटी है, दिस रीयूजेबिलिटी, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट हैज. It depends on type of relationship it has with the other classes. The relationship can be a has a relationship or it can be a is a relationship. यानी कि जब आप ये डेट क्लास को यूज करोगे तो वो डेट क्लास उस दूसरे क्लास के साथ, यानी कि मे बी वो क्लास हो सकता है पर्सन क्लास, मे बी वो क्लास हो सकता है लेट्स से एम्प्लॉय क्लास, मे बी द क्लास कैन बी द एम्प्लॉय क्लास, यानी कि वो कोई भी क्लास हो सकता है. इट कैन बी एनी क्लास. तो पर्सन क्लास के साथ डेट कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, डेट एम्प्लॉय के साथ कौन सा रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, वेदर इट इज गोइंग टू बी हैज अ और इज अ रिलेशनशिप, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल बी यूजिंग आइदर द एसोसिएशन और इनहेरिटेंस. एक तो आप एसोसिएशन यूज करोगे या फिर आप इनहेरिटेंस यूज करोगे, आइदर ऑफ द. अगर हैज अ रिलेशनशिप होगा तो आप एसोसिएशन यूज करोगे, इज अ रिलेशनशिप होगा तो आप इनहेरिटेंस यूज करोगे. यानी कि reusing the same classes in what way? Whether you want to create the date class object within these classes or you want to inherit it, now depends on the type of relationship. Has a होगा तो आप association यूज करोगे, is a होगा तो आप inheritance को यूज करोगे. So अगर has a relationship होगा आप इस date class का object ऐसे बनाओगे. Look at this, date d1 or we could say date birth date, like this, date birth date. मे बी एम्प्लॉय के अंदर होगा, यू विल बी राइटिंग इट लाइक दिस, लेट्स से डेट, वी कुड से डेट ऑफ ज्वाइन, लाइक दिस. सिमिलरली अगर आप पर्सन और एम्प्लॉय की बात करोगे तो पर्सन के अंदर जो भी लेट्स से नेम एड्रेस होगा इट इज गोइंग टू बी रिपीटेड फॉर एम्प्लॉय, यानी कि अगेन रीयूजेबिलिटी की बात है. अच्छा, पर्सन और एम्प्लॉय लेट्स से इज देयर गोइंग टू बी अ रिलेशनशिप बिटवीन देम? यस. अच्छा, वो रिलेशनशिप कैसा है, हैज है कि इज है? डिपेंड्स ऑन दैट. लेट्स से अगर हैज होगा तो आपको ऑलरेडी पता है, हैज होगा तो कुछ इस तरीके से करना है, इज होगा तो आपको बस यहाँ पे आगे जाकर के लिखना है एक्सटेंस पर्सन, लाइक दिस. सो इट इज जस्ट अ वे ऑफ रीयूजिंग इट. अगेन आई एम सेइंग डोंट वरी ऑन टू इट. ये सारा काम हमें करना है डे 4 और डे 5 के ऊपर. सो देयर वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टडी ये कब करना है. अच्छा, हैज अ कब होता है, इज अ कब होता है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इट इज, अच्छा क्या होता है ऐसे करने के बाद, ये सारा चीज हम लोग स्टडी करने. वी आर गोइंग टू स्टडी दिस बट नॉट राइट नाउ. जस्ट अंडरस्टैंड इट. रीयूजिंग द क्लासेस either by creating the object like this or by inheriting it, depends on the type of relationship. That's what the hierarchy talks about. One of the largest pillar you could say कि जिसको सीखने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, जिसको सीखने के लिए मे बी entire four or we could say entire 8 hours we require just to understand this code. यानी कि let's say has a relationship हमारा 1-1.5 घंटा लेगा and is a relationship it is actually going to take and that entire let's say 3 hours from that day and even next 4 hours. इतना बड़ा वो टॉपिक है. हायरार्की इज वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक. टाइम लगेगा सीखने के लिए, जस्ट अंडरस्टैंड इट. सो लेट मी जस्ट नो दैट हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज हायरार्की. बस हायरार्की क्या है, हैव यू अंडरस्टूड? और द 4 pillars we have studied: abstraction, encapsulation, modularity and hierarchy. Out of that let me know, have you understood that?
ओके गुड. Now let's come down to the minor pillars. अब जरा देखते हैं minor pillars. As we talked about, following these minor pillars is completely optional. Minor pillars को follow करना optional होता है, but Java does follow all the minor pillars. Java इन minor pillars को पूरा follow भी करता है. Now what are these minor pillars? Let us understand it one by one. Let us start with the very first minor pillar. We call it as polymorphism. Polymorphism. So what is polymorphism? Polymorphism means one entity that takes multiple forms. It is one entity that takes multiple forms. Now what this is, one entity that takes multiple forms, इसका मतलब क्या होता है? So let us take an example. एक example लेते हैं, एक real life example लेते हैं. Maybe you have heard about a movie called as अपरिचित. आपने देखा है वैसे अपरिचित? Have you seen that movie? Maybe सुना होगा. Have you heard about it? अपरिचित? Yes. There is a concept behind it called as multiple personality disorder. वो एक disorder है, वो बात अलग है, but there is a term called as multiple personality disorder. उसमें होता क्या है? So उसमें एक ही person होता है. There is only one person who can take the behavior of multiple personalities. Who can take the behavior? I'm talking about the behavior of multiple personalities. यानी कि लेट्स से वो जो अम्बी वहां पे कैरेक्टर शो किया गया है अपरिचित के अंदर, दैट अम्बी जनरली बिहेव्स एज अ वेरी वेल वी कुड से द सन ऑफ हिज लेट्स से फादर एंड मदर. यानी कि बहुत ही वी कुड से सज्जन जो एक लड़का होता है, जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वैसा कि जो अपने लेट से माँ बाप की बात मानता है, who is really true to his particular job, who follows all the rules. So that is one kind of behavior, one kind of personality that is been shown. एक ही बंदा है. Let's say the same person, वही अम्बी, he has an another personality where he gets really frustrated, really angry, और मे बी उसके पास एकदम से ज्यादा we could say एकदम ताकत आ जाती है, and he just start we could say a kind of let's say actions towards the people who do something wrong into the surrounding or into the environment. Let's say कि कोई अगर कुछ गलत काम करता है, if he is doing something wrong, illegal activities, he is going to punish them. यानी कि उसके पास एक और काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी आ जाता है. बंदा वही है, एक ही पर्सन है, बट ही हैज नाउ गॉट टू पर्सनालिटीज. उसके पास दो फॉर्म्स आ चुके हैं. पहला फॉर्म जो काफी ओबीडियंट है, दूसरा फॉर्म जो काफी एग्रेसिव. सो हैज गॉट टू फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट के बेसिस पे करंट रिक्वायरमेंट क्या है, ही विल टेक दैट फॉर्म. इफ ही इज विथ हिज फैमिली, अगर वो फैमिली के साथ रहेगा, ही विल बी द एमडी. लेकिन अगर वो एक समाज के साथ है, वेयर देयर इज समथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग, ही विल बिकम एन अपरिचित ओवर. So the same person taking two different forms. That's what we call it as a polymorphism. इसको कहा जाता है polymorphism, polymorphic. Maybe he has another form as well, कि जो उसके गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा तो he will be an क्या रेमो, हाँ सॉरी, he is going to be a रेमो. So उसके पास वो तीसरा फॉर्म भी है. So see, पर्सन एक ही है लेकिन उसके तीन फॉर्म्स बने. पहला फॉर्म पेरेंट्स के साथ, दूसरा फॉर्म लेट्स से व्हेन ही इज गोइंग विद द पर्टिकुलर लेट्स से समाज के अंदर जब वो जाता है, व्हेन ही इज गोइंग टू गो इनटू दैट. And then he's going to find out some people who is doing something wrong and he's going to just we could say उनको वो जा करके पनिश करने वाला, he's going to punish them. So kind of an अपरिचित person is going to become, and when he's going to be with his girlfriend, तो वो में भी थोड़ा सा रेमो यानी कि थोड़ा सा रोमांटिक वगैरह बन करके he's going to have it. Maybe all these personalities you do have, ये आपके अंदर भी है शायद से. When you are with your parents, you have a different personality. When you are with your friends, you have a different personality. When you are with your let's say whatever maybe you are the second half I could say, तो उनके साथ जब भी आप रहोगे, you have a different personality. Girlfriend, boyfriend, whoever you have with, or maybe you are married with someone, so you have a different personality. So that is what we have the polymorphism over here. डोंट गो इनटू द टेक्निकल टर्म्स, उसको दिखाना पड़ेगा मुझे टेक्निकल टर्म्स में पॉलीमॉर्फिज्म. सो राइट नाउ आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर लेट्स से ऑप्शन टू शो यू, बट यस डेफिनेटली आई विल टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म इन टर्म्स ऑफ सी. मैं आपको सी के टर्म्स में दिखाता हूँ. सी फंक्शन एक ही है. डू यू नो दिस? प्रिंटेड फंक्शन एक ही. इस फंक्शन को क्या मैं ऐसा एक ही स्ट्रिंग वैल्यू पास कर सकता हूं? Can I pass it like this? Yes. Let's say printf. मेरे पास फंक्शन वही है, एक ही फंक्शन है, but I am going to say it like this: %d, comma number. क्या मैं ऐसे पास कर सकता हूँ?
ये भी कर सकता हूँ। यानी कि इसी फंक्शन को मैं एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकता हूँ, दो आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकता हूँ। फंक्शन वही है, फंक्शन वही है, लेकिन कभी कभी मैं इसको एक भी पास कर सकता हूँ, कभी कभी दो भी पास कर सकता हूँ, कभी कभी लेट से तीन आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकता हूँ, परसेंट कॉमा नम वन कॉमा नम टू। अरे आर यू गेटिंग दैट? एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही एंटिटी एक ही फंक्शन, लेकिन बिहेवियर चेंजेस एज पर द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर बीन पास। यानी कि इसका बिहेवियर चेंज होता है डिपेंडिंग कि उसके सामने कौन है, कि उसके सामने उसके घर वाले हैं, सामने कोई गलत काम करने वाला है, कि सामने उसका लेट से उसकी गर्लफ्रेंड है। सो डिपेंडिंग ऑन दैट, सिमिलरली उसको कितने आर्ग्यूमेंट्स पास किए गए हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट द बिहेवियर इज गोइंग टू चेंज। हियर इट इज गोइंग टू जस्ट प्रिंट हेलो, हियर इट इज गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ नंबर दैट यू आर गोइंग टू पास। दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज द पॉलीमॉर्फिज्म, इसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। So this polymorphism actually how we are going to do or what is the benefit of it? तो इसका benefit, इसका behavior, इसका working, इसकी requirement, to understand all this actually we have to start with the coding first. यानी कि actually हमें कुछ classes लिखने पड़ेंगे and very important is like we have to start with this hierarchy. हमको कहीं ना कहीं reusability के पास भी जाना पड़ेगा to understand. दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। वन इज कॉल्ड एज द कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अनदर इज कॉल्ड एज द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप्स होते हैं। सो द फर्स्ट टाइप दैट वी हैव is called as the compile time polymorphism and the second time is called as the runtime polymorphism. So ये दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म्स क्या होते हैं, कंपाइल टाइम में क्या डिफरेंस है, रन टाइम में क्या डिफरेंस है, कंपाइल टाइम को हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हाउ वी आर अचीविंग इट, ये सारी चीजें हम लोग डेफिनेटली सीखेंगे। लेकिन 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 आज डोंट रश फॉर इट, जस्ट अंडरस्टैंड। इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिया, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आप टेक्निकली अभी यहाँ पे नहीं समझ पाओगे, यानी कि इट इज गोइंग टू बी टू हेवी फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट। कंपाइल टाइम एंड रन टाइम दोनों भी, तो ये कंपाइल टाइम में आएगा फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट, फंक्शन ओवरलोडिंग फिर वो पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड रन टाइम की बात करोगे तो फंक्शन ओवरराइडिंग का कंसेप्ट जो बिना इनहेरिटेंस के नहीं सीख सकते। So technical example is right now not possible for polymorphism. I am going to show it to you. Don't worry on to it. लेकिन हाँ फिलहाल this example goes really good. Printf का फंक example आप ले सकते हो polymorphism. It really suits over there. So let me know is the polymorphism clear to you? Any questions into the polymorphism? Any other questions if you have? Are the pillars so far clear to you? So now लास्ट टू पिलर्स जो बचे हुए हैं रियली सिंपल, ये भी जो पिलर्स है, सो दिस टू माइनर पिलर्स अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। इसके एग्जांपल्स मैं अभी बता के रखता हूं, एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इट इन जावा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेट्स से concurrency and persistence. Maybe I will paste it over here. This is going to be the first minor pillar. ये minor pillar में से पहला minor pillar. This is going to be the next, that is going to be the concurrency, and then we have the persistence. Concurrency means performing multiple tasks at the same time. Concurrent execution, performing multiple tasks at the same time. यानी कि लेट्स से यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इन माय पर्टिकुलर लेट्स से डेस्कटॉप आई हैव ओपन अप दिस क्रोम, मेरे पास क्रोम भी ओपन है, मेरे पास ये जर्नल भी ओपन है, मे बी ये जूम भी ओपन है, वेयर आई हैव दिस चैट बॉक्स, मे बी द सेकंड स्क्रीन इज आल्सो कनेक्टेड। यानी कि ये मल्टीपल लेट्स से जितने भी एप्लीकेशंस है ऑल दोज आर वर्किंग एट द सेम टाइम। behind the scenes if I play a YouTube video over here तो वो भी play होगा, maybe if I open the Spotify, if I start let's say just playing a particular music वो भी play होगा, even if I am doing coding over here वो भी code होगा, maybe I am talking currently with you वो भी हो रहा है onto this particular Zoom। यानी कि multiple we could say tasks are being done at the same time, at the same time multitasking की जो हम लोग बात करते हैं, this is what the concurrency talks about। So it talks about does the language has this feature where I can execute these multiple tasks at the same time? So yes, Java has got that feature और इसको implement करने के लिए what we have to learn is multithreading. What we have to learn is multithreading. यानी कि multithreading is a way to achieve concurrency. अब ऑब्वियसली बात है मल्टीथ्रेडिंग के लिए आज वैसे कुछ थ्रेड्स वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते, तो ये थ्रेड्स वगैरह क्रिएट हमको करना है, बट मे बी आई कुड से ऑन डे 17th और 18th
सो मे बी ऑन टू द सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट और फोर्थ लास्ट डे ऑफ आवर एंटायर जावा प्रोग्रामिंग, तो वहां पे हम लोगों को मल्टी थ्रेडिंग करनी है। क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग के लिए पहले पूरा जावा समझ में आना चाहिए, तब जाकर के हम उसके थ्रेड्स बना सकते हैं। सो मल्टी थ्रेडिंग इज व्हाट रिप्रेजेंट्स द कॉन्करेंसी, द माइनर पिलर ऑफ तो ये भी हमको करना है। दैट्स इट, इतना सिंपल है। कॉन्करेंसी की जहां पे आपके मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे हो सकते हैं। तो जनरली आपका जो फ्लो होता है, व्हेनेवर यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम विद इन द मेन थ्रेड, आपका वह फंक्शनलिटीज जितने भी आप कॉल करोगे वन आफ्टर द अनदर एग्जीक्यूट होते हैं। व्हाट इफ टू फंक्शंस आई वांट टू एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम, यानी कि टू का भी टेबल और थ्री का भी टेबल साइमल्टेनियसली एट अ टाइम दोनों भी प्रिंट होना चाहिए। टू के बाद थ्री नहीं, टू और थ्री दोनों साइमल्टेनियसली। तो ऐसा कुछ अगर काम करना है, यू हैव टू गो फॉर द मल्टी, दैट इज यू हैव टू डू द कॉन्करेंट एग्जीक्यूशंस। दैट्स व्हाट द कॉन्करेंसी टॉक्स अबाउट। And the last minor pillar that we talk about, the persistence, which talks about storing the data permanently on your local storages. So right now, when you run this particular application, Java applications or any particular application, that stores the data temporarily into the RAM. यानी कि वो जहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है रैम के अंदर, जहां पे आपका स्टैक सेक्शन होगा, डेटा सेक्शन होगा, वहां पे वो डेटा को स्टोर करता है। देयर द डेटा इज गेटिंग स्टोर। Now, what if I want the data to be stored permanently onto the storages? यानी कि आपका वो हार्ड डिस्क के ऊपर अगर मुझे स्टोर करना है, so for that you have to perform some IO operations, input output operations, where we will talk about the file IO operations. तो जब आप फाइल आईओ की बात करोगे, तो फाइल आईओ के अंदर यू विल बी स्टोरिंग दैट एंटायर डेटा ऑनटू द फिजिकल, यानी कि आई कुड से ऑनटू द हार्ड डिस्क परमानेंटली। परमानेंटली, दिस इज व्हाट द persistence has to talk about. तो persistence ये कहते हैं। So these are all the major and minor pillars of object-oriented programming that Java does follow it. यानी कि Java इन सभी मेजर और माइनर पिलर्स को फॉलो करता है। तो ये सभी मेजर और माइनर पिलर्स हम लोगों को चेक करने हैं। वी आर गोइंग टू सी दिस, वी आर एक्चुअली गोइंग टू डू द इनकैप्सुलेशन, वी आर गोइंग टू डू द एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन तो मैंने कहा हेलो वर्ल्ड लिखते वक्त एब्स्ट्रैक्शन होगा। वी आर गोइंग टू डू द मॉडलिटी, वी आर गोइंग टू वर्क विथ हायरार्की बोथ द वेज। हमको एसोसिएशन भी करना है, हमको इनहेरिटेंस भी करना है। वी आर गोइंग टू सी द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म भी करना है हमें। इवन ये भी समझना है कि जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करके रखा है उसने। सो इवन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। पॉलीमॉर्फिज्म के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क। वंस अगेन, कलेक्शन फ्रेमवर्क इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉडुलरिटी, हायरार्की एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये पांचों का बेस्ट एग्जांपल आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क है पूरा का पूरा। देन वी आर गोइंग टू सी द कॉन्करेंसी, मल्टीपल थ्रेड्स भी क्रिएट करने हैं। वी आर गोइंग टू यूज द फाइल आईओ, तो वहां पे हम लोगों को डेटा को स्टोर भी करना है ऑन टू द हार्ड डिस्क। ये सारी चीजें हम लोगों को अब जावा के अंदर करना है। दिस ऑल द थिंग्स। सो लेट मी नो, इज द ओओपी मेथोडोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर? क्या आपको ओओपी की मेथोडोलॉजी सारी समझ आ चुकी है कि हर एक चीज क्या क्या है? कंसेप्ट्स, हैव यू अंडरस्टूड इट? लेट मी, very good. So if you have understood the concept now let us go for the first thing, that is the history about Java. Now we are about to start with Java. अब थोड़ा सा जावा को समझते हैं। अब ये ओपी हो चुका है। ओपी, I could say this is going to be a bit kind of revision for those people who have already came from the C++ background. Maybe आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो चुका है। Those who have done it for the first time, it is really good thing that you have understood what are the pillars, major and minor pillars. And now it's time that we start with the language. अब जावा के साथ थोड़ा स्टार्ट करें। So whenever we start with a particular language, we have to just understand the basic history of it. तो थोड़ा सा एक हिस्ट्री ऐसे ही बता करके रखता हूँ, just for the sake of understanding कि जावा कहाँ से आ चुका। So generally, in 1991, the team, 1991, the team, James Gosling, Patrick Norton, and his entire team decided to create a particular language that could run on the very smaller devices. यानी कि उनका एक विजन था कि जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, द डिवाइसेस लाइक लेट्स से smaller gadgets, I could say, like the remote that you use for your TVs and so and so, maybe the washing machines that you see, maybe the ovens that you see. यानी कि जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइसेस के ऊपर, ऑन दोस डिवाइसेस, generally we should be able to write a program, and that program we should be able to write it using this object oriented programming concepts. यानी कि इनको यूज करके कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम्स हमको लिखने आने चाहिए। Generally, the programs that earlier were written was into the assembly code, which was written onto the microprocessors. यानी कि वो microprocessors के ऊपर लिखे जाते थे, बर्न किए जाते थे और उनको यूज किया जाता था।
So their vision was to create such a programming language that can be easily accessible to all the developers, can be easily implemented, and can be used down for the smaller devices. ऐसे विजन के साथ they started their journey in 1991 to create this particular language. 1992 आते आते, generally in 1992, the team came up with a particular product, जिस प्रोडक्ट का नाम था स्टार 7. स्टार 7. So this was a product, एक स्मार्ट रिमोट था, which was based entirely on this particular language. यानी कि उस रिमोट के अंदर इस जावा लैंग्वेज को यूज करके लेट्स से उसके अंदर फंक्शनैलिटीज को दिया गया था. इन 1992 दिस रिमोट वाज बीन लॉन्च्ड, जिसको स्मार्ट रिमोट कहा जाता है. बट इट वाज नॉट वेरी पॉपुलर. जो उनकी कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम्स, सो दोज वी कुड से द हायर ऑफिशियल्स इनटू दैट कंपनी were not interested into that product. उनके प्रोडक्ट के अंदर उनको जरा भी इंटरेस्ट नहीं था. नॉट इवन द एंटायर वी कुड से इंडस्ट्री वाज रेडी फॉर सच पर्टिकुलर रिमोट. यानी कि उनको स्मार्ट रिमोट से कोई लेना देना भी नहीं था, यानी कि बाकी की कंपनीज भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं. सो दे डिसाइडेड टू ड्रॉप दिस आइडिया. तो उन्होंने उस आइडिया को ड्रॉप किया, यानी कि इस मैजिक और वी कुड से सॉरी स्टार 7 यानी कि जो स्मार्ट रिमोट कंट्रोल उन्होंने बनाया था. सो दे ड्रॉप दिस आइडिया एंड दे डिसाइडेड टू वर्क ऑन दिस लैंग्वेज, कि उस लैंग्वेज के ऊपर और थोड़ा सा काम करते हैं, एंड लेट अस बिल्ड अप बेटर लैंग्वेज आउट ऑफ इट. एंड दे स्टार्टेड अगेन वर्किंग ऑन इट. सो उसके साथ 1 साल 2 साल दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन टू इट, एंड इन बिटवीन उसी सालों के दौरान द थिंग दैट वाज गेटिंग पॉपुलर वाज www, यानी कि इंटरनेट वाज गेटिंग पॉपुलर. एंड द की टू दिस इंटरनेट वाज योर ब्राउजर. यानी कि जिस भी कंपनी ने ब्राउजर बनाया, ही वाज द किंग ऑफ दैट मार्केट. सो दिस जावा पीपल ऑल्सो डिसाइडेड कि क्यों ना हम लोग इसको भी ट्राई कर लें, कि लाइक हमारा एक प्रोडक्ट तो फेल हो चुका है. नाउ व्हाटएवर वी आर वर्किंग विद, व्हाई डोंट वी even hit over here, and why don't we create our own browser? Where they came up at that time with their own browser called as hot java browser. तो उनका पहला ब्राउजर उन्होंने लॉन्च किया hot java browser, which became really popular at that time. उस दौरान ये काफी पॉपुलर भी बना. Now when this browser was popular, the main reason for its popularity is because of the java code that was running within the browser. यानी कि पहले के जो ब्राउजर्स होते थे, सो इन दोस ब्राउजर्स इट वाज ऑल अबाउट द स्टैटिक पेजेस. यानी कि पेजेस स्टैटिकली दिखते थे, जो भी कोड लिखा है एचटीएमएल से जो भी लिखा जाता है, तो सिर्फ स्टैटिकली वो पेजेस दिखते थे. उसके साथ कुछ भी डायनामिक बिहेवियर अटैच्ड नहीं था. देयर वाज नो डायनामिक बिहेवियर फॉर इट. सो दैट डायनामिक बिहेवियर वाज बीन अटैच्ड टू दोस पर्टिकुलर पेजेस by this hot java browser. यानी कि ब्राउजर जो जावा पीपल ने और वी कुड से द टीम दैट दे क्रिएटेड दिस ब्राउजर कॉल्ड एज अ hot java browser, it has the capability to put down the dynamic behavior for those pages. वो जो पहले के स्टैटिक पेजेस थे, उन स्टैटिक पेजेस को कन्वर्ट करके उन्होंने डायनामिक पेजेस में किया. तो अब यहां से इट हैज गॉट द बिहेवियर ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. तो वो डायनामिक बिहेवियर की वजह से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का बिहेवियर वहां पे कहीं ना कहीं, यानी कि द डेटा वाज बीन फेच्ड फ्रॉम द सर्वर एंड द डेटा वाज अगेन सेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड टू द सर्वर. और ये इस ब्राउजर के थ्रू पॉसिबल था. And the Java code that was running within this hot Java browser, it was called as applets at that time. तो उन applets की वजह से this Java became so popular. तो वो Java इस वजह से पॉपुलर बना. And from then on, Java started its entire journey. वहां से वो जर्नी को पूरा स्टार्ट किया गया. फिर उसके बाद काफी सारे वर्जन्स Java के निकल गए. So let us look at those versions that was been created. एक वर्जन्स की लिस्ट जो है वो मेरे पास है. मे बी आई होप I haven't opened it. Let me open this up. हाँ, एक और चीज वर्जन दिखाने से पहले I want to share it with you कि after every day you will be definitely getting these notes that you can refer it after this entire we could say theoretical session, कि जहाँ पे आपको डेफिनेशंस वगैरह चाहिए. जिन्होंने मुझे पूछा था कि सर वो डेफिनेशन से वो सारी चीजें कहाँ पे मिलेगी, तो ये जो नोट्स होंगे वो नोट्स आपको डेफिनेटली मिलते रहेंगे. डेली के बेसिस पे आपको मिलेंगे, उसकी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी. ठीक है. So let me show it to you first. So this is the notes that you will be getting. ये पूरा हिस्ट्री जो मैंने बात की, वर्जन्स, जावा प्लेटफॉर्म्स, इंस्टॉलेशन, ये सारे जितने भी नोट्स होंगे, ये सारे के सारे नोट्स आपको डेली मिलेंगे. डेली डे वाइज आपको मिलते रहेंगे. सो डोंट वरी ऑन टू इट. सो लेट अस फोकस ऑन टू द वर्जन्स फर्स्ट. अभी हिस्ट्री मैंने बात की, लेट अस टॉक अबाउट द वर्जन्स. सो जनरली जो बीटा वर्जन उनका लॉन्च हुआ था जावा का, इट वाज लॉन्च्ड इन 1995. बीटा वर्जन इन द सेंस फॉर द डेवलपर्स, कि जहां पे कुछ अगर चेंजेस वगैरह होंगे सो दे कैन रिक्वेस्ट देम एंड दैट कैन बी डन. उनका ऑफिशियल पहला वर्जन जावा का लॉन्च हुआ था लेट्स से January 23, 1996. मे बी आई कुड से राइट नाउ इट इज गोइंग टू बी 29 years exactly.
इवन आई कुड से बीटा वर्जन लॉन्च हो करके आई कुड से अराउंड ऑफ 30 इयर्स होने लगे. सो आई थिंक इट इज नाउ 29 इयर्स जब पहला वर्जन लॉन्च होके उनका हो चुका है जनवरी 23 करके. सो उसके बाद जनवरी 1.1 फरवरी में 1997 द सेकेंड वर्जन वाज लॉन्च. तो ये जो 1.0 1.1 वर्जन थे जावा के, इट वाज फॉर द डेवलपर्स की डेवलपर्स ने जो उस लैंग्वेज को अब यूज करना धीरे धीरे चालू किया था बिकॉज ऑफ द एप्लेट्स दैट वाज पॉपुलर इनटू द हॉट जावा ब्राउजर. जो मेजर चेंज यहाँ पे निकल के आया इट वाज जावा 1.2 वर्जन वेयर दे इंट्रोड्यूस्ड दिस जावा कलेक्शन. यानी कि जो कलेक्शन फ्रेमवर्क आज आप पढ़ते हो, यानी कि टॉक अबाउट जावा इज पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स कलेक्शन फ्रेमवर्क इज व्हाट इंट्रोड्यूस्ड इनटू द जावा वर्जन 2 1.2 इन 1990. जावा कलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया गया. एंड जब वो इंट्रोड्यूस किया गया तो उसका जो एब्रीवेशन था उन्होंने कहा एज J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन. पहले वो कहते थे जेडीके 1.0 जेडीके 1.1, लेकिन जावा का 2 वर्जन जब जावा कलेक्शन के साथ उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया तब उन्होंने कहा J2SE, दैट इज जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन. अब इस जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन के अंदर उनके पास कुछ वर्जन आने लगे लाइक 1.3 1.4 एंड 1.5. यहां तक उनके वर्जन थे जिनका नाम उन्होंने सेम ही रखा था जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन. जो मेजर चेंज इस 1.2 के बाद जो मिला दैट वाज इन जावा 5 वेयर दे इंट्रोड्यूस द इनम, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जेनेरिक्स एंड द एनोटेशंस. कि जेनेरिक्स के बिना आप आज का कलेक्शन इमेजिन कर ही नहीं सकते. विदाउट जेनेरिक्स यू कैनॉट लर्न द कलेक्शन ऑफ व्हाट द जावा इज ऑफरिंग टुडे. हाँ, इसके पहले का कलेक्शन थोड़ा अलग था लेकिन अब जेनेरिक्स के बाद यानी कि जावा 5 के बाद उस कलेक्शन को भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई किया जा चुका है और बिना जेनेरिक्स का कलेक्शन आप सीख नहीं सकते. सो ये चेंज हुआ था इन 2004 इन द जावा 5th वर्जन. सो नाउ द जावा पीपल अंडरस्टूड कि हम लोगों ने जावा 2 के दौरान ये एब्रिविएशन दिया था जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन. नाउ दे चेंज्ड इट इनटू द नेक्स्ट अपडेटेड वर्जन दैट इज फ्रॉम जावा 6. तो अब उन्होंने कहा इट इज जावा एसी. तो जो पहले जावा J2SE था उन्होंने उसको चेंज करके बोला इट इज जस्ट द जावा स्टैंडर्ड एडिशन. नाउ इट इज नॉट जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, इट इज जस्ट द जावा सिंपल स्टैंडर्ड एडिशन. तो जावा 6 7 एंड 8 अगेन द वर्जन्स वाज लॉन्च. एंड जो मेजर चेंज यहाँ पे देखने को मिला दैट वाज इनटू द जावा 8. कि जावा 8 के अंदर दे इंट्रोड्यूस्ड समथिंग कॉल्ड एज फंक्शनल प्रोग्रामिंग. उन्होंने इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया. इस फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर दे इंट्रोड्यूस्ड द लैम्बडा एक्सप्रेशन, यानी कि लैम्बडा एक्सप्रेशंस, शॉर्ट हैंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंक्शनल इंटरफेसेस एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कॉल्ड एज द स्ट्रीम्स, अ पाइपलाइन ऑफ ऑपरेशंस. यानी कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज स्ट्रीम्स, और स्ट्रीम के साथ काम करने के लिए what you need to understand is the lambda expressions. This was the major revision that was done into the Java 8. उसके बाद भी we could say we have different versions like the Java 9, Java 10, Java 11, 12, 13, 14, so and so till March 23 that I have written, which is Java SC 20. ये सारे versions आप Java के present है. If you find it out, for some of the versions into the bracket there has been written something called as LTS. The LTS stands for long term support. यानी कि ऐसे वर्जन्स जो काफी लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक उसको सपोर्ट दिया जाएगा. यानी कि दोज हु आर यूजिंग दिस जावा फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, लेट्स से उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर जावा के कुछ क्लासेस में अगर इश्यूज आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो इश्यूज वो प्रॉब्लम्स वो पर्टिकुलर कंपनी सॉल्व करके देगी. जैसे पहले जावा जब बना था इट बिलोंग टू द सन माइक्रो सिस्टम्स, बाद में उसको ओरेकल ने लेट से खरीद लिया था सन माइक्रो सिस्टम्स को. सो नाउ द जावा इज एंटायरली मैनेज्ड बाय द ओरेकल. तो ओरेकल जो जावा देता है जेडीके देता है इट इज फॉर द कमर्शियल पर्पसेस. तो वो कमर्शियल पर्पसेस के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर बिकॉज ऑफ द जावा लाइब्रेरीज, तो उनको सॉल्व करके देगा ये आपका ओरेकल. यानी कि उसको पर्टिकुलर सपोर्ट किया जाएगा फॉर दोज वर्जन्स. कमर्शियल पर्पसेस के लिए मैं बात कर रहा हूँ. तो ऐसे कुछ वर्जन्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट यानी कि काफी लंबे समय तक ये आपको सपोर्ट देने वाले हैं. देयर आर सम ऑफ द वर्जन्स दैट माइट बी सपोर्टेड फॉर अ ईयर और जस्ट फॉर अ 2. उसके बाद वो लोग भी कहेंगे कि आप बेटर है आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन्स पे चले जाओ, यू जस्ट टेक अप दिस लाइब्रेरीज व्हिच हैज ऑल द बग्स दैट आर बीन ऑलरेडी बीन रिजॉल्व्ड. तो ऐसे जो एकदम स्टेबल वर्जन्स निकल के आते हैं, स्टेबल वर्जन्स वी आर टॉकिंग अबाउट, उनको जनरली एलटीएस वर्जन्स करके एब्रिवेट किया जाता है एंड दोस वर्जन्स आर बीन सपोर्टेड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. दैट्स व्हाट एलटीएस स्टेट्स फॉर. So these are some of the versions that the Java has provided. The one version that we are going to target is this Java 8 and Java 11. यानी कि the most part that we are going to work is with the Java 8 features. अब ये रीजन भी है क्योंकि Java 8 एक पिवोट है कि जहां से वो ओओपी से हट करके फंक्शनल प्रोग्रामिंग के पास जा चुका है.
अब इसके आगे अगर आप नोटिस करोगे तो देर आर सो मेनी मेथड्स that initially used to have the behavior of OP which are now been deprecated or which is been removed also. तो क्योंकि हमें दोनों भी पार्ट करना है, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद बोथ, दैट इज ओपी एज वेल एज द फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि दोनों भी हमें पढ़ना है, वी हैव टू स्टिक टू दिस पिवोट, यानी कि ये पर्टिकुलर वर्जन की जो दोनों को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसके पास ओपी का भी बिहेवियर है एंड द वर्जन दैट ऑल्सो हैज दिस फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जो कि दोनों भी उसको मिल चुका है. सो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू वर्क विद दिस जावा 8 फीचर्स. तो हम लोग इसलिए इस जावा 8 के पास हैं. तो आज आपको जो करना है, सो टुडे व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज फर्स्ट थिंग दैट you have to install the Java onto your machines. Now what the installation is going to be, all those things I am going to tell you, but let me first talk about this. इस वर्जन के रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? Why Java 8? Is it clear first of all? कि सर क्यों आप लोग आगे के वर्जन को नहीं जा रहे हो? Why you are not considering this Java 17? Why you are not considering this Java 11? Is it clear? मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है. Why Java 8? Because it is a pivotal कि आप जिससे पहले ओपी भी सीख सकते हो और उसके बाद का फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हो. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज इट, क्योंकि यह हमें चूज भी करना है. व्हेन वी आर गोइंग टू क्रिएट दोस प्रोजेक्ट्स वी आर एक्चुअली गोइंग टू चूज दिस पार्ट. यस, लेट मी नो एनी क्वेश्चंस सो फार टिल द वर्जन्स. नो? गुड. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस. whenever you talk about Java ने कुछ प्लेटफॉर्म्स देके रखे. Now, you talk about Java and Java is really huge. Java has provided different solutions for your different requirements. आपकी जैसे जैसे requirement बनेगी वहां पे they say our Java is available. So now Java has provided different platforms where you can start using its entire libraries or entire frameworks and you can start developing the applications. So Java की अगर आप प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो Java के पास ऐसे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं. तो जो पहला है we call it as the smart card. The second we call it as Java ME. The third platform that we have is called as Java SE, and the fourth that we have is called as Java EE. So ऐसे हमारे पास 4 प्लेटफॉर्म्स है Java. So which platform we are targeting ये भी हमें पता होना चाहिए. So पहला स्मार्ट कार्ड, यानी कि जो स्मार्ट कार्ड्स आपको पता है, मे बी द लाइसेंसेस दैट यू हैव सीन, और छोटे छोटे कार्ड्स जिसके ऊपर जावा का प्रोग्रामिंग और वी कुड से द लाइब्रेरीज यूज करके उसके ऊपर कोडिंग की जा सकती है फॉर लेट्स से सम ऑफ द स्पेसिफिक बिहेवियर्स. तो ऐसे स्मार्ट कार्ड्स के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, सो फॉर स्मार्ट कार्ड दे हैव देयर ओन इंडिविजुअल जावा प्लेटफॉर्म. उनके पास उनका जावा का प्लेटफॉर्म खुद का प्रेजेंट है. Java ME is an another platform which is also called as the mobile edition or micro edition जो कहा जाता है. It is for the small feature devices, यानी कि जो फीचर फोन्स आपने जियो के वो फोन्स देखे होंगे, फीचर फोन्स यू माइट हैव सीन. सो दोज पर्टिकुलर फीचर फोन्स जिनके अंदर लेट से वो कीपैड का भी कीपैड्स होते हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशंस होते हैं विच जस्ट प्रोवाइड सिंपल फीचर्स ऑफ कॉलिंग, सिंपल फीचर्स ऑफ एसएमएस, सिंपल फीचर. वो कोई एप्लीकेशंस नहीं है, मेजर एप्लीकेशंस नहीं है, दोज आर जस्ट द फीचर्स दैट आर बीन प्रोवाइड. तो ऐसे फीचर फोन्स के लिए अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करना है, दे हैव अ सेपरेट प्लेटफॉर्म फॉर इट विच वी कॉल इट एज द जावा एमी माइक्रो एडिशन या फिर मोबाइल एडिशन आप कह सकते हैं. द थर्ड प्लेटफॉर्म दैट वी आर टारगेटिंग, you are here to learn, that is the Java SE. We call it as the standard edition, which is meant for the desktop application. It is meant for the desktop applications. So whenever you talk about Java SE, तो Java SE के अंदर आप एक तो कंसोल लेवल एप्लीकेशंस बनाओगे या फिर GUI के साथ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस ही बनाओगे. सो इसको टारगेट करने के लिए द जेडीके दैट वी आर गोइंग टू इंस्टॉल, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज इट टू डेवलप दिस एप्लीकेशंस. सिमिलरली सर अगर हमको डेस्कटॉप ना करके अगर हमको वेब एप्लीकेशंस बनाने हैं तो व्हाट इफ आई डोंट वांट टू डेवलप द डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, आई वांट टू डेवलप दोस वेबसाइट्स लाइक द ई-कॉमर्स वेबसाइट, लाइक लेट्स से द Amazon, द फ्लिपकार्ट. अगर वो करना है यू हैव टू गो फॉर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म दैट इज द जावा EE व्हिच टॉक्स अबाउट एंटरप्राइज एडिशन, टॉक्स अबाउट द एंटरप्राइज एडिशन. हियर यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म टू डेवलप द वेब एप्लीकेशंस. यानी कि आप कौन से टाइप ऑफ एप्लीकेशंस को डेवलप करना चाहते हो, which type of applications that you want to develop, depending on that you should be choosing the correct platform. If you want to go for let's say for the development onto the smart cards, you should be using that platform. अगर आपको मोबाइल डिवाइसेस के लिए करना है, you should be using Java ME. अगर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस करना है, you should be using Java SE. And if you want to go for web applications, web development, so you should be using the Java EE. So you should be choosing the correct platform over here while working with it.
Those are the Java platforms that we have. Now, the first thing whenever you start with this particular development, or we could say we are targeting this desktop applications, the first thing that you require over here is the entire environment into which you can start working with it. अब इमेजिन करो आपके पास एक खाली पीली लैपटॉप, यू हैव दिस लैपटॉप विद यू, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या करोगे उसके अंदर? क्या सिर्फ मूवीज और गेम्स ही खेलोगे? सर मुझे डेवलपमेंट करना है। अच्छा, डेवलपमेंट करना है, दैट मीन्स फॉर दैट डेवलपमेंट नाउ यू रिक्वायर अ प्रॉपर एनवायरमेंट। उसको कुछ इस तरीके से समझो कि लेट्स से आपने एक नया लैपटॉप खरीद के लेके आए हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्लेन यू हैव द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ सपोज यू वांट टू प्ले अ पर्टिकुलर वीडियो। नाउ इफ यू वांट टू प्ले अ वीडियो, व्हाट यू नीड इज अ वीडियो प्लेयर फॉर इट। बिना वीडियो प्लेयर के आपका वीडियो यहाँ पे प्ले नहीं हो सकता, यू कैन नॉट प्ले अ वीडियो ओवर देयर। सिमिलरली अगर आपको डेवलपमेंट भी करना है तो डेवलपमेंट करने के लिए ऑल्सो यू रिक्वायर सम सेट ऑफ टूल्स फॉर इट। बिना उन टूल्स के आपका वो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। सो लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर सी कोड, द सी कोड दैट वी हैव सीन अर्लियर, कि जो मैंने हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखा था, इफ आई वांट टू एग्जीक्यूट इट ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, द फर्स्ट थिंग दैट आई रिक्वायर इज द कंपाइलर। बिकॉज यू सेड कि सर हम लोग हमारा कंपाइलर खुद तो नहीं लिखते, वी डोंट राइट आवर ओन कंपाइलर्स, वी जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट एंड वी जस्ट यूज इट फॉर द कंपाइलेशन। सिमिलरली ये जो कंपाइलर आप सी में यूज कर रहे थे टू कंपाइल द कोड, वैसे ही अब जावा के लिए भी लगेगा। लाइक इफ यू आर राइटिंग एनी पर्टिकुलर कोड इन जावा, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर कोड शुड बी कंपाइल, और कंपाइल करने के बाद मे बी यू शुड बी एग्जीक्यूटिंग इट, तो वो एग्जीक्यूट भी करना है। तो जैसे सी सी प्लस प्लस के लिए इट वॉज रियली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल, वेर यू जस्ट डाउनलोड दोस कंपाइलर्स फ्रॉम द वेबसाइट्स, क्या वहां पे जाते हो टीडीएम जीसीसी और मीन जीडब्ल्यू जीसीसी दैट यू वांट, मे बी फिर आप आगे जाकर के विंडोज के कंपाइलर्स अगर कुछ डाउनलोड करते हो, यू जस्ट डाउनलोड इट एंड यू जस्ट स्टार्ट वर्किंग विद इट, सिंपल सा कमांड और इट इज गोइंग टू गो। बट फॉर जावा इट इज नॉट लाइक दैट, जावा के लिए वैसा नहीं है। सो फॉर द जावा व्हाट यू नीड टू डाउनलोड इज कॉल्ड एज द जेडीके। अब इसको समझना काफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एज अ डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, because maybe you will be developing the applications and maybe you will be also deploying those applications. तो उसके perspective you must be understanding what this JDK is. So the JDK first of all stands for Java Development Kit. Java Development Kit. Now what this Java Development Kit is? ये आप एक पूरा एक पैकेज की तरह कंसिडर कर सकते हो। एक पर्टिकुलर लेट से एक छोटा सा वी कुड से एक पैकेट जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। एक पैकेट यानी कि यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ बॉक्स, कि इनटू दैट बॉक्स देयर आर वेरियस थिंग्स दैट आर बीन केप्ट व्हिच यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट फॉर योर डेवलपमेंट, फॉर योर डेवलपमेंट। सो एक ऐसा किट, यानी कि जैसे हम लोग एक जनरल टर्म्स में बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, where in generally in software development kit what you get are different tools, different set of libraries, you get the documentation, along with that you might get something called as runtime environments into it, maybe कुछ development kit generally उनके IDs के साथ भी आते हैं। सो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो ये सभी चीजों के साथ आता है, वैसा ही कहीं ना कहीं ये जेडीके भी है, जावा डेवलपमेंट किट। If you talk about this JDK, so this JDK generally consists, or inside this JDK, there are two important things that you get. The first thing that you get are the tools, एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स, उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मिलता है, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गेट ओवर हियर वी कॉल इट एज जेआरई। मे बी आई विल राइट इट ईच एंड एवरीथिंग, कि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट की बात करते हो, जावा डेवलपमेंट किट की बात करते हो, सो व्हाट यू गेट आर लेट्स से द टूल्स, आपको टूल्स भी मिलते हैं, आपको डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर मिलता है, यू गेट द सेट ऑफ लाइब्रेरीज, बट व्हाट यू गेट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर along with that is something called as GRE. Now what this GRE is, तो GRE को कहा जाता है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। अब इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। So generally people download something wrong things onto their machines and they struggle with, sir, our STS is not working over here. So it is saying that the JDK is missing and so on. So you must understand what you are downloading first. So you have to download as a developer, because you are developing this application, you have to download this JDK, that is the Java Development Kit. इस डेवलपमेंट किट के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलती है, टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन, जेआरई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। अब ये टूल्स इन द सेंस क्या? टूल्स इन द सेंस द कंपाइलर दैट यू आर गोइंग टू यूज, एंड फॉर एग्जीक्यूशन द जावा टूल दैट यू रिक्वायर, यानी कि जावा सी नाम का एक कंपाइलर और जावा नाम का एक टूल कि जो आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के काम में आता है।
उसको समझने के लिए जो उसके मैनुअल पेजेस यानी कि जो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी आपको मिल जाता है। बट ये जो एग्जीक्यूट होता है जावा का कोड जो एग्जीक्यूट होता है दिस जावा कोड डज नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली ऑन टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। इट डज नॉट एग्जीक्यूट डायरेक्टली ऑन टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके इस रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होता है। जनरली इस रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। दिस GRE consists of two parts. Let me write it down over here. So I'm going to say it like this: tools plus docs documentation plus GRE को मैं split करता हूं into something called as JVM plus RT dot like this. Now see this up. JDK which stands for Java Development Kit. Then we have the GRE which is present inside the JDK. वो जो JDK के अंदर है GRE जावा रन टाइम एनवायरमेंट, और उस जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा JVM plus RT dot। अब ये क्या होता है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। जनरली व्हेन यू टॉक अबाउट एनी जावा पर्टिकुलर कोड, कोई भी जावा का कोड, लेट्स से आई हैव अ पर्टिकुलर फाइल, वी विल कॉल इट एज hello.java। नाउ दिस hello.java फर्स्ट यू हैव टू कंपाइल दिस, आपको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए यू विल बी यूजिंग अ टूल फ्रॉम दिस जेडीके। उस जेडीके के अंदर का एक टूल आप यूज करोगे जिस टूल का नाम है जावा सी विच स्टैंड्स फॉर जावा कंपाइलर, एंड यू विल बी सेइंग hello.java। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कंपाइलिंग दिस फाइल। आप इस फाइल को कंपाइल करें। वॉट एवर द कंपाइलेशन दैट यू हैव डन, कंपाइलेशन के बाद व्हाट यू आर बी गेटिंग और व्हाट यू विल बी गेटिंग इज समथिंग कॉल्ड एज whatever we have the file, let's say hello.class file, यानी कि उसकी डॉट क्लास फाइल बनती है। एग्जीक्यूटेबल फाइल डायरेक्टली नहीं बनेगी, इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, इट इज अ डॉट क्लास फाइल जिसको कहा जाता है इंटरमीडिएट फाइल। इंटरमीडिएट फाइल आई विल बी ड्रॉइंग अ सेपरेट डायग्राम फॉर इट। डोंट राइट डाउन एनीथिंग, अब अभी फिलहाल कुछ मत लिखो, जस्ट फोकस ऑन टू दिस। आई विल बी ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर डायग्राम जहां पे मैं आपको एक्जैक्टली कंपाइलर के बीच में, यानी कि द कंपाइलर दैट यू आर यूजिंग इन C++ और जावा के अंदर ये JVM कैसे काम करते हैं उसका एक डिफरेंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट राइट नाउ फर्स्ट फोकस ऑन टू दिस जेडीके कि जेडीके के अंदर क्या क्या मिल रहा है और क्यों मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव इज अ जावा फाइल। जावा फाइल को आपने कंपाइल किया, कंपाइल करने के लिए आपने टूल्स को यूज किया, टूल्स में से जावा सी टूल को यूज किया। आफ्टर द कंपाइलेशन व्हाट यू हैव गॉट इज अ hello.class फाइल। सो जो डॉट क्लास फाइल जो डॉट क्लास फाइल आपको मिली है, दैट डॉट क्लास फाइल कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली ऑन टू द ओएस। वो ओएस के ऊपर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती है। To execute this dot class file, what you require is this JVM. What you require is this JVM, Java Virtual Machine. तो ये Java virtual machine, listen to it, virtual machine एक kind of application है which is able to understand this dot class file. ये dot class file जो होती है, this dot class file is an intermediate code. Is an intermediate code which consists of bytecodes। एक इंटरमीडिएट कोड होता है जो समझ सकता है सिर्फ और सिर्फ आपका JVM, which can be understood only by the JVM, जिसको सिर्फ JVM को समझ में आता है और किसी को समझ नहीं आता है। So if you want to execute any compiled Java file, यानी कि जिसकी भी डॉट क्लास फाइल्स बन चुके हैं, if you want to execute this, for this you compulsory require this JVM। आपके पास JVM होना मैंडेटरी है। And this JVM, on top of this JVM you will be executing this code कि ये जो पर्टिकुलर JVM होगा ये आपका CPU अंडरस्टैंडेबल कोड में उसको कन्वर्ट करके आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर देगा। ये आगे का पार्ट है, विल बी लुकिंग एट इट। लेकिन हाँ, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द JVM ओनली। यानी कि इस जेडीके की बात करोगे, डेवलपमेंट टूल की बात करोगे, तो टूल्स आपको चाहिए फॉर कंपाइलेशन एंड फॉर एग्जीक्यूशन। वो सारा चीज होगा ऑन टॉप ऑफ दिस JVM, ये JVM के ऊपर होगा। लेकिन आप जो कोड यहाँ पे लिख रहे हो वो फ्रॉम स्क्रैच तो नहीं होगा। यू आर नॉट गोइंग टू राइट द एंटायर थिंग फ्रॉम स्क्रैच। यानी कि जैसे हेलो वर्ल्ड वगैरह आपने अगर पहले भी लिखा है, लेट्स से इनटू द सी दैट यू हैव रिटर्न, इनटू द C++ दैट यू हैव रिटर्न इन हेलो वर्ल्ड, यू माइट हैव यूज्ड समथिंग कॉल्ड एज printf। printf आप कहां से यूज करो, stdio.h हेडर फाइल से यूज करो। Similarly, if you go into the C++, if you are using cin and cout, you have to include a header file called as iostring। Similarly, अगर जावा के अंदर भी अगर आपको कुछ उसके प्रीडिफाइंड क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करना है, you require this jar file called as rt.jar file, which consists of core libraries given by the Java। यानी कि जावा ने जितने भी क्लासेस, ये जो डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आर यू एबल टू सी द डॉक्यूमेंटेशन एंटायरली? तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन, ये जो क्लासेस जावा ने क्रिएट किए, those classes that the Java has created, all those things
are kept inside this jar file called as ret.jar, runtime.jar generally जिसे कहा जाता है. So this is already been added inside this JDK. जो बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरीज आपको जावा के थ्रू जो प्रोवाइड किए गए हैं, जो क्लासेस प्रोवाइड किए हैं, दोज क्लासेस यू विल बी गेटिंग इट एंड यू विल बी यूजिंग इट. तो आप पूरा कोड फ्रॉम स्क्रैच नहीं लिखने वाले हो, यू विल बी यूजिंग द क्लासेस. वी टॉक्ड अबाउट एब्स्ट्रैक्शन, डू रिमेंबर? मैंने कहा था एब्स्ट्रैक्शन जावा के पास बहुत सारे क्लासेस है. वी आर जस्ट द यूजर ऑफ दोस क्लासेस, वी आर जस्ट गोइंग टू यूज दोस क्लासेस, वी आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट दोस ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोस क्लासेस. So all those things are present inside this. Using this rt.jar, using these classes, you will write your own code. Then by using the tools, you will be compiling that. Then onto this JVM, you will be executing it. तो ये सारा काम करने के लिए you need to download this entire JDK. तो उसकी के लिए आपको ये JDK को डाउनलोड करना पड़ता है. Is it clear why to download this JDK? कि क्यों JDK रिक्वायर्ड है? क्लियर है? कहां से डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड करना है, दैट आई विल बी शोइंग इट टू यू, डोंट वरी. बट यस, इज इट क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल? गाइस आर यू देयर? आप हो वहां पे? यस, हाँ, डू गिव द रिस्पॉन्स. ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट आई एम टॉकिंग विद लेट्स से द वॉल इन फ्रंट ऑफ मी. इट शुड बी बिट रिस्पॉन्सिव. तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स यहाँ पे देते जाओ, सो आई कुड नो एट लीस्ट. ओके, गुड. सो लेट मी ड्रॉ स्मॉल डायग्राम फॉर यू. ये डायग्राम अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो. इन हाउ आई विल बी इवन शेयरिंग दिस फाइल विथ यू. यानी कि जो भी फाइल के अंदर मैंने लिखा हुआ है, वट एवर आई हैव रिटन, इवन दिस एज अ इमेज फाइल आई विल बी शेयरिंग इट विथ यू. यानी कि ये भी मिलेगा एंड द नोट्स दैट आई जस्ट शोन इट टू यू, ये भी मिलेगा. यानी कि दोनों भी चीजें आपको मिलती जाएगी डेली के डेली. सो मे बी आई विल स्टार्ट विद द सिंपल डायग्राम फर्स्ट. मे बी जो डायग्राम आपने इससे पहले ड्रॉ किया होगा, वी कुड से व्हेन यू कंपाइल द कोड एंड व्हेन यू एग्जीक्यूट द कोड, ताकि मैं आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे इमेजिन करवा सकूं. सो लेट्स से मेरे पास एक सिंपल सी एक फाइल है. वी विल कॉल इट लाइक दिस, hello.cpp. we'll call it like this, hello.cpp file. Now this hello.cpp file I just want to compile it and I just want to execute. देखो कितना सिंपल होता है, ठीक है? क्योंकि यही डायग्राम आगे, यानी कि जावा की जो मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, वैसे एक और डायग्राम मुझे आगे चाहिए व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम. हेलो वर्ल्ड और उसके आगे. तो थोड़ा सा इसको प्रॉपरली समझो, अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव अर्लियर एंड व्हाट जावा इज ऑफरिंग टू अस. ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. सो व्हेनेवर यू कंपाइल दिस कोड hello.cpp, जिसके लिए आप एक यूज करते हो कंपाइलर. व्हाट यू यूज इज वी कॉल इट एज अ कंपाइलर. So this hello.cpp file or hello.c file, whatever you call it as, you just give it to the compiler. आप उस कंपाइलर को देते हो एंड कंपाइलर आपको आउटपुट में लाके देता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक सिंपल सा एग्जीक्यूटेबल फाइल. सो मे बी आई कुड से इट लाइक दिस, एक सिंपल सा एग्जीक्यूटेबल फाइल where we will call it as a.exe file. It is an executable file. And this executable file आप डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ ओएस रन करते हो. आप उसको एग्जीक्यूट कहां पे करते हो? वेयर डू यू एग्जीक्यूट इट? यू एग्जीक्यूट इट डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करते हो. hello.c हो, hello.cpp हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब यही कोड अगर मुझे लेट्स से इफ आई वांट टू डू इट लेट्स से इन जावा, ये तो हुआ सी सी प्लस प्लस के लिए. मे बी आई विल से दिस इज गोइंग टू बी इन सी और सी प्लस प्लस. You will say it like this in C or C++. It can be hello.cpp or it can be also hello.c. It can be anything. hello.c. एक तो ये या फिर एक तो ये, इसमें से कुछ भी हो सकता है. Let me keep it like this. दोनों में से कुछ भी हो सकता है. Compile it, you will get an executable file. लेकिन if you commit for the Java, अगर आप Java के लिए आते हो, see what happens. Maybe I could say hello.java. This is the file that I have. Whenever you compile this file, कंपाइल करने के बाद आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं मिलेगी. इट इज नॉट एन exe फाइल. व्हाट यू गेट इज समथिंग कॉल्ड एज डॉट क्लास. सी द डिफरेंस. यहां पे आपको डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल रही थी, हियर इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल. यहां पे आपको क्या मिलेगी? एक डॉट क्लास फाइल मिलेगी. ये कंपाइलर कहां पे मिलेगा? ये कंपाइलर आपको जेडीके के अंदर मिलेगा. वेयर इज द कंपाइलर? द कंपाइलर इज इनसाइड द जेडीके. अब ये जो कंपाइलर से कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल बना है, दिस डॉट क्लास फाइल कंसिस्ट ऑफ बाइट कोड्स. बाइट कोड्स को आप इंटरमीडिएट कोड भी कह सकते हो. बाइट कोड को आप क्या कह सकते हो? यू कैन कॉल इट एज एन इंटरमीडिएट कोड.
दिस कोड इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आता है. हु अंडरस्टैंड दिस बाइट कोड्स? Who understand this bytecodes? So this bytecode is understood only by the JVM. Only by the JVM. अरे ये समझ किसको आता है? See this. Who understand this? ये किसे समझ आता है? वर्चुअल मशीन JVM को समझ में आता है. JVM. Maybe I will write it like this. JVM. हाँ. So ये जो bytecodes आपका डॉट क्लास फाइल आपकी जो बनेगी, this dot class file you have to pass it down to the JVM. यानी कि see the step that we earlier had in C and C++ and see the extra step that we have inside this Java. Compilation दोनों में भी है. We have to compile it. लेकिन compilation के बाद यहाँ पे executable file, यहाँ पे dot class file. You give the dot class file to the JVM and this JVM is responsible to convert it into the CPU understandable code and execute it onto the operating system. यानी कि आप डायरेक्टली उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट डायरेक्टली एग्जीक्यूटिंग इट ऑनटू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू आर नाउ एग्जीक्यूटिंग इट इनसाइड द जेवीएम. आप उसको जेवीएम के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हो. हियर देयर वाज नो सच कांसेप्ट ऑफ द वर्चुअल मशीन इन बिटवीन, बट हियर नाउ वी हैव द कांसेप्ट ऑफ दिस वर्चुअल मशीन इन जेवीएम. लेट मी नो, इज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर टू यू? वेयर यू आर एग्जीक्यूटिंग इट, आप एग्जीक्यूट कहां पे कर रहे हो, ये क्लियर है क्या? पहले you are not executing it onto the OS, you are executing it inside this virtual machine. That means when you are developing an application, you require this entire things. यानी कि आपको यहां से उस कंपाइलर की भी जरूरत है. अच्छा, कंपाइलर से पहले when you are writing this hello.java, you are not going to write it from scratch. You are using the help of this rt.jar, यानी कि predefined libraries जो है उनको आप यूज कर रहे हो. Along with them, you are going to write the code. After writing the code, you will be compiling them. After the compilation, what you will get is a dot class file. Now these dot class files you are going to execute it inside the JVM, and the JVM is going to be converting those particular instruction, that's intermediate code, into the particular CPU understandable language, and it is going to execute it onto this operating system. तो वो JVM actually उसको execute करेगा. Let me know, is this flow clear to you? First of all, why we are downloading this JDK? Is it clear to you? क्योंकि JDK के अंदर मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी. सारी चीजें इन द सेंस rt.jar भी मिलेगा, टूल्स भी मिलेंगे और JVM भी मिलेगा. ना सर, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू डाउनलोड दिस? इसको हमको डाउनलोड कहां से करना है? सो टू डाउनलोड इट आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद द लिंक. सो द लिंक इज प्रेजेंट ओवर हियर, adaptium.net, and the version that we are going to download is the Java 11, the JDK 11 version that we are going to download. So let me show it to you how you are going to download it. So whenever you are going to open this link, जैसे आप यहाँ पे लिंक को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस वो पूछेगा. So maybe it is going to ask you which operating system do you require, for which operating system do you require to download that JDK, what is the architecture of that particular, let's say, hardware that you are using, package type कौन सा चाहिए, and the version that you want to target, यानी कि जावा का कौन सा वर्जन आप टारगेट करने वाले हो. सो मे बी आप जावा का लेट्स से 8 वर्जन टारगेट करने वाले हो, 11 टारगेट करने वाले हो, या फिर और कौन सा वर्जन आप टारगेट करने वाले हो. So because we are working with the 8 and also we are going to look at some features of the Java 11, तो आप यहाँ पे 11 LTS को choose कर सकते हो. I hope I have told you what this LTS is. Now operating system you already know, आपको operating system आपका पता है. So the operating system that you will be using is either going to be Windows or it is going to be Mac OS. अगर आपका Linux based होगा, I will be sharing the command separately for you only. जिनका Linux होगा तो आप सीधा सीधा उन कमांड से आप डाउनलोड कर सकते हो. You don't have to download it actually from here. So whether it is going to be Mac or whether it is going to be Windows, you choose it correctly. Now it talks about कि आपका आर्किटेक्चर कौन सा है. तो ये काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं. आप आर्किटेक्चर कौन सा है सर, कहाँ से देखे, क्या देखे? आई वुड जस्ट रिकमेंड यू जस्ट ओपन दिस सेटिंग्स. सो मे बी आई एम गोइंग टू से you can open the settings and maybe you can just say about your we could say PC. तो आप अबाउट पीसी में अगर आप यहाँ पे जाओगे सो यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर नेम ऑफ द प्रोसेसर ओवर हियर. सिस्टम टाइप के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाएगा, वेयर इट इज सेइंग x64 बेस्ड प्रोसेसर. नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज x64 बेस्ड प्रोसेसर. तो जो भी आपका प्रोसेसर रहेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा. यू विल बी गेटिंग दैट पर्टिकुलर पार्ट ओवर हियर एंड यू कैन जस्ट सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर ओवर हियर. आप वो आर्किटेक्चर यहाँ पे चूज करो. So if you choose a wrong architecture over here, your STS or your Eclipse might not work. The one that you are going to install, वो शायद से आपका यहाँ पे काम भी नहीं कर पाए. So it's better you choose the correct version over here. Now when you talk about the package type, see there are two options. One is JDK, another is JRE. Can you tell me आप कौन सा choose करोगे यहाँ पे?
इज इट जेआरई और जेडीके? आई एक्सप्लेन यू दिस। क्या लगता है आपको, क्या चाहिए? व्हाट यू रिक्वायर? यू आर अ डेवलपर। अगर आप डेवलपर होगे तो आपको क्या चाहिए? आपको जेडीके की जरूरत है। आपको जेडीके की जरूरत है। सर ये जेआरई क्या है? जेआरई मींस यू विल बी गेटिंग ओनली दिस पार्ट, सिर्फ रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी कि आपको सिर्फ जेवीएम और आरटी डॉट जार मिलेगा एंड सम स्पेसिफिक टूल्स, लेट्स से सिर्फ जावा का एग्जीक्यूट करने वाला टूल शायद से मिल जाए। सो जेआरई इज टू बी used only when you want to deploy that application. Now whenever you have developed this application, जैसे आपने यहाँ पे डेवलप किया, लेट्स से कोई भी एप्लीकेशन आपने डेवलप किया, एप्लीकेशन डेवलप करने के बाद यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन ऑन टू द क्लाइंट मशीन। जैसे आपने एप्लीकेशन बना और आप लेट्स से डीमार्ट के लिए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हो, you have created that billing software and you now want to deploy that application onto those डीमार्ट लेट्स से machines। तो उन मशीन्स के ऊपर आपको इंस्टॉल करने के लिए, टू इंस्टॉल दोज ऑन टू दोज पर्टिकुलर लेट्स से स्पेसिफिक मशीन्स, उन मशीन्स के ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको जावा का कोड समझ कैसे आएगा? क्योंकि जावा का कंपाइल्ड कोड तो सिर्फ डॉट क्लास फाइल है। वो डॉट क्लास फाइल तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ नहीं आता है। वो किसे समझ में आता है? सो दिस डॉट क्लास फाइल कैन बी ओनली अंडरस्टूड बाय दिस जेवी। यानी कि उन मशीन्स के ऊपर जो डीमार्ट में जाकर के आप मशीन्स के अंदर उसको इंस्टॉल करोगे, उस बिलिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे, सो दैट नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन दिस जेवीएम, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको नहीं समझ सकता है। What you will be getting after the compilation is the dot class file. Now to execute this dot class file onto those machines, you require the JVM. यानी कि वहां पे आपको कंपाइलर की वगैरह जरूरत नहीं है, कंपाइल्ड फाइल तो ऑलरेडी आपके पास है, कंपाइल्ड फाइल ऑलरेडी आपके पास है। यू जस्ट रिक्वायर दिस जेवीएम विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटिंग योर फाइल्स। और ये सिर्फ अगर आपको डिप्लॉयमेंट करना है, सो उस दौरान एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट यू रिक्वायर ओनली द जेआरई, अदरवाइज यू डू नॉट रिक्वायर। व्हाट यू रिक्वायर इज ओनली द जेडीके। गेट द जेडीके, दैट्स इट फॉर यू। क्योंकि जेडीके के साथ आपको जेआरई भी बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, क्योंकि डेवलपर का मशीन है। हाँ, बट क्लाइंट मशीन जिसके ऊपर डेवलप नहीं करना है, सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, सो फॉर एग्जीक्यूशन वी हैव गॉट द जेआरई। यानी कि एक स्ट्रिप डाउन वर्जन कह सकते हो कि वेयर द डेवलपमेंट टूल्स विल बी रिमूव्ड एंड ओनली द डिप्लॉयमेंट टूल्स विल बी केप्ट। यानी कि ये सिर्फ डिप्लॉयमेंट के काम में आता है एंड दिस इज फॉर द डेवलपमेंट। दैट्स व्हाई जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट, and JRE, Java runtime environment, where you only execute it, run that particular code. So select the JDK, select the correct version 11 LTS, and you just have to download it. So you can download this .msi file. जैसे download होगा, you just have to double click it. Next, 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 next. Install it, and that's it. Your Java is been installed, or we could say your JDK has been installed. यानी कि सबसे पहला काम आपको ये करना है. What you need to install is this JDK. Is the step really simple? Or is this step really simple? Where you just have to click on operating system, architecture, the type, versions. Just click on MSI file. जो भी डाउनलोड होगा, you can click on this MSI file. जैसे आप वो डाउनलोड करोगे, it will be downloading this MSI file. मुझे यहाँ पे पॉज करना है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है. It has been installed on my machine. जो भी डाउनलोड होगा, click on it. Next, 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 and install it. That's it. This is the way you are going to do it. Now, whatever the installation that you have done it for the JDK. आपने किसके लिए किया? आपने JDK के लिए किया. Now, what if I want to write a hello world program and I want to execute it? अब अगर मुझे उसको लिखना भी है and if I want to execute it, उसको कैसे किया जा सकता है? यानी कि मेरा पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम अब मुझे लिखना है. I want to write my first hello world program. It's the recording start. So what we have done is we have understood what is JDK, we have understood what is JRE. We will talk about it once again because there is an interview question that is always been asked over here. तो इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम? ऐसे जनरली पूछा भी जाता है कि ये जेडीके, जेआरई और जेवीएम एक्चुअल में है क्या? What you know about them. So this is kind of an interview question that has been asked. So you must be able to answer it correctly. The first thing, JDK. JDK is an entire Java development kit. What is JDK? JDK is an entire Java development kit which consists of tools, documents, and JRE. And JRE, which is a Java runtime environment. Java runtime environment is an environment which is responsible to execute the Java code. Java runtime environment consists of two components. One is JVM, another is rt.jar. The JVM is nothing but the Java virtual machine. The Java virtual machine is responsible to
complete or to understand the intermediate code, that is the dot class file, and convert it into the CPU understandable code. ये JVM आपका वो पर्टिकुलर बाइट कोड को कन्वर्ट करेगा इनटू द मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड. सो दिस इज JDK, JRE and JVM. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट JVM, जब आप जावा वर्चुअल मशीन की बात करोगे, JVM हैज गॉट इट्स ओन आर्किटेक्चर. JVM के पास उसका खुद का आर्किटेक्चर है, and that entire architecture we are going to study it later on. See, today drawing that entire architecture will not make any sense. उसका एक छोटा वर्जन में आपको ड्रॉ करके जरूर दिखाने वाला हूं. आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट. पहले हेलो वर्ल्ड लिखेंगे एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ एन आर्किटेक्चर ऑफ JVM कि JVM के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं. We are going to talk about it, but the in detail architecture of JVM we are going to study it into the later things. यानी कि maybe we could say on day 7, day 8 हम लोग पूरे JVM के आर्किटेक्चर को भी स्टडी करने वाले पूरे. तब तक यू विल बी कंफर्टेबल इन जावा एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंपोनेंट्स. जब तक पूरे कंपोनेंट्स यानी कि वो क्लासेस के स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं समझ पाओगे, वो JVM के अंदर कहाँ पे जा रहा है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. सो आज सिर्फ वो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जाएगा पूरा. So it's better we will understand it in a bit brief way, and in detail we will be studying it on the later stages. Right now what you need to understand is this block diagram. कि block diagram के अंदर अच्छा hello.java कंपाइल करने के बाद क्या मिलेगा और JVM कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा. दैट्स हेलो डॉट क्लास. ये एक इंटरमीडिएट कोड, बाइट कोड जो होता है वो एक इंटरमीडिएट कोड. इंटरमीडिएट कोड इन द सेंस एक ऐसा कोड जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को भी समझ नहीं आता है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम को लेट्स से असेंबली वगैरह का कोड भी नहीं दे सकते. ऑपरेटिंग सिस्टम को यू हैव टू गिव द बाइनरी कोड. अब बाइनरी कोड से पहले असेंबली का कोड बनेगा. असेंबली कोड से पहले जो यहाँ पे बनता है दैट इज द बाइट कोड और एन इंटरमीडिएट कोड. यानी कि एक ऐसा कोड जिसको सिर्फ JVM को समझ, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ JVM को समझ में आती है और किसी को समझ में नहीं आती. नो वन अंडरस्टैंड्स इट. यानी कि नो एनी अदर पर्टिकुलर एप्लीकेशंस अंडरस्टैंड इट. एक ऐसा इंटरमीडिएट कोड उन्होंने बना करके दिया है. अब ऐसा क्यों बना करके, ये असेंबली नहीं है. दिस इज नॉट एन असेंबली. असेंबली इज अंडरस्टूड बाय मेनी ऑफ द डिफरेंट, वी कुड से देयर आर ऑप्शंस, देयर आर सम वर्चुअल मशीन्स दैट कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली द असेंबली लैंग्वेजेस. इवन देयर आर कंपाइलर्स व्हिच कैन अंडरस्टैंड द असेंबली लैंग्वेजेस. नो, इट इज नॉट एन असेंबली कोड. ये एक ऐसा कोड होता है कि जो सिर्फ JVM को समझ में आता है. यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ JVM को समझ में आएगी, बाकी किसी को भी नहीं. दैट्स व्हाट एन इंटरमीडिएट कोड इज, बाइट कोड से. So what we were talking about was, we were talking about just the compilation, we were talking about the flow, we were talking about how it is going to be executed. Now let us do one thing, let us actually create it and let us actually see this. इसको create करते हैं और इसको जरा देखते भी हैं. Let us see this. अभी देखने के लिए there is the first question like what we will be using. हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे. सो वेदर वी विल बी यूजिंग ए नोटपैड, वेदर वी विल बी यूजिंग द VS कोड, वेदर वी विल बी यूजिंग एनी IDs, वेदर वी विल बी यूजिंग एनी Eclipse like IDs for this particular part, और वेदर वी विल बी यूजिंग द IntelliJ, वेदर वी विल बी यूजिंग एन STS. यानी कि एग्जैक्टली हमको यूज क्या करना है टू बिल्ड दिस एप्लीकेशंस. Because whenever you try to let's say create an application in any particular language, whether it's in C, whether it's in C++, there are so many options available into the market. कौन सा क्या यूज करें. So generally you prefer going for either an editor or an IDE. What you do prefer कि एक तो आप एडिटर को यूज करोगे या फिर एक तो आप IDE को यूज करोगे. Now do you know the difference between these two? क्या आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता है? What is the difference between an IDE and an editor? Yes, you can just post the message. You can just comment out over here. Do you know the difference between an editor and IDE? No? Yes or no? Yes or no? Okay. I'm hoping कुछ लोगों को पता, अरे कुछ लोगों को पता है कि नहीं है. एटलीस्ट यू कैन टेल मी yes or no कि हाँ सर हमें IDE पता है, हमें एडिटर पता है, और वी डोंट नो. ओके, नहीं पता. लेट मी टेल यू. So editor are the applications, are the softwares which only supports editing of the files. यानी कि सिर्फ फाइल्स को एडिट किया जाता है. एनी टेक्सचुअल फाइल्स, टेक्सचुअल फाइल कि जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा जा सकता है, लाइक योर C फाइल, CPP फाइल, .txt फाइल, .java फाइल, ये सभी जितने भी फाइल्स है, .sql फाइल, ऑल दोस फाइल्स आर एडिटेबल फाइल्स. तो जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिन एप्लीकेशंस के अंदर वी कैन एडिट दोस पर्टिकुलर फाइल्स आर कॉल्ड एज एडिटर्स. जैसे नोटपैड इज योर एडिटर. नोटपैड के अंदर यू कैन जस्ट एडिट दोस फाइल्स, वी कॉल इट एज एन एडिटर. VS कोड इज एन एडिटर.
VS कोड इज एन एडिटर जिसके अंदर आप हर एक टाइप की फाइल्स को एडिट कर सकते हो, एडिटर. IDE stands for Integrated Development Environment. It is an application which provides built-in support for specific type of applications. Built-in support for specific type of applications. जैसे for example आप Eclipse की बात करो. If you talk about Eclipse, Eclipse has got a built-in support for Java. So where you can create the Java projects where it automatically build those projects and it automatically compiles the code into the background and you just have to click a button to execute it. Whatever the rest of the things that you need to perform, यानी कि compilation के जितने complicated steps है that you need to perform, maybe you want to execute it by saying every single time Java so and so something like this, maybe जो आपके direct imports होते हैं, maybe जो intelligence होता है, all those things जो environment आपको लाके देता है, the application that brings all the things for you for easier development, we call it as an IDE. IDE के पास ये सारी चीजें इनबिल्ट होती है. दे टारगेट सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस को ही वो टारगेट करते हैं. एडिटर जो होता है वो एक जनरल पर्पस एप्लीकेशन होता है. इट इज अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन दैट कैन टारगेट एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स व्हिच कैन बी एडिटेड. So your VS Code is an editor. Your we could say Eclipse that you generally use for Java development is an IDE. So Eclipse के साथ साथ आप IntelliJ का भी एक IDE यूज कर सकते हो. Even that you can use it. Not only that, you can even use something called as a Spring Tool suite for the development of these desktop applications. आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो वाला चीज यूज कर सकते हो. You can start using it. तो यूज करने के लिए what I recommend, what I use is something called as STS, Spring Tool suite. Generally, this is a particular IDE which is also used to develop the Java enterprise application specifically for the Spring. कि जनरली अगर आप स्प्रिंग बूट में काम करते हो तो आप उसको यूज कर सकते हो. सो दैट इज व्हाट जनरली आई यूज, इसीलिए मेरे पास वो आईडी पहले से प्रेजेंट है. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट डाउनलोडिंग दैट. एक तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. अगेन आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक टू यू. डेफिनेटली आप यहाँ पे जाकर के सर्च कर सकते हो स्प्रिंग टूल सूट डाउनलोड. यू जस्ट क्लिक दैट स्प्रिंग टूल्स, जो पहला आपको वेबसाइट मिलेगा वहां पे जा सकते हो एंड इट इज गोइंग टू गिव यू. सो स्प्रिंग टूल्स फॉर इक्लिप्स, यू जस्ट हैव टू डाउनलोड इट. यहाँ पे जाकर के आपका एग्जैक्ट जो भी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा दैट यू हैव टू चूज इट. You just have to click on it and it is going to download it for you. So whatever the version that will be getting, you can just work with that particular version. आपको वो version जो भी let's say 4 point something मिल जाएगा, you can just start working with it. The version that I use right now STS is 3.9.18 which is bit slow. थोड़ा सा slow है but I use it because we generally use it for let's say the CDAC courses. तो क्योंकि वहां पे CDAC में इसको यूज किया जाता है, I have kept it and I am using it. Bit slow है but ठीक है. You can go for the next versions which are bit more faster. वो faster है. नहीं तो आप plain old Eclipse के साथ अगर आप comfortable हो वो भी यूज कर सकते हो. Maybe some of you can be comfortable with let's say IntelliJ, you can use it. Now depending from where on which background you are coming with, whatever the IDs that you have used so far, you continue with those IDs. आप उन्हीं IDs के साथ कंटिन्यू करो. अगर कोई भी ID अभी तक यूज नहीं किया है then I recommend for you is this STS. तो आप STS को डाउनलोड कर लो and you just start using it. It is that simple. बस आपको जाके डाउनलोड करना है, क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगा. And when it is going to be downloaded, तो आपको एक्चुअल में एक zip फाइल मिलेगी. It is not going to be an installer. Installer नहीं होगा. It is going to be a zip file that you will be getting. So that zip file you have to just unzip it. उसको आपको unzip करना है. So once you unzip it, let me show it to you. Maybe I will go into the softwares. Let me show it to you. Where we have this STS, something like this. Are you able to see this? So we have these two versions right now. मेरे पास दो versions है. एक है STS 3.9.18 और दूसरा STS 4.19. So maybe you will be getting something called as STS 4.19 or 4.19 or 4. something plus plus. So अगर आप यहाँ पे ओपन करोगे, इफ यू डबल क्लिक ऑन दिस, यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद इफ यू डबल क्लिक ऑन दिस, सो यू विल बी गेटिंग सो मेनी फाइल्स इनसाइड इट. तो जहाँ पे आपको वो exe फाइल मिल जाएगी. सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज एन exe फाइल. सो यू जस्ट डबल क्लिक ऑन दोस exe फाइल एंड यू विल बी एबल टू वर्क विद इट. डायरेक्टली वो एप्लीकेशन आपका यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा. डोंट वरी ऑन दिस. ठीक है. सो जिप फाइल को अनजिप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. अनजिप करने के बाद यू जस्ट ओपन दैट एग्जीक्यूटेबल फाइल. So let me open that file. मेरे पास already shortcut मैंने create करके रखा है. So just give it a moment. As I said, it is bit slower on my machine 3.9.18. It is a bit older version. Because I use it, I generally start working with this. क्योंकि मैं इसके साथ थोड़ा सा comfortable भी हूँ and
सिडैक में भी यूज होता है, तो इसलिए 3.9.18। ये वर्जन कहाँ से मिलेगा? ये पुराना वर्जन है, यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम देयर लेट्स से आर्काइव्स, आपको उसको आर्काइव से डाउनलोड करना पड़ेगा, ये स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं मिलेगा। तो गिट के जो लिंक्स है, कुछ आर्काइव्स गिट के ऊपर प्रेजेंट है, गिटहब के ऊपर, सो वहां से आपको ये डाउनलोड करके मिल सकता है। बट अगेन आई वुड रिकमेंड यू डोंट गो फॉर इट, मे बी आई विल गो फॉर इट, यू डोंट गो फॉर इट, ठीक है। देयर इज नथिंग चेंज इन टू द यूआई, यूआई में कुछ चेंजेस नहीं है, एज इट इज है, इट इज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। चलो लेट इट ओपन, इसको ओपन होने दो, इट विल टेक जस्ट बिट अमाउंट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम इनिशियल बूटिंग में वो लेता है, एंड वंस इट इज ओपन इट इज रियली फ्लुएंट, ठीक। So till then let me just show you the links that I'm going to provide. So आपको STS डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपका एडाप्टियम लेट्स से जेडी के डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड डॉक्यूमेंटेशन जो हम लोग यूज करने वाले हैं, यानी कि द डॉक्यूमेंटेशन दैट वी आर गोइंग टू यूज, द जावा 8 डॉक्यूमेंटेशन दैट वी टॉक्ड अबाउट, तो इसका लिंक भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अलॉन्ग विथ लेट्स से द जावा 11 डॉक्यूमेंटेशन, इसके साथ साथ and also a tutorial link where you can start studying if you want to study bit more about Java in detail। तो उसके ट्यूटोरियल्स यानी कि ओरेकल जो जावा को मेंटेन करता है उन्हीं का वो ट्यूटोरियल्स का लिंक है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो, यू कैन जस्ट ओपन इट एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग विद इट, ठीक है। चलो, सो नाउ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वांट टू क्रिएट द हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, मुझे एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, एंड क्रिएट करने के लिए आई एम गोइंग टू डू इट लाइक दिस, लेट मी टेल यू। So what I want to do is, first of all, I want to create a particular file जिसका नाम मैं रखने वाला हूं like this program। So अब हम लोगों ने फाइल का नाम ऐसे ही क्यों रखा, what is the purpose behind it, या फिर hello world लिखने के लिए ऐसा ही लिखना क्यों जरूरी है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अब उन रीजंस को समझने के लिए पहला जो कोड होता है, एसटीएस के ऊपर तो काम करना ही है, टिल इट ओपन्स इसके ऊपर तो काम करना ही है, लेकिन उससे पहले लेट मी शो यू कि क्या फर्क पड़ता है इफ यू स्टार्ट राइटिंग दोस कोड्स लाइक दिस, यानी कि ये प्रोग्राम नाम का ही फाइल क्यों चाहिए, हाउ टू राइट द मेन इनसाइड इट, ऐसा ही क्यों लिखना है, ये कंपाइल करने के बाद क्या बनता है, अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। And now to understand it, definitely I will be using one of this VS Code, which is an editor, to write that file manually over here, to create that file, to compile that file manually, and to execute it manually। ये सारा काम पहले मैन्युअली हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं। Let me tell you, this is a complete optional step। ये पूरा एक ऑप्शनल स्टेप है, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि आईडी मेरे को क्या करके दे रहा है, व्हाट दिस आईडी इज ट्राइंग टू गिव इट टू मी। लेट मी क्लोज दिस एंड लेट मी ओपन इट वंस अगेन, maybe I will close this, just give me a minute, close the program, sometimes it do gets hang। The reason for this STS is because Spring Security जो है 3.9.18 में it is bit different as compared to the Spring Security in 4 point something, यानी कि अगर आप Spring के साथ काम कर रहे हो तो Spring के जो 4 डॉट वर्जन यानी कि जो आप डाउनलोड करने वाले हो, that has got a different we could say security features as compared to 3.9.18। क्योंकि जो स्प्रिंग के फीचर्स सिक्योरिटी फीचर्स है जो हम लोग यूज करते हैं, इट इज फ्रॉम स्प्रिंग 3.x से, तो दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज दैट आईडी, और इसलिए हम लोग ये आईडी को यूज कर रहे हैं, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई एम यूजिंग दिस। मुझे पता है स्लो है बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। लेट मी ओपन इट, ओपन हो जाएगा इन अ मिनट, टिल देन लेट मी जस्ट शो इट टू यू, तब तक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सो जस्ट फोकस ओवर हियर ना, what I'm creating over here is a particular file called as program.java। Look at this, program.java, see the extension that I have given, the extension is .java। कोई भी फाइल जावा में आपको करनी है, you just have give the extension as .java। Now whatever this file that I have written, program.java, इसके अंदर मुझे वो कोड को लिखना है, I have to start writing the hello world program। अब हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप सी सी प्लस प्लस जैसे, यानी कि द वे यू आर राइटिंग इट सी एंड सी प्लस प्लस, यू कैन नॉट स्टार्ट डायरेक्टली लाइक दिस, यू कैन नॉट से डायरेक्टली लाइक इंट में, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वांट टू डू इट, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू क्रिएट इज समथिंग कॉल्ड एज अ क्लास। सी द स्टेप, पहले स्टेप्स को समझो। व्हेनेवर यू आर राइटिंग एनी कोड इन जावा, तो जावा में आप ग्लोबली कोई भी फंक्शनलिटी लिख नहीं सकते, you cannot write anything onto the global scope। The first thing that you have to do is you have to encapsulate it within the class। This is the syntax of Java। आप इसके बिना जावा का हेलो वर्ल्ड भी नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते।
So the first thing that you have to do is you have to write a class. What will be the name of my class? तो class का नाम क्या रखे? So the class name I am going to keep it same as that of, let's say, my file. जो भी मेरे क्लास का नेम होगा वो मेरे जो भी फाइल का नाम यहाँ पे दिया है, आई वांट टू कीप इट एग्जैक्टली द सेम. लेट मी कीप इट लॉन्च्ड. चलो ओपन हो चुका है. लेट इट बी. लेट अस फोकस ओवर हियर. अब इस प्रोग्राम क्लास के अंदर मुझे मेन को लिखना है. आई वांट टू राइट द मेन इनसाइड दिस प्रोग्राम क्लास. सी द वे आई नीड टू राइट इट. सी द वे आई नीड टू राइट इट. एंड कंपल्सरी ऐसा ही लिखना है. कंपल्सरी ऐसा ही लिखना है. यू हैव टू से पब्लिक स्टैटिक void main. Compulsory. You cannot change anything inside this. You cannot make it as private. You cannot make it as non-static. You cannot return any other value other than void. कर ही नहीं सकते. कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा. द कोड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. ऐसा ही रखना है कंपल्सरी. नॉट ओनली दैट, उस मेन के आगे आपको ऐसे लिखना है. इट इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग array. It is an array of strings, and then whatever you want you can start writing inside. जो भी आपको चाहिए वो आप इसके अंदर लिखो. मेन को ऐसा ही लिखना है. दिस इज द वे यू हैव टू राइट द मेन इन जावा. कंपल्सरी कैन नॉट चेंज एनीथिंग. कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. देन मे बी इनसाइड दिस आई वांट टू राइट हेलो वर्ल्ड. हेलो वर्ल्ड लिखने का तरीका देखो. यू हैव टू से सिस्टम. डू यू रिमेंबर सिस्टम? मैंने आपको क्लास बताया था. जावा के पास क्लास है. You have to say system.out.println, and inside this you are going to say hello world. See the way that I am writing this entire code. Are you able to see this? कि यहाँ पे system.out.println ऐसा ही क्यों लिखा? Each and everything I am going to explain it to you. ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. जस्ट वेट अ मिनट. सो पहले जो भी मैंने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, let us just run this and let us just see whether we are able to see this hello world into the output. ऐसा ही क्यों लिखा है? इसका पर्पस क्या है? एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू. लेकिन ये सारा चीज मैं आपको इस टेस्ट में शेयर करने वाला हूँ. बट फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि इफ आई एम डूइंग इट मैन्युअली व्हाट आर द एफर्ट्स दैट आई हैव टू पुट. सबसे पहले राइट इट लाइक दिस. ये ऐसा सारी चीजें. अच्छा, वंस रिटर्न देन यू हैव टू कंपाइल दिस कोड. अच्छा, कंपाइल कैसे करें? कंपाइल करने के लिए you open first of all the compiler over here, or you first open the terminal over here. So in this terminal you have to give the commands. Ab I hope you know that initially when you are in C and C++ you use the commands like gcc, and for C++ you use something called as g++. अब दो कमांड यूज करते हो, एक तो gcc या फिर g++. So here if you want to compile this java code, अगर आपको जावा का कोड कंपाइल करना है, you have to say जावासी. ऐसी द डिफरेंस. यहां पे आपने कंपाइलर यूज किया, कौन सा? जावा का. नाउ इट इज नॉट जीसीसी और G++, इट इज जावास कंपाइलर, सो से जावासी. अच्छा, कौन सी फाइल आपको कंपाइल करनी है? सो द नेम ऑफ द फाइल इज program.java. नेम ऑफ द फाइल इज program.java. सो जस्ट हिट एंटर. इसको जावा program.java लिखो, हिट एंटर करो, एंड प्लीज ऑब्जर्व व्हाट इज बीन क्रिएटेड ओवर हियर. कैन यू ऑब्जर्व? देख सकते हो क्या क्रिएट हुआ है? So what is the name of the file? Can you see this? What is the name of the file? Guys, can you see this? Program dot class file. What it is? It is program dot class file. So ये program dot class file जो यहाँ पे बनेगी, this dot class file consists of the bytecodes. ये dot class file क्या consist करता है? It consists of the bytecodes. It is an intermediate code. And this intermediate file now has to be given to the JVM. अब ये उस JVM को हमें हैंड ओवर करना है for the execution. You do not execute it directly on top of OS. नहीं, आप ये किसको दोगे? आप ये JVM को दोगे. कैसे दोगे? So you have to say Java and the name of the dot class file. Java and the name of the dot class file without giving the extension. यहाँ पे dot class file का नाम क्या है? प्रोग्राम ही है. डॉट क्लास फाइल जो बनी उसका नाम क्या है? प्रोग्राम ही है. जस्ट से जावा प्रोग्राम, हिट एंटर, एंड यू विल बी एबल टू सी. प्लस नॉट आउट, माय बैड. सो यू हैव टू से जावा प्रोग्राम, हिट एंटर, एंड यू विल बी एबल टू सी हेलो वर्ल्ड इनटू द आउटपुट. आपको मिल जाए. डॉट क्लास यहाँ पे देने की जरूरत नहीं. जस्ट से इट लाइक दिस. फर्स्ट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो मैंने कंपाइलेशन भी किया, मैंने एग्जीक्यूशन भी किया.
कंपाइलेशन करने के लिए जावा सी कंपाइल किया, एग्जीक्यूट करने के लिए जावा नेम ऑफ द डॉट क्लास का। सर ये तो ऐसा ही दिख रहा है जैसे हम लोग ए डॉट ई को एग्जीक्यूट कर रहे थे इन सी प्लस प्लस और इन सी। व्हाट यू आर एबल टू सी इज लाइक दिस। आप वहां पे कुछ इस तरीके से लिख रहे थे, मे बी यू आर सेइंग कि ए डॉट ई जो फाइल बनेगी उसको डायरेक्टली डॉट स्लैश से एग्जीक्यूट कर दो, डायरेक्टली ए डॉट एक्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं यानी कि जो जावा का कोड डॉट क्लास फाइल बनी है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। वी आर सेइंग इट लाइक दिस, जावा मे बी आई कुड से प्रोग्राम। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ए डॉट एक्स को एग्जीक्यूट करना और जावा प्रोग्राम लिखना। व्हाट दे आर एग्जीक्यूटिंग, व्हाट एक्चुअली दे आर एग्जीक्यूटिंग द फाइल्स, यानी कि क्या वो डायरेक्टली उस बाइनरी कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या वो कन्वर्ट कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। लेट अस अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जावा का। इसी के ऊपर पहले एक्सप्लेन करता हूँ फिर उनको पॉइंट बताता हूँ। So whenever you execute this code Java program, what it does is this program dot class file, it loads it inside the JVM। वो इस प्रोग्राम फाइल को उस JVM के अंदर लोड करता है और JVM इस पूरे प्रोग्राम फाइल को इंटरप्रेट करता है और लाइन बाय लाइन उस पूरे कोड को CPU अंडरस्टैंडेबल कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। हियर द वर्ड इंटरप्रेट, what it does, the JVM interprets this entire bytecode line by line और वो उस CPU कोड के अंदर उसको कन्वर्ट करता है, मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड के अंदर कन्वर्ट करता है एंड एग्जीक्यूट्स इट। एंड सी दिस इज द रीजन व्हाई जावा इज कंसिडर्ड एज द कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब जावा में दो चीजें हो रही है। फर्स्ट, what we do is the compilation. After the compilation we get a dot class file and dot class file जो मिला है वो JVM आगे जाकर के इंटरप्रेट कर रहा है। It is using an interpreter internally to interpret that bytecode and to convert it into the machine understandable code, and that is why Java is considered as a compiled and interpreted language। इसी वजह से कंसिडर किया जाता है। Not only that, because of this JVM, listen to it now, this very important line, because of this JVM, Java is considered as a platform independent। Java को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस JVM। यानी कि जावा का कोड एक बार जो बन चुका है, वंस यू हैव क्रिएटेड कोड, वंस यू हैव कंपाइल्ड इट, तो वो बना हुआ डॉट क्लास फाइल, द सेम डॉट क्लास फाइल, यू कैन एग्जीक्यूट इट ऑन एनी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, डजेंट मैटर विच आर्किटेक्चर इट इज। आपने विंडोज पे लिखा हुआ कोड जो कंपाइल्ड कोड होता है डॉट क्लास फाइल, वही डॉट क्लास फाइल आप उठाओ एंड यू जस्ट गो एंड एग्जीक्यूट ऑन टू द मैक ओएस। आप मैक के ऊपर जाकर के एग्जीक्यूट करो, आप वही कोड लिनक्स के ऊपर जाकर के एग्जीक्यूट करो। आपको जिस पर्टिकुलर हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट करना है, यू जस्ट एग्जीक्यूट दैट डॉट क्लास फाइल, बिकॉज जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब वो क्यों इंडिपेंडेंट है? बिकॉज ऑफ दिस JVM। ये JVM उस डॉट क्लास फाइल को रीड करेगा और उस स्पेसिफिक हार्डवेयर, उस मशीन के हिसाब से उसको वो कन्वर्ट करेगा, यानी कि उन इंस्ट्रक्शंस के अंदर वो कन्वर्ट करेगा। यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, वट एवर द हेलो वर्ल्ड कोड दैट आई हैव रिटन, वंस इट इज कंपाइल्ड, आई विल जस्ट टेक दिस कंपाइल्ड फाइल, यानी कि जो प्रोग्राम डॉट क्लास फाइल है, ये अगर मैं आपको हैंड ओवर करूंगा तो वो आपके मशीन के ऊपर रन भी हो जाएगा। यू डोंट हैव टू कंपाइल इट वंस अगेन, आपको अलग से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। दिस इज वॉट इज नॉट अवेलेबल विद द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि यही पर्टिकुलर चीज क्या सी और सी प्लस प्लस के साथ पॉसिबल है क्या? अरे इज इट पॉसिबल विद सी एंड सी प्लस प्लस? नो। सी का कोड आपको दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा। इफ आई हैव गिवन एन एग्जीक्यूटेबल फाइल टू यू, तो मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल आपके मशीन पे रन नहीं होगी। माई एग्जीक्यूटेबल फाइल कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑन टू द मैक ओएस, क्योंकि वहां पे ए डॉट आउट बनता है, यहाँ पे ए डॉट ई बनता है। So for C and C++, it is platform dependent code, platform dependent executable file that has been created. But for Java, the dot class files that are created, these dot class files are platform independent। यानी कि आप जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हो वहां पे जाके उसको एग्जीक्यूट करो, doesn't matter। See, that is why the Java has been created like this। ये JVM क्यों आया? So that Java can be made as platform independent। Java को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए ये JVM को बीच में इंट्रोड्यूस किया गया। जावा को जनरली कहा जाता है इट वर्क्स ऑन दिस वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। व्हाट जावा हैज टू से, वोरा, वोरा इन द सेंस
राइट वंस रन एनीवेयर, एक बार लिखो उसको कहीं पे भी रन करो, रन एनीवेयर, आई एम सेइंग रन एनीवेयर, एक बार लिखो कहीं पे भी रन करो. सो दिस कंपाइल्ड फाइल्स ऑन वन मशीन यू कैन जस्ट एग्जीक्यूट इट ऑन एनी टाइम मशीन. बस एक चीज याद रखना, ऑन दैट पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑन दैट पर्टिकुलर आर्किटेक्चर, यू शुड हैव द जेवीएम प्रेजेंट. उसके पास उसका खुद का जेवीएम होना चाहिए. और ये जेवीएम मिलेगा कहां से? अरे यू हैव द ऑप्शन, डाउनलोड किया ना हम लोगों ने, जेआरई. तो जो हम लोग डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्लॉयमेंट, आई वाज गिविंग दैट एग्जांपल कि सर वो डीमार्ट के मशीन्स के ऊपर जाकर के मुझे एप्लीकेशंस को रन करना है, आई वांट टू डिप्लॉय देम, तो उसके लिए क्या चाहिए? सिर्फ जेआरई चाहिए. और जेआरई के अंदर क्या है? जेवीएम तो है ही ऑलरेडी. सो यू जस्ट रिक्वायर जेवीएम ऑन दैट मशीन एंड यू कैन एग्जीक्यूट योर कोड. आपका डॉट क्लास फाइल आप सीधा सीधा वहां पे जाकर के एग्जीक्यूट कर सकते हो. सी दिस इज हाउ द जावा एक्चुअली वर्क्स. तो अब जो हेलो प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम जो मैंने बनाया यहाँ पे, सो इट हैज बीन कंपाइल्ड, उसकी डॉट क्लास फाइल भी बनी, एंड द डॉट क्लास फाइल्स आई एम लोडिंग इट इनटू द जेवीएम फॉर द एग्जीक्यूशन. दिस इज हाउ actually the Java works. Let me know. Any questions so far? जितनी भी सारी चीजें बताई, यू माइट हैव सीन दैट फ्रॉम मॉर्निंग, वी कुड से फ्रॉम 9 वी स्टार्टेड विद द सेशन. लेकिन अभी तक हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए देखो हमें कितनी सारी चीजें पता होनी चाहिए. दैट्स व्हाट आई से जनरली while learning this Java, there are so many things that you must know into the prior. जावा 4 दिन में भी सीख सकते हैं, 5 दिन में भी सीख सकते हैं, बट फॉर दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ हाउ इट वर्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल. यानी कि एटलीस्ट वो बेसिक्स तो पता होने चाहिए. एंड स्टार्टिंग विथ कि अगर जावा को डेवलप करना है तो मेरे पास क्या क्या होना चाहिए ये पता होना चाहिए. सो व्हाट आई शुड बी हैविंग, तो जेडीके मेरे पास होना चाहिए क्योंकि मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ. अगर मुझे डिप्लॉयमेंट करना है तो जेआरई होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? उसका पर्पज ही यही है कि जो मेरी डॉट प्लस फाइल बनेगी, दैट आई कैन एग्जीक्यूट इट डायरेक्टली ऑन दैट पर्टिकुलर मशीन. क्योंकि आप डेवलपर हो, आप डिप्लॉयमेंट भी करोगे, यू विल डेवलप दैट एप्लीकेशन एंड यू विल बी डिप्लॉइंग. तो जब डिप्लॉयमेंट करोगे तो वहां पे उस मशीन पे भी क्या होना चाहिए? जेवीएम होना चाहिए. कहां से आएगा? वहां पे जेआरई डाउनलोड करोगे. आप डेवलप कर रहे हो, आपके पास क्या होना चाहिए? जेडीके होना चाहिए. यू विल बी वर्किंग विद द जेडीके. क्यों? क्योंकि आप ये कंपाइलेशन करोगे, वहां पे सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा. यू विल बी कंपाइलिंग इट, क्लाइंट विल बी जस्ट एग्जीक्यूटिंग. क्योंकि आप डेवलपर हो तो आप कंपाइलेशन भी करोगे, आप टेस्ट भी करोगे. सो फॉर यू ऑल्सो यू नीड टू एग्जीक्यूट इट. आप एग्जीक्यूट करके टेस्ट तो करोगे ना, तो इसलिए आपको भी जेवीएम लगेगी. सो जेडीके के अंदर भी जेवीएम है, जेआरई के अंदर भी जेवीएम है. जेवीएम के बिना यू कैन नॉट एग्जीक्यूट द जावा कोड. लेट मी नो एनी क्वेश्चन सो फार. क्या आपको एग्जीक्यूशन का फ्लो समझ आ चुका है? हैव यू अंडरस्टूड द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, हाउ द जावा एग्जीक्यूट्स द कोड? लेट मी नो. यस, एनी क्वेश्चंस इनटू दिस? एक नहीं, आई थिंक बस टिक मार्क दिया नहीं कि वन हैव अंडरस्टूड. व्हाट अबाउट अदर्स? अदर्स? यस, ओके. हाँ, एज आई सेड डू कम्युनिकेट इट, वरना मुझे पता कैसे चलेगा दैट यू हैव गॉट दोस थिंग्स. ठीक. नाउ दिस इज हाउ इट एग्जीक्यूट्स. नाउ ये जो पर्टिकुलर एक हेडेक होता है, हर बार यहाँ पे जाकर के उसके डॉट क्लास फाइल्स को उठाओ, डॉट क्लास फाइल्स को ही एग्जीक्यूट करो. देर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू दिस. यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं. बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग कभी भी, यानी कि जावा के अंदर कभी भी कंपाइल, वी कुड से कंपाइलेशन का जो स्टेप्स होते हैं या फिर एग्जीक्यूशन जो होता है, दैट हैज नेवर बीन डन फ्रॉम द कमांड लाइन. किया जा सकता है, आई नेवर से कि नहीं करना चाहिए, आई नेवर से कि कभी किया भी नहीं जाता है. बहुत ही रेयर सिनारियोस आते हैं व्हेन यू हैव टू डू एंटायर थिंग फ्रॉम द कंसोल. there are different, we could say, commands that you have to use over here. Maybe you have to even start setting the class path over here. ये भी सारा चीज हम लोग करके जरूर देखेंगे, बट अगेन आई वुड से नॉट टुडे. During the section of packages, so when we are going to understand how the package works, package के साथ क्या problems है, why we generally go for these IDs, तो ये पूरा पार्ट आपको पैकेजेस के सेक्शन के अंदर समझ में आएगा. ये पैकेजेस के दौरान ही मैं पूरा कमांड लाइन के थ्रू करने वाला हूँ. टिल देन, टिल देन वी विल बी नॉट वर्किंग विद दिस कमांड लाइन. तब तक हम लोग कमांड लाइन के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं चाहिए, सच में नहीं चाहिए. बिकॉज आवर एंटायर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द आईडी. तो हमें आईडीज के ऊपर ही काम करना है. अब आईडीज के साथ अगर काम करना है, एज आई टॉक्ट अबाउट, यू माइट बी यूजिंग एन इक्लिप्स, यू माइट बी यूजिंग एन एसटीएस, यू माइट बी यूजिंग एन इंटेलिजेंट, जो आपको पसंद है आप वो यूज कर सकते हो. आई विल बी यूजिंग दिस एसटीएस, एसटीएस डॉट एडिटिंग.
अब यहाँ पे वही कोड करके देखते हैं, यानी कि जो स्टेप्स मैंने यहाँ पे किए, आई क्रिएटेड दिस प्रोग्राम डॉट जावा फाइल, आई हैव कंपाइल्ड दिस फाइल, आफ्टर द कंपाइलेशन आई हैव शोन यू कि ये देखो यहाँ पे बन चुका है, एक डॉट क्लास फाइल बन चुका है, एंड दिस डॉट क्लास फाइल इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन आई से जावा प्रोग्राम, यानी कि जावा और उस डॉट क्लास फाइल का नाम। अब यही चीज मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दूँ, आई विल शो यू। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। एक क्वेश्चन है, हाँ, जावा के अंदर मेन ऐसे ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि इट इज सिंटैक्स, एज ए सेड इट इज सिंटैक्स, और ये सिंटैक्स ऐसा ही क्यों है इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं लिख के उसके प्रॉब्लम्स भी तो दिखाता हूँ भाई। लेट मी शो इट यू। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फोकस ऑन दिस एसटीएस। अब एसटीएस जब ओपन होगा, सो इट विल बी आस्किंग यू फॉर अ वर्क स्पेस। लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म्स, टर्मिनोलॉजीज दैट द एसटीएस यूजेस और एन इक्लिप्स जनरली यूजेस, ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज कर सको। So generally, a workspace is a folder where you want to store your multiple projects. जैसे आज के दिन में, यानी कि डे वन के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओवर हियर, लेट्स से प्रोजेक्ट वन, प्रोजेक्ट टू, प्रोजेक्ट थ्री, प्रोजेक्ट फोर, यानी कि कंसेप्ट सीखते सीखते मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करूंगा। तो ये मुझे डे वन नाम के एक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करके रखना है। तो वो स्टोर करने के लिए आई हैव टू चूज इट एज अ वर्क स्पेस। लुक एट दिस, मैं उसको एज अ वर्क स्पेस चूज कर, लेट्स से कल के दिन जैसे मेरा डे टू रहेगा, सो डे टू के रिगार्डिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे आई विल बी कीपिंग इट इनसाइड डे टू। वैसे सिमिलरली डे थ्री के अंदर, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपको जहां पे स्टोर करना है, जिस भी फोल्डर के अंदर स्टोर करना है, डे वाइज यू कैन चूज इट एंड यू शुड चूज इट। तो आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हो, यू कैन जस्ट ब्राउज इट। ब्राउज करने के बाद आपको वो डी में रखना है, ई में रखना है, एफ में रखना है, wherever you have the folders that you want to keep it, just choose it correctly. So maybe I want to say core java के अंदर डे 01 के अंदर मुझे यहाँ पे वो सारे के सारे जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो रखने हैं। यू जस्ट चूज इट, दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ वर्क स्पेस। इसे हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस। नाउ इस डे वन के अंदर इनसाइड दिस डे 01, लेट्स से आई एम गोइंग टू से लॉन्च, इसको करते हैं लॉन्च, एंड जस्ट वेट फॉर इट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, एंड इट इज गोइंग टू लॉन्च द टाइटल। मे बी ये इतना स्लो चल रहा है बिकॉज द मीटिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड। ये मीटिंग जो है, जो प्रीवियस पार्ट जो मैंने कहा था, सो इट वाज गेटिंग रिकॉर्डेड, तो वो रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ा सा इट इज गेटिंग बिट लैग्ड फॉर दिस स्टेज, क्योंकि बोथ द प्रोसेस हैज द सेम प्रायोरिटी, दैट इज ठीक है, नो बिग डील। सो वंस यू चूज अ वर्क स्पेस, जैसे आपने एक वर्क स्पेस को चूज किया, व्हाट हैपेंस इज, आप यहाँ पे एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को क्रिएट होता हुआ देख सकते हो। सो व्हाट विल हैपन इज इनसाइड योर, लेट्स से द वर्किंग डायरेक्टरी, जहां पे भी आपने उसको सेव किया है, लेट्स से हियर आई हैव सेव्ड इट इनसाइड दिस ट्रेनिंग, इनसाइड दिस कोर्सेस, इनसाइड लेट्स से दिस पर्टिकुलर मॉड्यूलर कोर जावा 15, और यहाँ पे मैंने उसको सेव किया है डे वन के अंदर। डे वन नाम का मैंने वो डायरेक्टरी बनाया था, वर्क स्पेस बनाया था, और उस वर्क स्पेस में आपको यहाँ पे दिख जाएगा समथिंग कॉल्ड एज डॉट मेटा डेटा, डॉट गिट इग्नोर, एंड सो एंड सो। अब ये जो डॉट गिट इग्नोर है, ये जो पर्टिकुलर बना है डॉट मेटा डेटा, ये दोनों चीज बनी है एसटीएस के कारण। डे 01 एमडी प्रोग्राम डॉट क्लास प्रोग्राम डॉट जावा, ये हमारे आज के कोड से, यानी कि आपने देखा होगा एमडी फाइल, द हेल्प फाइल दैट आई हैव प्रोवाइडेड, प्रोग्राम डॉट जावा फाइल जो मैंने अभी क्रिएट किया था यहाँ पे टेस्ट करने के लिए, और ये जो दो फाइल्स है डॉट मेटाडेटा डॉट गिट इग्नोर, ये क्रिएट करके देखता है आपका एसटीएस, यानी कि वो इंटरनली खुद क्रिएट करता है, आई एम नॉट क्रिएटिंग इट, द एसटीएस इज क्रिएटिंग इट इंटरनली। जैसे आपने वो फोल्डर को चूज किया, द मोमेंट यू हैव chosen the folder, what the hell this is, so maybe I will just the hell, can I just pause this recording for a moment so that I could launch it once again, and it should have launched। एक तो वो launch करने के लिए इतना टाइम ले रहा है, why the hell it is taking so much time, there's no option to pause this recording right now। हो जा, be a bit faster, I never had such machine। हाँ, see, can you see that now it is bit faster। So sometimes इसको कभी कभी I think कुछ तो हो जाता है। yes, and it will be opening soon। हो जा, sometime it works, sometime it fails, it is just because multiple projects are currently running on my machine, there are 2 3 servers that are been running। let me do one thing, let me just check if there are multiple desktops that are running। no, वैसे है तो नहीं, प्रोसेसेस भी नहीं है। I can open this up, let me check।
let me check over here if there are any. Maybe I can close this. Is there something that is getting downloaded? Yeah, exit. Ah, yes. Now it's open up. Let me close some of my processes over here. कुछ processes यहाँ पे है जो चल रहे हैं. So let me close so that I can get a bit faster performance over here. Maybe I can just put it down to this. इसको यहाँ पे रख देते हैं. Okay. So now you can see what we have got is this entire window. पूरी की पूरी STS यहाँ पे आप open हो चुके. Whether you go for Eclipse, whether you go for STS, whether you go for any particular, let's say, IDs that you are comfortable with, you will be getting a kind of, let's say, windows like this. Eclipse और STS generally similar रहेगा. STS 4 भी similar ही है. Maybe IntelliJ के पास जाओगे तो थोड़ा सा UI जो है look and feel वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा. So now in this particular STS, the first thing that I want to change is I want to change the perspective. See, why it is important? Because the Spring Tool suite that I am using over here, मैं जो यहाँ पे use कर रहा हूँ, this Spring Tool suite is generally meant for Java EE platforms. हम लोगों ने 4 platforms के बारे में बात किया था. Java, let's say Smart Card, then we talked about Java ME, then we talked about Java SE, and the fourth we talked about Java EE. 4 platforms की हम लोगों ने बात की थी. उसमें से जावा ई यानी कि इंटरप्राइज एडिशन के लिए जनरली ये आईडी बनी हुई है, यानी कि वेब डेवलपमेंट के लिए ये आईडी बनी हुई है, विच बाय डिफॉल्ट सपोर्ट्स द जावा एसी एज वेल, यानी कि जावा एसी को भी सपोर्ट करता है. बिकॉज हमारा मेन टारगेट आगे क्या है, जावा सीखने के बाद आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू डेवलप द वेब एप्लीकेशंस. आप जावा क्यों सीख रहे हो, ताकि आप वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सको. बेसिक्स आप यहाँ पे सीखोगे, कंसेप्ट्स आप जावा ई में अप्लाई करोगे. So for that, generally this ID is being used. Maybe if you are planning to go for CDAC courses, so again this ID is used. And even if you are trying to join the companies, either the Eclipse or STS are going to be used. IntelliJ, ठीक है, कोर जावा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है तो IntelliJ. हाँ, कुछ कंपनीज के पास पैसा है तो कमर्शियल पेड वर्जन ऑफ IntelliJ नीड्स टू बी डाउनलोडेड फॉर द लेट्स से जावा ई एप्लीकेशंस. अदरवाइज फ्री एंड ओपन सोर्स देखोगे तो दिस इज द आईडी दैट वी हैव अवेलेबल विद अस. तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज आर गोइंग टू हैव दिस आईडीज, इसलिए हम लोग इसको यूज कर रहे हैं. So यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे on the top right hand side corner there is an option which says open perspective. यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, we have the option called as open perspective. इस ओपन पर्सपेक्टिव के ऊपर क्लिक करो एंड बाय डिफॉल्ट जो होता है यू कैन सी स्प्रिंग को उसने कहा है एज डिफॉल्ट आई वांट टू चेंज इट टू समथिंग कॉल्ड एज जावा. यहाँ पे चेंज करो टू जावा. बाय डिफॉल्ट सेट होता है स्प्रिंग के लिए, आपको चेंज करना है टू जावा. से ओपन एंड जस्ट वेट फॉर अ मिनट. जस्ट एक मिनट रुको ताकि वो थोड़ा सा यूआई को रिफ्रेश कर सके. इट विल ओपन दैट पर्सपेक्टिव फॉर जावा. वंस इट इज ओपनड अप, आई डोंट रिक्वायर दिस विंडोज. मुझे यहाँ पे ये सभी विंडोज की जरूरत वैसे नहीं है. सो जो भी नहीं चाहिए आई विल जस्ट क्लोज देना. ये सारी चीजों को मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ. क्लोज देता हूँ, जितने चाहिए उतने ही यहाँ पे ओपन रखता हूँ. व्हाट आई रिक्वायर इज दिस प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करो, एक प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नाम का चीज. यू हैव टू क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट ओवर हियर. नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग द जावा प्रोजेक्ट्स. अब ये जावा प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए यू हैव टू से फाइल, से न्यू एंड यू कैन क्लिक ऑन जावा प्रोजेक्ट. एज सिंपल एज दैट. कोई भी नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जस्ट से फाइल, न्यू एंड से जावा प्रोजेक्ट. आप यहाँ पे जावा का प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो. whenever you click on new project it is going to open up a window like this where it will ask you the name for the project. आप इस प्रोजेक्ट का नेम क्या देना चाहते हो. let me say I want to say it like this, demo 01. मैं कह रहा हूं प्रोजेक्ट का नेम, इट इज नॉट अ फाइल नेम, इट इज अ प्रोजेक्ट नेम ओवर हियर दैट आई हैव. अब इस प्रोजेक्ट नेम के अंदर यानी कि इस डेमो 01 के अंदर मुझे कौन से वर्जन को टारगेट करना है, विच वर्जन आई शुड बी टारगेटिंग. तो यहां पे आप चूज कर सकते हो विच जेडीके यू हैव डाउनलोडेड. तो मे बी यू हैव डाउनलोडेड द जावा 11 ओवर हियर. तो आप यहाँ पे एक तो जावा 11 रख सकते हो या फिर आप जावा एससी 1.8 चूज कर सकते हो. यानी कि जावा 11 से कोई भी पर्टिकुलर लेट से पुराने वर्जन्स को आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो. यू कैन टारगेट. आई रिकमेंड दैट वेन एवर यू आर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, बिकॉज वो याद है क्या मैंने यहाँ पे बोला था कि यू हैव टू लुक फॉर आइदर यू वांट टू वर्क विद ओपी और यू वांट टू वर्क विद फंक्शनल प्रोग्रामिंग. यानी कि पिवोट हमारा कौन सा है, जावा 8 वर्जन है. तो हमें क्योंकि जावा 8 तक पहले सीखना है और जावा 8 के आगे की फीचर्स भी सीखना है, वी विल बी चूजिंग ओवर हियर एज जावा एससी 1.8. क्योंकि इसी के अंदर आपको वो जो डेप्रिकेटेड मेथड्स है वो भी मिल जाएंगे. यानी कि कुछ मेथड्स, कुछ क्लासेस ऐसे हैं विच आर बीन रिमूव्ड आफ्टर जावा 9. यानी कि जावा 9 के बाद
वो क्लासेस को रिमूव किया जा चुका है। लेकिन ओओपी सीखने के लिए हमें उनको यूज करना मैंडेटरी है। इफ यू वांट टू लर्न द ओपी यू हैव टू यूज इट। अब उसको यूज करने के लिए जनरली आई विल चूज द वर्जन एज जावा एससी 1.8। वही एक रीजन है क्योंकि मैं जावा एससी 1.8 को यूज कर रहा हूँ। ना वंस यू हैव गिवन द नेम, आपने एक बार नेम दे दिया, आपने एक बार कहा जावा एससी 1.8, वंस यू से इट जस्ट क्लिक ऑन फिनिश। आप यहाँ पे जाके कह दो फिनिश। What it will do is it will take a moment and it will create a project for you। ये आपको एक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। Look at that, it has been created। Now whatever the project has been created, you will find it out कि यहाँ पे आपको JRE सिस्टम लाइब्रेरी भी मिल चुकी है एंड यू हैव समथिंग कॉल्ड एज एन SRC। आपको यहाँ पे सोर्स नाम का वो डायरेक्टरी भी मिल चुका है। Whatever the code that you wish to write, जो भी कोड आपको यहाँ पे लिखना है, that code you should be writing it inside this SRC। आपने वो इस एसआरसी के अंदर लिखना है। यानी कि जो भी हम लोगों ने वो लिखा था ना, प्रोग्राम डॉट जावा फाइल वगैरह, ऑल दोस फाइल्स शुड बी केप्ट इनसाइड दिस एसआरसी। सी हाउ द वे दिस प्रोजेक्ट इज गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड नाउ। यानी कि हम लोगों ने जब काम किया था वी हैव डन इट बिट अनऑर्गेनाइज्ड वे से। लेकिन आपका जो एसटीएस होता है, द आइडियज होते हैं दैट क्रिएट्स द प्रोजेक्ट एंड कीप द एंटायर कोड इन अ बिट ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो यहाँ पे एसआरसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। You have to just say right click on this SRC and then you have to create a new class over here। You just have to say new और यहाँ पे जाके कहना है क्लास। ना हम लोगों ने जो प्रोग्राम डॉट जावा फाइल क्रिएट की थी, प्रोग्राम डॉट जावा फाइल, आई होप यू रिमेंबर दैट। उस प्रोग्राम डॉट जावा फाइल के अंदर हम लोगों ने क्लास बनाया था जिसका नाम हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास दैट वी हैव कीप्ट वाज प्रोग्राम। तो वैसा ही क्लास क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे अब क्लिक किया। लुक एट दिस, आई हैव क्लिक दिस क्लास। अब जैसे मैं क्लास के ऊपर क्लिक करूंगा वो मुझे पूछेगा कि इस क्लास का नाम आपको क्या चाहिए। व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द क्लास दैट यू वांट टू गिव। सो yes, it is giving me, it is just big lag because of this meeting recording that is happening or that is doing the process, because it is taking entire 80% of my memory to process it। reason है दो, because it is showing me कि ये pixel जो use कर रहा है for the conversion, it is stripping down from 2048 to around 720 I think। तो ये स्ट्रिप डाउन की वजह से इट इज कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ वी कुड से स्पीड और सीपीयू। राइट नाउ 96 तक जा चुका है। सो बिकॉज इतना स्लो मैंने आज तक आई थिंक आई हैवंट वर्क विद दैट सच अ स्लो बिहेवियर आई एम गेटिंग, सच अ लैग आई एम गेटिंग राइट नाउ। ठीक है, इवन आई हैव शट डाउन माय सर्वर। एक तो सर्वर जो चल रहे थे उसको भी मैंने शट डाउन किया है वैसे, बट ठीक है फाइन। आई थिंक आई हैव मेरा वीडियो भी ऑफ हो चुका है क्या? आई डोंट लाइक वीडियो टू बी टर्न ऑफ, वरना आप ध्यान नहीं दे पाओगे ना, वरना वो रिकॉर्डिंग सेशन जैसा बन जाएगा। सो लेट मी कीप द वीडियोस ऑन। Maybe just a moment, it is up to 98, maybe just 1 or 2% that has been left, which will give me a bit of processing speed over here। Yes, this too takes time। Zoom थोड़ा सा आजकल मुझे लगता है हेवी बन चुका है काफी ज्यादा। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। हो जा हो जा, देखो वही ठीक। चलो टिल देन ये होता रहेगा। लास्ट 1% इट इज बिन रिमेनिंग एंड जैसे हो जाएगा वी विल बी गेटिंग अ बिट बेटर स्पीड ओवर हियर। टिल देन आई विल राइट द नेम ऑफ द क्लास ओवर हियर। द नेम ऑफ द क्लास आई एम गोइंग टू कीप इट एज अ प्रोग्राम। जरा यहाँ पे पूरे इन फील्ड्स को जरा चेक करते हैं। द फर्स्ट थिंग इट टॉक्स अबाउट द पैकेज। अभी फिलहाल हमें पैकेज के बारे में नहीं पता है। वी डोंट नो व्हाट इज द पैकेज, पैकेज के अंदर क्या लिखा जाता है, व्हाट वी शुड बी राइटिंग ओवर हियर, क्या P1 लिखे, कॉम डॉट समथिंग लिखे, हमें कुछ नहीं पता। सो वी विल कीप इट ब्लैंक। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ब्लैंक प्रोवाइड किया है, व्हाट हैज हैपेंड इज यहाँ पे मुझे को वार्निंग भी देना है। So can you see the warning? The use of default package has been discouraged। Wow, can you see the speed that I have got now? So I think now it's really good क्योंकि ये हो चुका है process। So that's the video that has been created। I think around उसने strip down किया to 294 MB। So around I think आधे जीबी का तो दोनों parts में I think वो बन जाएगा। ठीक है, let me keep it on this page। मैं उसको इस पेज पे रख देता हूँ क्योंकि मुझे बाद में उसको प्रोसेस भी करना है। Let me keep it on this monitor। आजा आजा जी, हाँ गुड, फिट हो गया।
फाइन सो पैकेज फिलहाल क्योंकि मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो व्हाट द पैकेज इज, सो यू कैन सी द यूज ऑफ डिफॉल्ट पैकेज इज डिस्करेज्ड। सो क्योंकि पैकेज यहाँ पे मैं अभी तक नहीं बना सकता क्योंकि मुझे नहीं पता है, तो आई विल बी कीपिंग इट बैंक। डू नॉट राइट एनीथिंग इनसाइड दिस। ये पैकेज क्या के कुछ नहीं लिखना है। वट एवर यू नीड टू राइट यू हैव टू कीप इट इन द फ्रंट ऑफ दिस नेम। तो नेम क्या क्या आप जाके यहाँ पे लिख दो एज अ प्रोग्राम, एंड नीचे जा करके यू जस्ट हैव टू चूज इफ यू वांट टू कीप अ मेन इनसाइड इट। यानी कि कितना सिंपल हो चुका है ये देखो। इट हैज बीन मेकिंग द डेवलपर्स लाइफ बिट इजी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, लुक एट दिस, कैन यू सी द वे द मेन सिंटैक्स इज बीन गिवन। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सर ऐसा ही क्यों लिखा है, कैन यू सी द सिंटैक्स दैट इट इज गिविंग यू, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ऐसा ही लिखना है, इट इज ऑल्सो गिविंग यू। लेट मी शो इट टू यू, क्लिक ऑन फिनिश। जैसे आप फिनिश के ऊपर क्लिक करोगे इट विल क्रिएट दैट पर्टिकुलर फाइल एंड इट विल शो इट टू यू। एडिंग अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स वैसे कुछ थे नहीं, बट यस, कैन यू ऑब्जर्व समथिंग दैट इट हैज बीन क्रिएटिंग डिफॉल्ट पैकेज। मैंने कुछ नहीं क्रिएट किया, आई हैवंट क्रिएट अ पैकेज, but it says by default as a default package, and inside this we have created a particular file called as a program.java. Ah, that's what I was saying. Oh, let me close this one. Let me close this one. Just a minute. Oh, yeah. So that's what I was looking for. So I think there were multiple instances of desktops I was running behind the scenes, जिसकी वजह से I think ये problem थोड़ा सा आ चुका था. Because on both the desktops actually I was having two servers that was running behind the scenes, uh, on two different ports run हो रहे थे, and I think वही एक problem था major जो मुझे यहाँ पे आ रहा था. चलो good. Wow. Yes. Now it's really fluent. So that's what I was struggling with कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है. ठीक है, माय बैड. कहाँ पे थे हम लोग? यस, वी वर टॉकिंग अबाउट राइटिंग द मेन, एंड कैन यू सी दिस द मेन दैट वी हैव गॉट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब इसके अंदर अगर आपको कुछ भी लिखना है, हेलो वर्ल्ड वगैरह लिखना है, सी द पावर ऑफ आईडी. अब जो मैं काम यहाँ पे पहले कर रहा था, द वर्क वॉज एंटायरली बेस्ड ऑन राइटिंग द कोड मैन्युअली, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये सारा कोड मैं खुद लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग इट. बट नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये पूरा प्रोग्राम क्लास, सिर्फ मैंने राइट क्लिक करके प्रोग्राम लिखा, उसने क्लास बना दिया. मैंने वहां पे सिर्फ चेकबॉक्स के ऊपर चेक किया, उसने यहाँ पे मेन बना दिया. अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यानी कि पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू से सिस आउट से कंट्रोल स्पेस बार, एंड वो आपको ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करके भी दे दे. क्या लिखा, वंस अगेन से दिस, आई एम गोइंग टू से इट. लेट मी कट दिस पर्टिकुलर फाइल एंड से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. लिखने का तरीका से सिस आउट इतना ही लिखो, एंड से कंट्रोल एंड स्पेस बार, से कंट्रोल और स्पेस बार को क्लिक करो, वो पूरा स्टेटमेंट आपको कवर करके दे देगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. दिस इज व्हाट द आईडीई इज गोइंग टू हेल्प यू, यानी कि ये आपको फास्टर डेवलप करने के लिए ऑप्शन दे रहा है. इट इज गिविंग यू टू डेवलप द कोड एट अ फास्टर पेस. यानी कि ये जो बॉयलर प्लेट कोड, रिडंडेंट कोड होता है, ये आपको ऑटोमेटिकली बना के देगी. अच्छा, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, मे बी यू जस्ट वांट टू से हेलो वर्ल्ड. आप जाके यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखोगे, और क्या करना है, कंपाइल वगैरह कुछ नहीं, सीधा जाकर के रन करो. सी देयर इज अ बटन ओवर हियर, रन का एक बटन है ऑन द टॉप कॉर्नर, कैन यू सी दिस, रन का. जस्ट क्लिक ऑन दिस, आप रन के ऊपर क्लिक करो, एंड इट इज जस्ट गोइंग टू run this application and you'll be getting it into the console. Look at this, hello world. Are you getting that? It is that simple. यानी कि आपको जो भी पर्टिकुलर काम करना है, वट एवर द टास्क दैट यू वांट टू परफॉर्म, यानी कि लेट से आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है, क्लासेस लिखना है, जो कुछ भी करना है, आपको बस राइट क्लिक करना है, क्रिएट करना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट करना है. मेन भी चाहिए, मेन भी मिल जाएगा. अरे सर, हम लोग को टिक करना भूल गए मेन को, सो वी क्रिएटेड अ क्लास बट वी फॉरगॉट टू पुट डाउन द मेन. So should we write it manually over here, public static void main? No, you just have to say main, control space bar, and it will give you the entire main method. वो main method भी देगा. And see the way it is giving you the main method. जरा main method देखो वो कैसे दे रहा है, public static void main, and it is saying string args. Are you getting that? जो हम लोगों ने बनाया था exactly वैसे ही बना. अब यहाँ पे सवाल आएगा, सर what will happen if I don't write it like this? पहले नहीं लिखता हूं तो ऐसा क्यों लिखा है वो भी बताऊंगा, लेकिन ऐसा अगर नहीं लिखता हूं तो क्या प्रॉब्लम है, जरा चेक करते हैं. ठीक है, सो नाउ सी दिस. इनिशियली अगर मैं सारा चीज सही से लिखता हूं, इफ आई रन दिस पर्टिकुलर कोड, इट सेज हेलो वर्ल्ड, एवरीथिंग वर्क्स गुड, यानी कि काम अच्छे से हो. बट नाउ इफ आई मेक
दिस मेन मेथड एज अ प्राइवेट। अब ये पब्लिक प्राइवेट क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर्स वगैरह वो सारी चीज देखेंगे। अगर आप सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आ रहे हो, इफ यू नो द एक्सेस स्पेसिफायर्स, गुड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर नहीं, डोंट वरी, एज आई सेड आपको 3 से 4 दिन लगेंगे टू बी फेमिलियर विथ ऑल द कंसेप्ट्स इन जावा, क्योंकि ये बना ही सी प्लस प्लस के ऊपर है। सो यू विल नीड सम टाइम टू डाइजेस्ट इट, बहुत सारी चीजें। अगर आप पब्लिक ना लिखते हुए, मे बी आपने कुछ भी नहीं लिखा, चलो जाने दो, आपने पब्लिक ही हटा दी, आपने कुछ भी नहीं लिखा। नाउ जस्ट रन दिस प्रोग्राम एंड सी व्हाट यू गेट। ये चेक करो, आई होप एवरीवन इज वाचिंग दिस, व्हाट यू आर गेटिंग। आई आपको क्या मिला, यू आर गेटिंग एन एरर। एंड व्हाट इट सेज मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास प्रोग्राम, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज व्हाट। कैन यू सी दिस? क्या ये मैं कह रहा हूं कि क्या ये जावा आपको कह रहा है? Is Java telling you to define the main method exactly like this? Public, static, void, main, string, and array. वो खुद जावा कह रहा है, मैं भी नहीं कह रहा हूं, बिकॉज इट इज अ सिंटैक्स दैट यू हैव टू यूज। इसके अलावा कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये लुक एट दिस, मे बी आई एम कीपिंग दिस एज पब्लिक, लेकिन मैं स्टैटिक हटा देता हूं। स्टैटिक जो कीवर्ड था मैं वो यहां से हटा देता हूं, मॉडिफायर हटा देता हूं। लेट अस रन दिस पर्टिकुलर कोड वंस अगेन। इसको वापस से रन करते हैं। चेक दिस व्हाट इट सेज, मेन मेथड इज नॉट स्टैटिक इन क्लास प्रोग्राम। वो कह रहा है कि मेन मेथड स्टैटिक नहीं है, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज व्हाट इज दिस। यानी कि आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से लिखने की कोशिश करो, यू वोंट बी एबल टू राइट इट, यू हैव टू कंपल्सरी राइट इट इन दिस पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, बाकी कोई भी तरीका नहीं चलेगा। चलो ठीक है सर, मैं यहाँ पे स्टैटिक बना देता हूं, बट मैं यहाँ पे उसका रिटर्न टाइप इंट लिखता हूँ। इंट में जो आदत होती है, सो वी हैव दिस हैबिट ऑफ राइटिंग दिस, let's say from C type. So C++, we are writing it like this, int main and return 0. So maybe I'm going to write it like this and I'm going to execute it. I'm keeping the public static as it is. उसको मैंने change नहीं किया. Run this particular code and you'll be again getting that main method must return a value of type void. यानी कि मेन मेथड का रिटर्न टाइप void ही होना चाहिए। प्लीज डिफाइन द मेन मेथड लाइक दिस। सी दिस सिंटैक्स यू कैन नॉट चेंज। आप उसको नॉन पब्लिक नहीं बना सकते, आप उसको नॉन स्टैटिक नहीं बना सकते। यू कैन नॉट रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम द मेन। द मेन मेथड शुड बी कंपल्सरी पब्लिक, स्टैटिक एंड void. फर्स्ट, इज दिस क्लियर? द मेन मेथड शुड बी पब्लिक, स्टैटिक एंड void. इज दिस क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर है, ऐसा ही होना चाहिए, सिंटैक्स ही है, वरना मेन मेथड आप नहीं लिख पाओगे, ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? ऐसा ही लिखना पड़ेगा। यस गाइस, इज दिस क्लियर सो फार? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिंदा हो? आर यू देयर बिहाइंड द सीन? आर यू लिसनिंग टू मी? पहले ये क्लियर है? हाँ, थैंक यू। थैंक यू, प्लीज डू गिव सम रिस्पॉन्सेस, आई होप यू आर देयर। सो ये जो अब हम लोगों ने ऐसे लिखा है, इसको ऐसा ही क्यों लिखने के लिए जावा इज टेलिंग अस, व्हाई जावा इज टेलिंग अस टू राइट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एग्जैक्टली लाइक दिस, उसके पीछे एक रीजन है। अब रीजन को समझते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, पब्लिक, एवरी फंक्शन इनसाइड द क्लास। अब मैं थोड़ा सा सी प्लस प्लस का रेफरेंस यहाँ पे ले रहा हूं, नहीं तो आप जावा के पर्सपेक्टिव भी देख सकते हो। एवरी फंक्शन इनसाइड अ क्लास, क्लास के अंदर जो भी फंक्शन आपने लिखा है, मेन इज अ फंक्शन, मेन क्या है? एक फंक्शन है। तो जो भी फंक्शन आप एक क्लास के अंदर लिखोगे, इफ यू वांट टू एक्सेस इट आउटसाइड द क्लास, आपको अगर इन फंक्शंस को क्लास के बाहर एक्सेस करना है, तो वो फंक्शंस पब्लिक होने चाहिए, तो फंक्शंस पब्लिक होने चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रीजन। अब क्योंकि मेन फंक्शन को इस क्लास के बाहर कॉल किया जाने वाला है, कौन कॉल करेगा? सो द जेवीएम विल कॉल इट। Now because JVM is going to call this main function from this class, तो इसी के लिए उसको पब्लिक होना जरूरी है, because only public functions are accessible outside the class. This is the first reason why public. Second, static. अगर कोई भी फंक्शन नॉन स्टैटिक होगा, यानी कि इफ द फंक्शन इज नॉन स्टैटिक, यानी कि स्टैटिक नहीं लिखा है, दैट मीन्स दिस फंक्शन नीड्स टू बी कॉल्ड ऑन क्लास ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रोग्राम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड ऑन द ऑब्जेक्ट यू नीड टू कॉल द मेन फंक्शन। नाउ विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट,
if you want to call any function from the class, then that function should be static. यानी कि फंक्शंस को बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए अगर कॉल करना है तो उन्हें स्टैटिक करना पड़ता है. Now because JVM calls this function without creating the object of this class, इसीलिए उसको स्टैटिक रखना जरूरी है. I think I have explained two things: why public and static. Why public? Because to access it outside the class. Why static? To access it on class name and not on the object. यानी कि class को object नहीं create करना है. Without creating the object, I want to access it. इसलिए static. Void? Because main does not return anything and JVM does not want to accept any value from the main. यानी कि JVM जब main call करेगा, it does not accept any return value from that main method. यानी कि JVM कहता है मैं कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ, यानी कि कोई भी रिटर्न वैल्यू मुझे नहीं चाहिए. Now because JVM does not require any return value, तो main का return type main होना चाहिए, main का return type void होना चाहिए. It does not return anything. इसलिए public, static and void. तो सर ये क्यों स्ट्रिंग एरे? ये एरे किसका? सो इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग द कोड फ्रॉम द कमांड लाइन इन द सेंस व्हाट वी हैव डन इट फ्रॉम द वीएस कोड, जो हम लोगों ने वीएस कोड के थ्रू किया था, यहां से जो हम लोगों ने किया था. सो फ्रॉम दिस वीएस कोड जब हम लोग रन कर रहे थे, सो लेट्स से वी आर सीइंग जावा प्रोग्राम, तो उसके आगे अगर मुझे कुछ वैल्यूज देना है, दिस 10 एंड 20, तो ये 10 एंड 20 हुए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स. तो ये जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स मैं यहाँ पे पास करता हूँ, these command line arguments ये यहाँ पे कैच किए जाते हैं. These are been cached over here inside this string arguments. यानी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को कैच करने के लिए ये एरे, क्योंकि क्लास के बाहर एक्सेस करना है इसलिए पब्लिक, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है इसलिए स्टैटिक, और वो रिटर्न कुछ नहीं करता है इसलिए void. एंड दैट इज द रीजन व्हाई पब्लिक, स्टैटिक, void मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा वो मेन का सिंटैक्स जावा ने बना के दिया. This is the way that the Java has created the syntax for it. Public, static, void, main. Let me know if this, first of all, the first thing is clear to you. Public, static, void. इसके अंदर कोई भी क्वेश्चंस होंगे, you can just ask me, no doubt. Yeah. Okay, good. Now, this statement I will be explaining it to you, but अगर आप समझ पाओ तो अच्छी बात है, अगर नहीं, don't worry. The moment we are going to work with the hierarchy part, तो आप उसके बाद ये exactly समझ पाओगे. अभी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. I will be explaining it to you. समझ पाओगे बहुत अच्छी बात है, नहीं so leave it. You will be understanding it after the hierarchy. ठीक है? So the system dot out dot println. ठीक है, इसकी बात करते हैं. Why string arrays? यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ये आइडेंटिफायर है. आई होप यू नो हाउ द एरे इज बीन क्रिएटेड. तो आप ऐसे लिख सकते हो स्ट्रिंग ARR. कैन यू सी दिस, जो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था प्रोग्राम डॉट जावा. देखो मैंने कैसे बोला था, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखते वक्त ऐसे लिखा था. सो इट वाज नॉट var 0, मैंने यहाँ पे बोला था एरे ARR लाइक दिस. करेक्ट? सॉरी, दिस इज द क्लास. हाँ, कैन यू सी दिस ARR? बाय बाय. सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो आप एरे जो भी लिखोगे, ARR जो है वो एक आइडेंटिफायर है. आइडेंटिफायर आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हो. मे बी यू कैन से माई ARR लिख सकते हो, मे बी आप यहाँ पे ARGS लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर, नो डाउट, कुछ भी चलेगा. यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आइडेंटिफायर क्या लिख रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है. हाँ, उसका जो टाइप है, व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट एरे, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी कंपल्सरी ऑफ टेक्स्ट. ये स्ट्रिंग टाइप का ही होना चाहिए, otherwise नहीं चलेगा, otherwise not allowed. So if you look at this, it has giving me like this string ARGS arguments. ARGS लिखो, ARR लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Second, in Java it has the option कि ये जो subscript है, subscript, you can keep that subscript after the ARGS, यानी कि after the identifier, or you can keep that ARGS before the identifier. So Java has the flexibility of this syntax कि ये जो आप array का subscript लिखोगे, वो subscript आप एक तो identifier से पहले before the identifier, or even after the identifier you can keep it anywhere you want. So that's the Java's flexibility of syntaxes, you can say. But yes, it is not flexible with the main syntax. So it should be public, static, void main. हाँ, उसके अंदर the string ARGS, हाँ, there we have the flexibility. You can change it. So I can show it to you like this. So maybe I'm going to say string ARR. Look at this. I will run this program. Hello world, and yes, it works. Not only that, maybe I will just change this subscript at the end. So I will change it over here. Run this particular code and you will find it out. It still works. So you keep it anyhow, it works. But yes, you cannot change this part. Public, static, void main should be as it is. And string array.
String array, you write it anywhere, doesn't matter, but it should be in the same way. That's fine. Now the second part, why I have kept it like this, system.out.println. Now see, again I am repeating this. I am telling you, but don't worry if you do not understand it. आप टेंशन मत लो, अरे सर वो समझना है, don't take tension. The moment you are going to cover up this hierarchy part, you will be getting the details out of it. But yes, those who have already gone through the C++, maybe if you have learned the OOP earlier, you might be just somewhere relating it. कहीं ना कहीं आप उसको relate जरूर कर पाओगे. Now see this. First of all, system is a class present in java.lang package. Let me show it to you. Maybe I will be showing this to you once again. So let me open that docs. This is Java 8. That's the document that we want to refer. Let's go into the java.lang, and into the java.lang, if you scroll down, what we have is a system class. So in the system class, if you scroll down, you have something called as fields. Now what are these fields? I will talk about it. जब हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे. तो इन फील्ड्स के अंदर आपको यहाँ पे वो आउट नाम का एक फील्ड दिखाई देगा. आउट नाम का, जरा चेक करो, सिस्टम डॉट आउट. सिस्टम डॉट आउट, आउट नाम का क्या है, फील्ड है. कहां पे, इनसाइड सिस्टम क्लास. ये आउट एग्जैक्टली क्या है? सो दिस आउट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रिंट स्ट्रीम क्लास. See this, system is a class inside which there is a field called as a out, which is an object of a print stream class. Print stream is a class. Once again, please have a look at this. Print stream क्या है? Print stream is once again a class, and this print stream class object is been created inside this system class. यानी कि कुछ इस तरीके से वो क्रिएट हुआ है. Let me show it to you. समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो लीव इट. Print stream is a class, and there is a class called as a system. And inside the system class, what they have created is the object of this print stream class called as a out. क्या ऐसा कुछ behavior have you seen it over here? क्या आपने ऐसा कुछ behavior यहां पे देखा है क्या? ये कुछ याद है? When I was explaining you something, hierarchy. और hierarchy में मैंने कहा था कि date और person, there is a relationship between these two. So generally this date is being used or it is being reused into the multiple classes. How you will reuse it depends on what type of relationship it forms, कि वो has a है कि is a है. We talked about this, और मैंने कहा भी कि hierarchy का टॉपिक एक पूरा एक क्या 2 दिन लेंगे to understand it completely. So if you are aware about hierarchy, good, you will be able to understand it. If you are not aware about hierarchy, don't worry, abstraction is the key. क्योंकि जावा खुद कहता है कि सारा एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे सीखो, क्योंकि हमें ये खुद इंप्लीमेंट करना है. बिकॉज वी आर हियर टू इंप्लीमेंट दिस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट बिट इंटरनली. तो थोड़ा सा हम लोगों को इंटरनल्स में भी जाकर के थोड़ा थोड़ा देखना है, नॉट ईच एंड एवरीथिंग बट थोड़ा थोड़ा. सो इफ यू लुक ओवर हियर, सो यहाँ पे चेक करो, इस सिस्टम के अंदर प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना है. सो व्हेन यू क्रिएट इट लाइक दिस, दैट मीन्स यू आर डूइंग एन एसोसिएशन ओवर हियर. यहाँ पे एसोसिएशन हो चुका है. सो व्हाट दे हैव डन इज, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना करके दे हैड द relationship of has a relationship between the system and the print stream class. Now because there is a has a relationship, तो यहाँ पे उन्होंने उसका ऑब्जेक्ट सिस्टम क्लास के अंदर बना के रख दिया है. Not only that, they have declared this as a static over here. अब स्टैटिक डिक्लेयर करने का रीजन ये है that this out can be accessed, यानी कि the object of the print stream class can be accessed directly on the system class without creating the object. यानी कि सिस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बिना अगर मुझे प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है, तो आप डायरेक्टली उसको डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हो. ये करने के लिए उन्होंने इसको एज अ स्टैटिक डिक्लेयर करके रखा है. दे हैव डिक्लेयर्ड इट एज स्टैटिक, दैट इज द रीजन. इसलिए आप ऐसे यूज कर रहे हो, सिस्टम डॉट आउट. नाउ सिस्टम इज अ क्लास, आउट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम डिक्लेयर्ड इनसाइड द सिस्टम क्लास एज अ स्टैटिक फील्ड. एज अ स्टैटिक फील्ड डिक्लेयर किया गया है, इसलिए सिस्टम डॉट आउट. अब ये आउट के ऊपर उन्होंने प्रिंट एलन लिखा है. अब ये जो आउट है, आउट क्या है, आउट इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम. तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, इफ यू स्क्रॉल डाउन अ बिट, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज समथिंग कॉल्ड एज अ मेथड प्रिंट एलन.
तो ये मेथड उस प्रिंट स्ट्रीम क्लास की है. So because you have got the object of a print stream, you are calling the method called as a println, and then you pass the values as hello world. Can you see the level of encapsulation the Java has done? क्या अब आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो जावा ने कितने लेवल का एनकैप्सुलेशन आपके लिए करके दिया है? एंड व्हाट जावा सेज कि आपको बस एक ही चीज पता होना चाहिए. क्या? see this sys out control space bar and you get the system.out.println. That's what we call it as abstraction. So I hope I have spent enough amount of time in telling you what is abstraction and encapsulation. और मैं ये क्यों बता रहा था? तो मैं ये इसलिए बता रहा था. Why I was telling you this abstraction and encapsulation, the purpose of this was to tell you that Java has done a lot of encapsulation for you. उसने इतने लेवल तक का एनकैप्सुलेशन किया है कि ओपनिंग ईच एंड एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर अस. वो सारा चीज आप ओपन अप करके अगर देखने जाओगे तो जावा विल नॉट बी फिनिश्ड इवन इन एंटायर ईयर. वो पूरे साल में भी खत्म नहीं हो पाएगा. बट व्हाट आर इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स, व्हाट आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू नो, उतने भी अगर आपको पता चल जाएंगे, इट इज वे अहेड. अगेन एज आई सेड कि जिनका ओओपी पहले से फंडामेंटल स्ट्रांग है, those can immediately get to this कि अच्छा हाँ system.out.println, अच्छा system is a class, out is a object declared as a field inside system class, अच्छा उसको static बना है यानी कि system का object बनाने की जरूरत नहीं है, and println वो print stream का मेथड है. तो they can immediately relate it. तो जिन्होंने नहीं किया है, डोंट वरी, आई एम हियर, वी आर गोइंग टू लर्न दिस एंटायर पार्ट, क्योंकि ऐसा कुछ काम हमें करना भी है. वी आर हियर टू क्रिएट आवर ओन क्लासेस, वी आर हियर टू क्रिएट आवर ओन मेथड्स, वी आर हियर टू क्रिएट आवर ओन स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड्स. ये सारा काम हमें करना भी है. वी आर हियर टू क्रिएट इट. ठीक है, सो डोंट वरी ऑन टू इट. तो समझ पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं सो रिमेंबर एब्स्ट्रैक्शन. So for you today, you have to work on an abstraction. If you are ready for it, you can even look for the encapsulation. तो even आप उसका encapsulation भी देख सकते हो. But Java generally says work on to the abstraction, and that is the reason why the Java people says Java is simple. काफी सारे लोग हैं जो कहते हैं कि Java is simple sir, C++ से simple है. Why it is simple? Because of this, because of the encapsulation that Java has provided. Java कहता है ये चाहिए ऐसा लिखो काम हो जाएगा, ये चाहिए ऐसा लिखो काम हो जाएगा, and that is what it is trying to simplify. Let me know, is the first hello world program clear to you? So maybe you can see 3.5 hours we are actually talking about still hello world program. यानी कि जावा में काम करने के लिए क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, that we have worked on. So that huge the Java is. And if you want to be a developer, you need to understand a lot of things over here, really a lot of things. और उसमें से पहला चीज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लैंग्वेजेस ऐसे क्यों है, फिर जावा को समझना है, कंपाइलेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, क्यों ऐसा है, जावा एग्जैक्टली क्या है. देन वी टॉक्ड अबाउट हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, और हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए भी ऐसा क्यों लिखना है, दैट इज व्हाट वी हैव गॉन थ्रू. अब इसमें भी काफी सारे वेरिएशंस है, बट वी विल लुक इट स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. बट यस, सो फार एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव गॉट? अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे लेट मी नो, आई विल बी वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस ओवर हियर. Then let me see whatever we have covered so far. Execution flow हो चुका है, main variations we will talk about it, and then console input. ठीक है. Any other questions that you have, guys? I will wait for a minute. Is ARGS optional? ARGS as a keyword अगर आप पूछोगे तो हाँ, उसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो. You can write anything over here, Jasmine. But if you talk about कि sir I will not write this entire thing, so maybe I will not mention this entire thing, नहीं चलेगा. Hey, look at this. Let me run this particular code, and you can find it out. It says main method not found in class program. So if you just miss that part, if you don't provide the array, it is not going to work. So the syntax will remain as it is. ये चाहिए ही चाहिए. It should be there. So maybe I will mention it over here. So I will say it is going to be string. It is an array. Maybe you will call it as ARGS. You can put it like this. You can put that subscript before this. You can do it anywhere that you want. Okay. So Radhika, I will just summarize it quickly. So you have to download two things today. The first thing is the JDK that you need to download, and the second thing is the STS that you need to download. So maybe I'm going to open that up. So I'm going to say adoptium.net. This is the one that you need to download.
choose the operating system correctly. This is going to be the Windows. The architecture is going to be whatever that you are going to see it from your settings. तो आप यहाँ पे जाकर के settings में जाकर के you can just say it like this: display, display. Sorry, not display. My bad. So that's my monitor that you'll be getting. So it is going to be details about. आ जाएगा device specification. So here you can just look for the system type that you have. You can just go and look for the processor that you have. So based on the processor आप यहाँ पे choose करो correct architecture को. Package type जो रहेगा it is going to be the JDK and the version that you want is going to be the 11 LTs. Now once this is downloaded, एक बार ये download हो चुका है, you just have to go and download the Spring Tool Suite. So maybe I could say Spring Tool Suite download. तो Spring Tool Suite के ऊपर you just have to click it. It will take you to this particular link where you can download the Spring Tool Suite. Here download होने के बाद as we talked about, what you will be getting is this particular file, यानी कि जो आपको मिलेगा it is going to be, let me just keep it over here, जो आपको मिलेगा it is a zip file. एक zip file मिलेगी और zip को unzip करने के बाद उसको डबल क्लिक करके ओपन करो एंड यू हैव टू सर्च फॉर दिस, दैट इज स्प्रिंग टूल सूट 4.exe. आप इस exe फाइल को जाके सर्च करो, यू जस्ट डबल क्लिक ऑन इट और ओपन कर सकते हो. वंस ओपन अप, बस हो गया. दैट्स व्हाट यू नीड टू इंस्टॉल. ये बस दो चीजें आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देनी है आज के दिन में. ठीक है. यस, एनी अदर क्वेश्चन सो फार? इंस्टॉलेशन आई हैव क्विकली रिकैप्ड. एनीथिंग अदर दैट यू नीड टू रिकैप? क्योंकि इसके आगे फिर हम मुझे जो स्टेप में जाना है, देर सारे बेसिक्स जितने इंपॉर्टेंट थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. नाउ इट विल बी लाइक अ बिट पार्ट ऑफ द जावा दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. इसलिए यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस सो फार दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट? We talked about all the compilation steps that are been happening into C, C++, into the Java. Why Java is considered as a compiled and interpreted language. Java is a platform independent. How Java is platform independent? Because of this bytecodes, because of this dot class file that it creates. It is an intermediate code that is understandable only by the JVM. ये सारी चीजें जो भी हम लोगों ने देखी है, जस्ट क्विकली रिकैप इट इनटू योर माइंड्स. थोड़ा सा क्विकली रिकैप करो and then let me know if you have any questions. थोड़ा सा अगर कुछ questions होंगे so let me know. Yes, I will wait for your questions. इंस्टॉलेशन स्टेप्स, इक्लिप्स के लिए भी इंस्टॉलेशन स्टेप्स कुछ नहीं, उसका भी जिप फाइल ही होता है. सो इवन इफ यू वांट टू डाउनलोड एन इक्लिप्स तो आप इक्लिप्स भी यहाँ पे सर्च कर सकते हो. अब काफी साल हो चुके हैं मैंने इक्लिप्स को यूज किए हुए. सो यू कैन जस्ट से इक्लिप्स डाउनलोड फॉर विंडोज वट एवर द दिस इज eclipse.org के ऊपर आप जा करके इक्लिप्स का जो भी वर्जन आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो. वंस यू डाउनलोड इट, आपको यहाँ पे जिप फाइल मिल जाएगा एंड दैट पर्टिकुलर जिप फाइल से आप डायरेक्टली उसको एक्सट्रैक्ट करके exe को ओपन कर सकते हो. तो वहां पे भी eclipse.exe ही आपको वहां पे मिल जाएगी. एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाएगी तो वो भी आप वहां पे यूज कर सकते हो. इट्स अप टू यू, विच एवर वन यू वांट यू कैन डेफिनेटली यूज इट. आई एम रियली कंफर्टेबल इन ऑल द आईडीज. इक्लिप्स में काफी पहले यूज करता था, बट नाउ जनरली आई यूज एसटीएस. इंटेलिजे यूज करने वाले इंटेलिजे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, नॉट टू वरी. चलो, नो एनी क्वेश्चंस. लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग सो फार, क्योंकि ये काफी सिंपल था. Very good, Jaswin. I have got a really nice question from you, and I was expecting this question from someone actually. And the question is like this: is JVM platform dependent or a platform independent? What is your guess? और ये एक्चुअली में मैंने दिखाया भी है इनडायरेक्टली, बट इफ यू हैव गॉट दोज हिंट्स यू विल बी एबल टू आंसर. कैन यू टेल मी, इज JVM platform dependent or platform independent? Others, those who have guessed it correctly, can you just tell me? चलो, चेतन का एक आंसर आ चुका है, एक ही आंसर आ चुका है. व्हाट अबाउट अदर्स? आपके हिसाब से JVM क्या है? आई सेड जावा कोड. मैंने कहा जावा का कोड जो आप लिखोगे दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. व्हाट डू यू थिंक अबाउट JVM? जावा वर्चुअल मशीन के बारे में आपका क्या कहना है? इज इट प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इज इट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट?
चलो शरद का आंसर आ चुका है, शरद यू आर करेक्ट। कुंभ करेक्ट। दो लोगों ने करेक्ट आंसर दिए। ओके लेट मी टेल यू। So this JVM is actually platform dependent. This JVM is platform dependent, and because JVM is platform dependent, your Java code is a platform independent. आपका जावा कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसको थोड़ा सा इस डायग्राम से समझते हैं। लेट मी शो इट। लेट्स से आई हैव थ्री मशीन्स। लेट्स से मेरे पास तीन मशीन्स है, वन टू एंड थ्री। Let's say what do I have is this. Maybe this is going to be Windows. Maybe this is going to be Mac OS, and this is going to be simple Linux. Linux based system. Maybe आप Ubuntu वगैरह कह सकते हो। अब अगर आप Windows की बात करोगे तो Windows ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी, इफ यू हैव सीन दिस एडोप्टियम का वेबसाइट अगर आप चेक करोगे, द वन दैट आई हैव यूज्ड ओवर हियर। सो आर यू चूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर हियर? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम भी चूज करोगे? यानी कि यस। यानी कि पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट भी है। क्या डिपेंडेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आपका जीआरई। जीआरई क्या होता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। व्हाट डू रन टाइम एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ? जेवीएम। यानी कि whenever you talk about JRE, for this specific JRE you have to choose the operating system and the architecture. यानी कि depending on the different operating system and the architectures you are going to have different JVMs. यानी कि ये JVM, और I could say the JVM that is present on the Windows machine, the JVM that is present on the Windows machine is going to be different, is going to be different than the JVM present on the Mac OS, than the JVM present on the Linux. ये इनके इंडिविजुअल JVMs क्या है? कंप्लीटली अलग अलग है। लुक एट दिस, JVM फॉर विंडोज, JVM फॉर Mac OS, JVM फॉर Linux। और तभी तो मैंने कहा ना that when you are downloading that JDK, when you are downloading it, you must specify your correct architecture over there. आपका आर्किटेक्चर करेक्टली वहां पे मेंशन करना है, अदरवाइज द कोड विल नॉट रन, वरना वो कोड काम नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड, here we are going to have one particular, let's say a Java file. Maybe I will change the color over here and I'm going to say this is a Java file that we have. Color, color, and we are going to say this is my program dot Java. This is my program dot Java, and this program dot Java I want to compile it. I want to compile it, and after the compilation, what I get is a program dot class file. What I get is a program dot class file. See this program dot Java file, compile किया, compile this by saying Java C, और compile करने के बाद program dot class file में। अब ये जो program dot class file मुझे मिल चुका है, whatever this program dot class file is, this is platform independent। यानी कि इस program dot class file को उठाओ, you just take this program dot class file and wherever you want, whether you want to execute it on the Windows, whether you want to execute it on the Linux, whether you want to execute it on this Mac OS, wherever you want, you just start executing it. It doesn't matter. Once a file is compiled, एक बार आपका जावा का कोड कंपाइल हो चुका है, आई एम सेइंग कंपाइल हो चुका है, it can be executed on any particular platform. That means your Java code, the compiled Java code is platform independent. अब वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों बना? बिकॉज द जेवीएम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। यानी कि कंपाइल एक बार करो, बार बार रन करो। सो द वन दैट वी टॉक्ड अबाउट, वोरा, व्हाट इट सेज, राइट वंस, रन एनीवेयर, रन एनीवेयर। सो लुक एट दिस, यहाँ पे एक ही बार कोड लिखा, कंपाइल हो चुका है एक ही बार। नाउ वंस इट इज कंपाइल्ड, आप विंडोज पे रन करो, मैकओएस के ऊपर रन करो, लिनक्स के ऊपर रन करो, रन इट एनीवेयर, डजंट मैटर। दैट्स व्हाट द जावा इज, राइट वंस, रन एनीवेयर।
Let me know. Any questions into this now? Yes, any questions? Any other questions that we have learned so far? Yes, I'm waiting for the questions. इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है? पक्का? कैन आई से यू हैव अंडरस्टूड सो फार, कि आपको यहाँ तक अब थोड़ा थोड़ा आइडिया आ चुका है व्हाट एक्चुअली जावा इज एंड व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. सो वी आर गोइंग टू राइट द प्रोग्राम्स, लेकिन डेफिनेटली प्रोग्राम से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. RT.jar, yes, very good question again. Jaswin, you are asking really good questions. So the question is, sir, वो RT.jar क्या है? What it is? Is it like the runtime jar? Is it like the classes that are been present? So yes, where it is? Look at this. STS के अंदर, if you create any project, if you create any project, what you get by default is the JRE system library. ये देखो, Java runtime environment, JRE system library, which represents your RT.jar. Inside this, if I go down, you will find it out something called as so many modules. So those are modules like java.base, java.compiler, and so on and so on. If I open that up, we have something called as java.lang. If I open that java.lang, you will find it out. This java.lang consists of all the dot class file. Are you able to see all the extension? तो ये पूरे के पूरे डॉट क्लास फाइल का पूरा कलेक्शन होता है rt.jar. And here you will find it out the class that we are currently using, system class. Can you see this? तो यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे, s के अंदर आओगे, s, you will find it out. You will find it out. There is a class called as system.class. And कि whatever the classes that you are going to use it over here, जो भी classes आप यहाँ पे यूज करोगे, उन सभी के dot class files are already present into that rt.jar, which is been loaded into your runtime environment, जो आपके इस runtime environment के अंदर लोड किया जा चुका है. That is what is happening over here. That's your rt.jar. तो ये है वो, यहाँ पे present over here. Good question. See, once you start asking about the internals, I can show it to you. अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा. Otherwise, it will be like, सर जो है वही पहले बहुत है. So this is too much of things for us. Then definitely I won't be telling you those parts. लेकिन अगर आप सवाल जरूर पूछोगे तो मैं बताऊंगा जरूर आपको कि what is there over or what is present over there. Any other questions? I am waiting for the questions because something that I want to show it to you, but before that, all your basics needs to be clear. Are your basics clear? If yes, then I will move to the next, just one small point. Yes? Any other questions? No? Okay. Very good. I would say you have to wait till we complete the concept of access modifiers. But still, I will be telling you today. The question is कि class से पहले public क्यों लिखा? यानी कि those people who are coming from C++ background will definitely have this question that we haven't seen something called as classes as public. तो क्लास से पहले पब्लिक वगैरह लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, why it is like this, we will be looking at it. But for this you have to wait till the packages के कंसेप्ट तक थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. बट इसी के ऊपर एक छोटा सा मैं डेमो आपको करके दिखाता हूँ. ठीक है, आई होप नाउ एवरीवन इज अवेयर अबाउट दिस एंड द प्रोजेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, अवेयर अबाउट इट. एंड आई विल बी क्रिएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एंड आई विल बी शोइंग इट टू यू कि क्या क्या चीजें होती है बिहाइंड द सीन्स व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग दोस क्लासेस. ठीक है, now let us focus on to this. You will be getting a lot of answers out of this, those who are having the doubts. So let me create a new project over here. So I'm going to say new Java project, and then I'm going to say this is going to be my demo 02. Now in this demo 02, I will be creating one more file. Maybe into the src, I will be saying this is going to be a class. And उस class का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ as a program. Simple. Class का नाम है program.
and I'm going to say that I require a main inside. As simple as that. Look at this. Now in this particular main, I am going to write a system.out.println where I want to just specify a message that inside program class. I would say inside program class. Run this particular code and you will find it out कि it is saying inside program class. And whatever I have written the code, I am able to write. Now, what will happen if I start creating multiple classes? Look at this. Maybe I am going to say this is a class employee. Maybe I am going to say this is a class date. How many classes I have created? So maybe let's say I have created two more classes. One is employee class, another is a date class. Even what I have is a program class. अब अगर मैं ऐसे क्लासेस क्रिएट करता हूं, मल्टीपल क्लासेस क्रिएट करता हूं, if I create multiple classes, how many dot class files are going to be created? Question is, अगर मैं ऐसे क्लासेस एक ही फाइल में, एक ही जावा फाइल के अंदर क्रिएट कर रहा हूं, inside this single dot java file, this is program dot java file, inside the single dot java file I have created three classes, out of which one class has got the main method, however another two classes has got nothing, उसके अंदर कुछ भी नहीं है. Can you tell me, according to your knowledge that you have learned so far, how many dot class files will be created? How many dot class files will be created? ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स. आप आंसर्स पोस्ट करके रखो, यू जस्ट पोस्ट सम आंसर्स. ठीक है, वेरी गुड. एंड नाउ आई विल बी शोइंग यू सम ऑफ द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दैट द एसटीएस हैज क्रिएटेड फॉर अस. ठीक है, आप जरा सा चेक करते हैं. I will go into the training. I will go into the courses. This is modular. This is CoreJava 015, and this is day 1. And please have a look at this now. हमारे पास है demo 02. Inside this demo 02, can you see there are two directories? One is bin and another is src. I haven't created this. This folder structure is something that the STS has created for us. The STS ने create. Whatever the source code that you have written inside the src, you will obtain that there is a file called as program.java. So whatever the program.java that you have created, the file, the .java file that you have created, inside which there is one program class and two other classes, employee and date, are present inside this .java file. Whatever the compilation of this file has been done, all the dot class files are kept inside this bin directory. अब ये मैं नहीं करता हूं. दिस इज समथिंग दैट द एसटीएस ऑर्गेनाइज इटसेल्फ. एसटीएस ऑर्गेनाइज इटसेल्फ. गो इनटू द बिन डायरेक्टरी. आप इस बिन डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ एंड जस्ट फाइंड इट आउट. देयर आर 3 डॉट क्लास फाइल्स दैट आर बीइंग क्रिएटेड. ये कितने डॉट क्लास फाइल्स बने वैसे? हाउ मेनी डॉट क्लास फाइल्स आर क्रिएटेड? 3. One for the employee, one for the date, and the third one for the program. Whatever the number of classes you will be creating, I'm not saying number of files, I'm saying whatever will be the number of classes that you will be creating, those many dot class of files will be created. Those many dot class files will be created. तो आपने कितने number of classes create किए? How many number of classes you have created? Can you just check? This is one class, this is two class, this is three. 3 classes you have created. If you create 3 classes, how many dot class files will be created? 3 dot class files will be created. अब जितने क्लासेस बनाते जाओगे उतने डॉट क्लास फाइल्स बनेगी. ये ऑब्जर्व दिस. लेट मी कीप इट साइड बाय साइड. लेट मी कीप इट साइड बाय साइड. अब यहाँ पे चेक कर दे. जैसे ही मैं क्लास यहाँ से डेट को हटा देता हूँ, लुक एट दिस, देयर इज अ डेट डॉट क्लास प्रेजेंट ओवर हियर. आई विल जस्ट रिमूव दिस डेट क्लास एंड आई विल जस्ट सेव दिस. यहाँ से डेट क्लास चला जाएगा. जैसे ही वापस से यहाँ पे एक क्लास लिखूंगा, लेट से डेट, यू विल फाइंड इट आउट कि यहाँ पे वापस से एक डेट क्लास क्रिएट हो भी जाएगा. कैन यू सी दिस? अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह पे एक और लेट से क्लास लिख देते हो, इफ यू क्रिएट वन मोर क्लास लाइक दिस, मे बी आई कुड से क्लास पर्सन. लुक एट दिस. Immediately there is going to be another person dot class. Whatever the number of classes that you create, those many dot class files will be automatically created. Automatically, क्योंकि वो कंपाइल होने के बाद बनते ही बनते हैं. So कितने डॉट क्लास फाइल्स बनेंगे? जितने क्लासेस उतने डॉट क्लास फाइल्स. The number of classes that you have, those many number of dot class files will be created. First, let me know, is this clear? क्या ये clear है? Statement लिख के रखो. You write it down. You write down the statement that the number of classes that you have, those many dot class files will be created. Whatever the number of classes that you have, those many dot class files will be created.
इज दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू यू? ये पहला पॉइंट क्लियर है? वेरी गुड. नाउ सेकेंड वन. If you look at the name of this .java file, I have kept the name of this .java file as program. The name of the .java file, I have kept it as a program. What will happen if I make this name of the file as date, person, employee or anything other? अगर ऐसा कुछ मैं नाम यहाँ पे रख दूंगा तो what will happen? Check this out. I am going to look at this. जरा सब लोग यहाँ पे ठीक से देखो. Maybe the font can be bit smaller. I am just zooming it in. Please check this out. I am just renaming it. मैं उसको rename कर रहा हूँ. ठीक है? I am going to rename this. Maybe I am going to say right click. So look at this, rename. And I am going to say instead of program, this is going to be my program. Like this. फाइल का नाम है माई प्रोग्राम. चलो माई प्रोग्राम भी जाने दो. Maybe I am going to keep it like this, hello. Maybe I'm going to keep it like this, hello. Click on finish and see what happens. Click on finish. It says type program contains a method something 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 might not work after refactoring. ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूं. I am going to say finish. जरा चेक करते हैं क्या हो चुका है. कुछ दिखा? Are you able to see something? मैंने वहां पे फाइल का नाम चेंज किया टू हेलो, इसने इस क्लास का ही नाम चेंज कर दिया टू हेलो. यानी कि जिस क्लास से पहले, ए लिसन टू दिस, वॉट एवर क्लास दैट यू आर राइटिंग, इफ बिफोर दैट क्लास यू हैव केप्ट इट एज अ पब्लिक, then the name of the class and the name of the .java file should be same. This is Java language specification. जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन ये कहता है कि जिस क्लास से पहले पब्लिक होता है उस क्लास का नाम, द नेम ऑफ द क्लास और नेम ऑफ द पब्लिक क्लास शुड बी सेम एज दैट ऑफ द फाइल नेम. दिस इज द जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन दैट इट स्ट्रिक्टली फॉलोज. वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है. इट विल नॉट अलाउ यू टू कीप एनी डिफरेंट नेम. नाउ सी दिस. क्या मैं इसका नाम, लेट्स से, क्या मैं इसका नाम हेलो डॉट जावा का नाम, क्या मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डॉट जावा रख सकता हूँ? कैन आई कीप इट लाइक दिस, एम्प्लॉय? Okay, look at this. I'm going to finish. I'm going to say finish, and look at that. मैंने यहाँ पे employee.java किया. The moment I make it as employee, it is saying public class employee. उसने इस public class का नाम ही change कर दिया employee. See, it is doing it like this. यानी कि जो भी फाइल का नाम रखूंगा, so the same name it is giving it to the public classes. Now let's say initially the name that I have used was program. Initially the name that I have used was the program. उसने immediately यहाँ पे क्या किया? पब्लिक क्लास प्रोग्राम कर दिया. अरे यहाँ पे भी प्रोग्राम हो चुका है. मे बी आई विल कीप इट लाइक दिस. नाउ सी दिस. दिस वाज माय इनिशियल कोड. फाइल का नाम था प्रोग्राम, क्लास का नाम था प्रोग्राम, एंड एवरीथिंग लुक्स गुड. जो भी पब्लिक क्लास का नाम होगा वो इस फाइल का नाम होना चाहिए. अब यहाँ पे लेट से मैंने इसका नाम यहाँ से हटा दिया, यानी कि आई हैवंट केप्ट एनी पब्लिक क्लासेस इनटू माय डॉट जावा. क्या ये चलेगा? प्लीज लुक एट दिस. इफ आई एम नॉट स्पेसिफाइंग, if I am not specifying any public class into my particular Java file, is it allowed? Yes. Please look at this. Let us try to run this. इसको रन करके चेक करो. Again it is saying inside program class, यानी कि काम हो रहा है. Not only that, please have a look at this. मैं डेट के अंदर भी जाकर के एक मेन लिखने वाला हूँ, मैं पर्सन के अंदर भी जाकर के एक मेन लिखने वाला हूँ. So I am going to write each and everywhere. So this is main, this is main, this is main. See the way the Java has got so many features. Maybe is inside this I'm going to say sysout, and inside this sysout I'm going to say inside a date class. So I'm going to say inside date class like this. So let me copy this और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं. Maybe I am going to say inside a person class, and यहाँ पे जाके कहते हैं inside employee class. Inside employee class. See, how many mains do I have? So I have got 1, 2, 3, 4. 4 classes, चारों की चारों के अंदर main. Kept inside the same file, program.java file, सबके अंदर मैंने main लिखा. Now I just want to execute. कैसे execute? I just want to execute. Now see this. Right click, run as Java application. It asks me that which main
डू यू वांट टू एग्जीक्यूट। जैसे आप रन करने जाओगे, इट इज गोइंग टू आस्क यू कि मेरे पास डेट, एम्प्लॉय, पर्सन और प्रोग्राम चारों के अंदर मेन है। वी हैव गॉट मेन इन ऑल द फोर पर्टिकुलर क्लासेस, विच पर्टिकुलर क्लास डू यू वांट टू एग्जीक्यूट। सो यू जस्ट हैव टू चूज इट। लेट्स से मुझे एम्प्लॉय को एग्जीक्यूट करना है, यू जस्ट से एम्प्लॉय, क्लिक ऑन ओके, एंड यू विल फाइंड इट जो एग्जीक्यूट हुआ है, इट इज इनसाइड एम्प्लॉय क्लास। Maybe I will run it once again. आप उसको रन करो, इट इज अगेन सेइंग रन एज इनसाइड एम्प्लॉय क्लास। वापस से राइट क्लिक करो, रन एज जावा एप्लीकेशन करो, इट विल अगेन आस्क यू कि विच वन डू यू वांट, यानी कि अगर आपको चूज करना है लिस्ट में से, यू हैव टू से राइट क्लिक रन एज जावा एप्लीकेशन, ये आपको कहना पड़ेगा। सो इसमें से अब मैं चूज करता हूं कि मुझे अब डेट चाहिए, सो क्लिक ऑन डेट, यू क्लिक ऑन ओके, एंड जो आपको दिखेगा इट इज इनसाइड डेट क्लास। यानी कि विद इन अ सिंगल डॉट जावा फाइल यू कैन हैव मल्टीपल क्लासेस विद द मल्टीपल मेन मेथड्स। यानी कि मल्टीपल क्लासेस के अंदर यू कैन स्टार्ट एडिंग द मेन मेथड्स, एंड यस इट इज टोटली अलाउड, ये अलाउड है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे मेन तो सभी में जा चुका है, क्लासेस नॉन पब्लिक है, और फाइल का नाम है प्रोग्राम डॉट जावा, फाइल का नाम है प्रोग्राम डॉट जावा। यानी कि अब यहाँ पे कोई भी क्लैश नहीं है, देयर इज नो क्लैश कि फाइल का नाम क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि देयर आर नो पब्लिक क्लासेस। नाउ द मोमेंट आई स्टार्ट मेकिंग इट एज पब्लिक, अगर मैं यहाँ पे इससे पहले जाके लिखूंगा पब्लिक, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आता है। अब वो प्रॉब्लम क्या कहता है, प्लीज रीड दिस एरर, एरर को पढ़ो समझ जाओगे। रीड दिस एरर, व्हाट इट सेज, व्हाट इट सेज, एम्प्लॉय पब्लिक टाइप मस्ट बी डिफाइंड, ऐसी मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। यानी कि अगर पब्लिक क्लास होगा तो उसका इंडिविजुअल डॉट जावा फाइल चाहिए। एवरी पब्लिक क्लास शुड हैव इट्स ओन इंडिविजुअल डॉट जावा फाइल, वरना काम नहीं चलेगा, वरना उसको पब्लिक मत बना। हाँ, यू कैन हैव एज मेनी नॉन पब्लिक क्लासेस एज यू वांट इनसाइड द सिंगल डॉट जावा फाइल। एक डॉट जावा फाइल में जितने नॉन पब्लिक क्लासेस चाहिए आप लिखो, चलेगा। बट इफ यू वांट टू मेक इट एज अ पब्लिक क्लास, अगर आपको इसको पब्लिक क्लास करना है, if you want to make it as a public class, then the name of that public class and the name of the file should be same, otherwise वो error देगा। read this error once again, it is saying public type person must be defined in its own file। यानी कि जिस क्लास को आपको पब्लिक करना है, या फिर जो भी क्लास आपका पब्लिक होगा, उस क्लास का नाम और उसके फाइल का नाम, उस क्लास का नाम और उसके फाइल का नाम जनरली क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड दैट इज द रीजन व्हाई द प्रोग्राम क्लास इज पब्लिक, क्योंकि प्रोग्राम क्लास पब्लिक होने के कारण उसके फाइल का नाम भी प्रोग्राम ऐसा ही रखा जा चुका है। इफ यू रिमूव दैट पब्लिक, देन इट डजंट मैटर व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इफ द क्लास इज पब्लिक, द नेम ऑफ द फाइल शुड बी सेम। कैन आई हैव मल्टीपल पब्लिक क्लासेस, नो, चलेगा ही नहीं, प्रॉब्लम आएगा। एग्जैक्टली किसका नाम आप फाइल में रखोगे। सो इफ यू हैव मल्टीपल पब्लिक क्लासेस, जैसे प्रोग्राम नाम का क्लास पब्लिक है, डेट नाम का क्लास पब्लिक है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम कि डेट करके इस फाइल का नाम रखो कि प्रोग्राम करके इसका फाइल का नाम रखो। यानी कि जो भी पब्लिक होगा, द नेम ऑफ द फाइल शुड बी सेम। सो टू कीप द नेम सेम, देयर शुड बी ओनली वन पब्लिक क्लास इनसाइड अ सिंगल डॉट जावा फाइल। यानी कि एक डॉट जावा फाइल के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल पब्लिक क्लास होना चाहिए। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ नॉन पब्लिक क्लासेस, वहां पे नॉन पब्लिक क्लासेस जितने चाहिए उतने दो, बट public class should be only one. So this is all about your main and multiple classes in a single .java file. Very important concept. Let me know if you have understood this, and if you have any questions, now let me know. This was the last point of today actually. So we have talked about maybe variations. Maybe we won't be able to talk about this. Maybe कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. We will talk about the console input and output in tomorrow's session. ठीक. Very good. Any other questions? Let me know the entire flow that we have gone through. यानी कि जो भी आज आपने जावा सीखा है, और whatever the things that we have studied, was it worthful for you? Have you understood lot of concepts over here? कि एक लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए. So let me know if you have got anything out of it, and if there are any questions that you have. Yes. Any questions? बहुत सारी चीजें हैं, कल हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे, उसके बिना हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे जावा में. सो टुमारो वी आर गोइंग, टुमारो इन द सेंस सॉरी, ऑन मंडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट, दिस कंसोल आईओ ऑपरेशंस, हाउ वी कैन टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर्स एंड सो, वो सारी चीजें करने वाले. इन केस में नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो पब्लिक क्लास विल रन फर्स्ट और सेकंड, नो इट इज नॉट लाइक दैट. द वन दैट यू चूज विल एग्जीक्यूट, जो आप चूज करोगे वो एग्जीक्यूट होगा.
So right now, when I choose over here, so right click run as Java application जब मैं कहूंगा, so I am choosing over here कि मुझे कौन सा रन करना है. Because when you look at the internal folder structure over here, so you will find it out there are 4 dot class files. तो उन 4 dot class files में से आपको कौन से एग्जीक्यूट करना है, क्या आपका डिसीजन रहेगा. That will be your decision. So what you can do is you can open the terminal over here. आप यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर सकते हो, एंड विद इन दिस टर्मिनल यू कैन जस्ट स्टार्ट गिविंग दोस पर्टिकुलर कमांड. सो आप यहाँ पे कह सकते हो, एक तो आप कहो जावा एम्प्लॉय लाइक दिस, यू कैन से लाइक दिस, जो आपको चाहे वो आप कहो जावा एम्प्लॉय को, वो कहेगा इनसाइड एम्प्लॉय क्लास. अच्छा ये नहीं चाहिए तो आप जाके जावा पर्सन कहो, तो वो पर्सन को एग्जीक्यूट करेगा. यानी कि द वन दैट यू वांट यू कैन एग्जीक्यूट इट. यानी कि ये आपके हाथ में वो पावर आ चुकी है. whichever class that you want you can just execute it. That's the power that. Yes, those concept very much understood, very good. So if you have understood these are the really basics or fundamentals of Java that you must know as a developer, I could say. The problem is कि लोगों को ये क्लासेस लिखना आता है, मेन लिखना आता है, यहाँ से पूरा लिखना आता है, बट दे डोंट नो हाउ टू डिप्लॉय इट. दे डोंट नो क्यों ऐसा कर रहे हैं. They don't know why we are downloading that JDK. अच्छा, what is JRE? अच्छा, if there is a problem in installation, they're not able to solve this. So you must be really able to understand it कि क्या as a developer मुझे पता होना चाहिए. So as a developer, what is the difference between a Java and the C++ code? What are the difference into the flow of executions? क्या मुझे यहाँ पे मिलता है. अच्छा, मेरे पास प्लेटफॉर्म्स कौन से, मैं exactly काम किसके ऊपर कर रहा हूँ, whether I am working on this or whether I am working on this. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको पता होनी ही चाहिए एज अ डेवलपर. इट इज अ मस्ट, अदरवाइज यू आर नॉट अ डेवलपर देन. तो डेवलपर बनना चाहते हो तो अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज इन अ प्रीटी वेल मैनर. ठीक है, वेरी गुड. No, this is just a variation. See, why I have shown this thing is because I am expecting that some of you people will be attending some of the interviews. तो क्योंकि आप लोग कुछ इंटरव्यूज कहीं ना कहीं अटेंड करने वाले हो, तो ऐसे कुछ सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं. लाइक द क्वेश्चंस आर, what if I change the name of a particular file, or I keep the name of a particular file different than the public class that is present over here? Is it allowed? Is it not allowed? So such kind of questions are being asked. So even they will be asking you, what if there are non-public, multiple non-public classes, and in multiple non-public classes there are main methods? Which one will you execute, or can I execute one of the main method from it? See, these are the actual questions that are also being asked to the students, एंड बेस्ड ऑन दैट आई हैव टेकन दिस डेमोस फॉर यू. यानी कि अगर आप कुछ इंटरव्यूज देना चाहते हो तो आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल भी रहेगा. तो इसलिए मैंने ये डेमोस क्रिएट किए, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड वे. ऐसा लिखना भी नहीं चाहिए. यस, ऑब्वियसली बात है. यू शुड बी क्रिएटिंग डिफरेंट, एक तो टेस्टर क्लासेस टू टेस्ट इट आउट. अदरवाइज देयर शुड बी ओनली वन मेन इनटू अ सिंगल प्रोजेक्ट. दैट्स व्हाट आई कुड से. Okay, so can we run any class irrespective of public or not? Yes, yes, that is what I'm saying. कि यहाँ पे नॉन पब्लिक क्लासेस है ना, डेट पर्सन, एंड दैट इज व्हाट आई एग्जीक्यूटेड राइट नाउ. सो यू कैन गो ओवर हियर एंड यू कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट. क्योंकि पब्लिक क्लास का पर्पस कंप्लीटली अलग है. पहला पर्पस जो मैंने अभी बताया, इट इज द जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन दैट द नेम ऑफ क्लास एंड नेम ऑफ फाइल शुड बी सेम. तो ये सेम करने के लिए आप उस क्लास को पब्लिक बनाओगे. एंड द सेकंड यूज केस ऑफ पब्लिक क्लास, वी विल बी ऑब्जर्विंग इट एट द टाइम ऑफ पैकेजेस. तो वो पैकेजेस के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा. अभी फिलहाल इट इज फॉर नेम ऑफ द पब्लिक क्लास एंड नेम ऑफ द फाइल, यानी कि वो जावा लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन के लिए एक पर्पस तो दिखा दिया. यस, एनी अदर? नो. So let me do one thing. Let me stop the recording now. So